गुड मॉर्निंग ख्वाजा जी. सर वेरी गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी. सर वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, बढ़िया सर. चलिए ठीक है. आपने कहा था सचिन 15 सर मिनट बराबर पहले हो बस जाए. बिल्कुल. आप पार्टिसिपेंट्स को कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? जी सर, सिर्फ 5 मिनट. नहीं नहीं, आराम से. मैं तो आपने कहा था 15 मिनट कर लें सो दैट वी कैन चेक एवरीथिंग कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट. तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. आई कैन हियर ऑल्सो. तो अपने पार्टिसिपेंट कितने हैं? हाँ अभी आ रही है सर आवाज. हाँ. पार्टिसिपेंट कितने हैं आपके? जी सर 10 बजे से हैं. 5 मिनट रुक के जो है हम नहीं नहीं, स्टार्ट कर आराम से. लेंगे अपन सर. विल स्टार्ट एट 10 क्योंकि 11:30 पे मेरी 11 बजे मीटिंग पर. आई जॉइन एट 11:30. नहीं, अपने पार्टिसिपेंट्स कितने हैं आपके ओके. पास? पार्टिसिपेंट इन ईच सेशन में हमारे अराउंड 85 जुड़ते हैं सर. ओके ओके. और दे ऑल आर फैकल्टी? जी. या दे ऑल आर फैकल्टी एंड रिसर्च स्कॉलर्स, ओके, पीएचडी. दैट्स गुड. दैट्स ठीक है. तो आई जस्ट विल वेट अनदर 5 मिनट्स. तो मैं जब तक वीडियो म्यूट करता हूँ अपने आप को एंड स्टार्ट एंड आई जॉइन. ओके. श्योरली सर, श्योरली सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर.
Good morning, Panikar sir. Good morning, sir. Sir, I request that to please welcome our keynote, Dr. Amit Ojha sir Yes, yes, from MNIT Bhopal. Please, sir. yes, sir. Good morning, one and all present here. I welcome, on behalf of the IIT Raipur, I welcome to the fourth day of this 1 week faculty development program. We have had experts all over the globe who shared their expertise to the faculties and research scholars all over India. In this journey, today we have Dr. Amit Ojha from Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. On behalf of VIT Raipur, I take this privilege to welcome you, sir. Thank you. Dr. Amit Ojha has completed his PhD in multi-level converter-based application. He has supervised 4 PhDs, has 35 MTech candidates and AMP40 BTech projects in the area of drives and amp, power electronics and its applications. He has also authored more than 40 research articles published in HCI, HCIE, Scopus Index journals. He has conducted various short training programs and has delivered expert lectures related to his research area. He is currently a co-PI in the research project titled Performance Investigation of Grid-Connected Micro Multi-Level Inverter-Based Solar Photovoltaic System, funded by DST SERB under the scheme of EMR. He is also a senior member of IEEE. With such an illustrious academic strength behind him, it is really going to be a very fruitful session, I suppose, for each and every one. Now I hand over the stage to Dr. Amit Ojha, sir. Sir, please. Thank you very much. I hope you all are able to hear me. Just please Yes, sir. confirm. Yes, sir. Yes, thank you very much, my dear colleague, to introduce me. So, first of all, I would like to thanks the faculty or the management side from institute to give me an opportunity to give a lecture, basically on green technology and sustainable engineering. Thank you very much. See, before starting, it is very essential for us because all of you are as a faculty member or working as a research scholar. It is very important to understand what is the meaning of this green technology and sustainable engineering and why it is required. So maybe from the beginning of this course, you are listening so many lectures related to this particular field, and maybe you'll get your answer also. So in this series, today I'll going to deliver the role of converters in this particular green engineering or green technology because it is required. So I'll try my best to answer your questions, and just this is my duty to put a relevance why it is required in the present scenario. So we'll try to deliver the best, and thank you very much the management side or the organizing team for arranging this a very good, a very meaningful this 5 day week, 5 day week. This training program for the faculty. So it will be a beneficial because the present scenario is not very good because we all are suffering from this very pandemic. This corona is not a big issue. Issue is that the mental trauma that we are facing, and I hope everyone, your side means like all faculty members, all participants, all are safe and their family members are safe. I hope so. So I'll share my screen and we'll directly start with our presentation and discuss about the things, role of converters in the RES based generation. What is RES based generation? We'll discuss in detail. Let me share. Okay.
I hope this is visible to all of you. The screen is about to share, sir. Yes, it is visible, sir. Thank you. I think there is some internet issue from my side because I am at the institute right now. We have a optical fiber, so maybe not an issue. But anyway, let's see. So this is visible to all of you. It is changing. Yes, sir. Yeah, thank you. So welcome you all participants, and I hope you are doing well. And today's I'm going to cover the applications of converters in RES-based generation. See, basically, to be very precise, it must be a multi-level converters. But I'll deliberately write converters because what we are doing right now and what we have to do in future and why we have to do for it. That is, we have to see. So I'll try my best to answer this question in this relevant field, that application of converter in RES-based generation. So RES-based generation. First of all, these three questions we have to answer. See, if we want to do, because we all are research scholar, when we initiate our research, we have to see what we are doing and what are the available technology or the concept which is available in the present research world. That we have to see. So first of all, we have to answer what is RES-based generation. Then next question is why it is required. And okay, when we answer this why, then next part is how we have to implement this. If we are able to answer these three questions, then our aim will be fulfilled. This is my aim, this is my objective for today's lecture, that I'll try to convince you, I'll try to give an idea what is RES-based generation, why it is required in the present scenario, and how we have to implement. So this is the three questions that we have to answer in that way, so that you can initiate your research. If you are already doing the research in this particular field, then what you are doing and what you have to do, that you have to decide. Okay. So first, what is RES-based generation? See, in a very simple language, if we tell that RES means renewable energy source based generation. What is the meaning of that? Renewable means what? That can be renewed. See, everyone is knowing that the conventional resources for the generation of power is running out of, will not be able to use for long. So we require to find out some other means which is available freely or in abundance, so that we can be used that particular source of energy for the generation of power. So there are so many things like solar PV, wind energy, or other available energies like battery or other thing that can be used for generation of power. So we are exploring the opportunity in the present scenario, because we know that in the future we are not able to use this coal, just like thermal stations or other generation power station, because of lack of this particular input resources. So this is the answer of what is RES. This is renewable energy sources. You all of you know that what are the renewable energy sources, that base generation that we have to see. Other question is why. So this is this is the reason why it is required. See, you know that the rising electricity demand, the electricity demand is increasing day by day, because we require power all the time. This 24 hour we require a power. We are also required a power at the rural area. And second part, which is very important, see, Supreme Court has ordered that by 2030 no vehicle will be allowed which is having a fuel as a petrol or diesel. So in 2030 you will not get any vehicle, means you will get the petrol or diesel like what you are getting right now. So electrification of transport is a big issue, because when I was attending a meeting in Niti Aayog before the lockdown, there was a lot of discussion happened regarding this, because
to give an electric vehicle is not a big task. Big task is that how to charge that particular battery. Electrification is very much required, because if, like, see now charger, you see mobile earlier, after a decade, after 10 years back, uh, you're not facing a problem of mobile charging. But at home right now, मैं आपका चार्जर निकाल दूं because मुझे अपना चार्जर लगाना है. You are facing at home also. So this will be the scenario at 2030, because at that particular time every vehicle will be electric vehicles. That is ordered by the Supreme Court, because if you want to save our this earth, then definitely we have to take care of this carbon emission and so many things that is done due to the this petrol or diesel vehicles. This may be the reason that we have to think for RES based generation, because the input, that is coal or other things, are not available in abundance, and because of that will not be able to cope up this particular rising electricity demand. This may be the reason that we have to think about this RES based generation. Second, a distributed generation. This is a very important point, because in the present scenario, what we are conventional way to produce the electricity and to transmit the electricity and to distribute electricity, there will be occurrence of very high T&D losses. Yes, investment in the building infrastructure. Yes, to make a thermal station, it's a big issue. And very important point is that to set up a station, a power generation station at remote areas. So what is the idea is that to move towards a distributed generation, that we all know. That is why this may be the reason that we are moving towards the RES based generation. The third point, which is very important, that is shift toward the clean renewable energy sources. See, we all know that the coal and domestic natural gases are not available in abundance or in adequate quantity. So difficulty in obtaining the clearance from coal mines is again a lot of paperwork is required. Supply of the coal is in time. That to maintain in time the supply of coal from the coal mines is very difficult. So many things are there. So this may be the reason, and this is again the inadequate fuel supply agreements for the coal. This is again a very tricky or dicey part, that the person dealing with the generation using the coal or thermal power station, this is the inadequate fuel supply agreements for the coal, because we are not having that much of coal in the earth. But deallocation of the coal mines is again a problem. So the idea is that we have to move towards the clean renewable energy sources. So till here we are trying to find out why we are going towards the RES based generation. So first of all, what is RES based generation, that we have seen, and why we are moving towards the RES based generation, that is the next question that we have to answer. I think this slide, this is why. I think this slide will answer your question, that why RES based generation is required. See, in India, the present scenario or till now, if you see the figure, today's figure, that the total installed capacity of the power generation is about 375 gigawatt, and this table shows that this is the power generated by the renewable energy sources like wind power, solar power, biomass, water, waste to water, small hydropowers are considered in RES based generation. Small hydropowers. Okay, so if we see the total power generation done by this RES source, this renewable energy sources is about 87 gigawatt. You can see around 20-25%. Out of this solar power is around only 10%. My question is that why it is only 10%? See, sorry, we all are talking about solar PV panels. Now a lot of research is going on this solar PV technology, and we are getting a good output and response from the solar PV. Still, we are having a less generation based on solar PV. Why? This is the question that we have to answer, and I'll try to convince you that
why it is so and what we have to do to take care of this particular issue, so that the power generated by the solar PV may be increased. If we increase the solar PV power, then we can say that we are going green. So in outside India, that is happening. That is happening, but still they are facing so many problems. So today I'll try to tell you the logic. I'll try to let you know about the basic concept, that where you have to work actually, so that this issue can be resolved. This is a simple slide. You must be aware that solar PV is nothing but it's a diode, simple diode, conjunction diode. After that, the output of the solar PV will be a DC. And if you want to communicate to the grid or to just feed to the load, then it must be an AC power. So you require an inverter. You require a switchboard so that you can feed to the grid. You can provide an electricity meter so that you can calculate how much energy you are generating an electricity main grid, so that you can feed the power. If it is not required, the power required by the load, then you can feed this power to the grid also. For that you require an admittance facility. Oh, this is the whole scenario. I think this is how we have to implement. And what is happening right now? See, this is the PV panel. PV panel strings. Okay. Now output of the PV panel string is a DC output. We require the output of the PV panel is around 24 volt or 36 volt, like that only. We can increase this power, this output voltage by having a series parallel combination of the panels, so that we can increase this voltage level. Or we can go with the DC-DC boost converter, so that this input voltage can be boosted up. Say 36 volt, if we talk about the 230 volt RMS single phase supply system, it should be a voltage around, so that the output of this inverter must be at 230 volt. This is all calculations required. So this is the role of DC-DC boost converter. After that, you required an inverter, so that the output will be here is alternating one. Yes, this is a very important aspect of this conversion system. It is a low pass filter. Why it is required? I'll let you know why it is required. Here, the low pass filter is required to have a pure sine wave at the output, and then transformer and the grid. See, first of all, we have to understand the specific function of each block. This is a RES based on this is a renewable energy source. Output at DC. This will increase the input voltage to a level which we require, depending upon the value of LNC. This is the inverter part. This inverter part is going to convert this DC into alternating quantity, but this alternating quantity is having a harmonics other than the fundamentals. So a filter is required, so that the output which is available over here is a simple AC output and transformer. Why transformer is required? First of all, transformer is required to have an isolation between this system and grid. And second part, if your voltage level is very low, say that if you want 230 volt single phase 230 volt supply system, if voltage level is low, you can have a power transformer. I am saying power transformer because here the energy you are feeding at the power frequency. The power transformer is required, which is stepping up the low input voltage to high input voltage. So this is the whole scenario, and this is the part where you have to work for your research work. This is all a control part. First of all, this is the system, we call it as a 3-stage system. Stage 1, stage 2 and stage 3. In some of the literature you will find that filter and a transformer is a part of this stage, but sometimes it is a part of grid also. It depends upon the literature and how the engineer or how the researcher is looking
that particular point, that particular aspect, in what way, that is the his or her purview. So this is a 3 stage. Now my question is that, okay, generation of PV generation is about 10%, that is 34 gigawatt. 10%, why it is 10%? Because the conversion of this power is very low. Sorry, the efficiency of this conversion is very low, around 20%. Why? First of all, because there is an issue with the PV panels, because this PV panels works on what? Exposure of the sun. What is happening? The direction of the sun is changing all the time because it's moving from east to west, and in between the exposure to the sun to the panel is also changing, because of that the power extracting from this panel is not a constant one. That will take care how to achieve that maximum power output from this panel, that we'll see. First point is that. Second is that if you are having a 3-stage conversion, there will be losses over here, there will be losses over here, there will be losses over here. Transformer is not a part of the losses, because you all know that the efficiency of transformer is around 99 or 98-99%. So that is why I put this on the grid side, totally depending upon the researcher or the engineers. Sometimes they just put with the filters, but what I am thinking is that, what I am proposing to all of you is that how to increase this efficiency so that the percentage sharing of this generation through solar PV will be increased. If somehow I can increase the efficiency, this will be increased automatically. That is why a transformer will not include or that loss component to the 3-stage conversion. So what I think is that if you decrease the number of stages, losses will be reduced. Losses will be in so many forms: switching losses, other losses. There will be in so many forms: switching losses, conduction losses. In the filter side, there will be losses. So what will happen if you decrease the number of stages? Somehow the efficiency of the whole system will be increased. I hope all of you able to understand, and can you hear me? Please give your response. Mr. Any participant from? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for listening me. Anyway, so this is the whole idea. If you are able to decrease this number of stages, somehow this complicated control structure will also get less complicated. And there is an issue, because once you develop this conversion system, you require a controller, and controller will be such a way that it should be of low cost. It should be of low cost. It should be having a very fast response, and so many things are with the controllers. But real-time implementation is an issue. So if you decrease the number of stages, what I personally feel that the number of variable will be reduced, and your controller will deal with a less number of variables, such that the control signals will be generated through a less complicated control structure. This is my idea. What I think that will be in HP, but it is also true that if you incorporate so many things in a single controller, there will be an issue. But if the number of variables are less, then yes, we have to deal with less number of variables. Your control will be relieved in terms of processing time, in terms of other things, such that the response will be the dynamic response of the controller will be very fast, which is required in the present scenario also. So this is the whole idea. This is the whole idea what is happening right now in the conversion system. I hope you must know about all this thing. That is what is the conversion system. See, first part is DC-DC boost converter.
it is having a two role. First one is that to increase the input voltage to a required voltage level. If you use the DC-DC converter, you can eliminate the transformer also, because if you increase the role of the transformer over here is that to step up the voltage so that it become compatible with the grid. Second part is the isolation. But still, if you eliminate this transformer from here, DC-DC converter will take care of this voltage level, but isolation will be an issue. So see, it is very important to understand the classification of DC-DC converter. This is how the DC-DC converter can be classified. This is one is isolated and non-isolated. What I am talking about is non-isolated because I am using a transformer. Transformer, basically a power transformer is an issue. In our project, then we are discussing with our review team, and we have a lot of discussion and long discussion on this transformer. So we found that that it is required. Yes, it is required, but we can eliminate if we go with the isolated DC-DC converter. Here, what will happen? This will employed in high frequency transformer. If you go with here, if you go with an isolated DC-DC converter, in this particular topology, you will having a high frequency transformer. Why I am saying high frequency? If it is high frequency, then it means the size of transformer is very less and the cost is also very less as compared to power transformer, because power transformer is the size of the power transformer will be very large and cost will also be large. So if we use isolated one, then we can eliminate here this transformer and it will take care of it, and but still it will be a two-stage. And second thing is that that the power which is we are extracting from this panel can be increased to level which has to be fed to the grid. So this is the classification, but still what I am working with is buck boost and buck boost. Basically, I am working with buck boost or boost. Our research team is working with the boost or buck boost converters. We are not because that is why I'm not having an idea. But another aspect, this is another phase of the coin, that if we go with the isolated converter, then maybe you can eliminate the requirement of the power transformer. Here you will use a high frequency transformer, you can eliminate that particular stage. This is the point. Oh, before going into detail of the DC-DC converter stage number 1, what is boost converter? Yes, all of you are aware that what is boost converter. See, this is a simple structure. There's input DC voltage, which is 24 volt around. Or if you want to go with for single phase supply, you require around 3 phase, you require around 600 volt VDC. Or for single phase, divide by √3, you see that, and accordingly the voltage level is required over here. For this is the boost converter can be employed. It simply use one switch, one diode, and energy storing devices. So as an engineer, as a researcher, we see this only one switch is required and one diode switch is required. This is energy storing devices, not an issue. If we design in such a way that the output voltage can be increased, this is how it can be increased. When this switch is on, the energy will be stored in this inductor. When this switch is off, the stored energy will be delivered to the load. That is the reason for increasing the output voltage. That is why we are calling it as a boost converter. Okay, so this is the logic that we are employing over here for the boost converter. This is the first part of the boost converter, why we are using a boost converter here. See here, very important point over here is that this boost converter not only increases the voltage level, but it is again solving another important aspect of this maximum power. We all know that the panel is, we are just installing that panel at the south facing.
what is happening? The radiation is changing all the time. At particular time, the radiation is maximum. Other time, it is not maximum. The power which we are extracting from the panel is not constant. That is the second point that is taken care by the DC-DC converter is that. So we will use a maximum power point tracking by using a DC to DC converter. That is why this DC-DC converter is still in use, and a lot of research is still going on this particular field also. You cannot say that it is obsolete nowadays. Yes, the researchers, engineers are trying to reduce because to increase the efficiency of the power conversion. But still, a lot of research is going on. You can also work on that. For MPPT, that maximum power point tracking, we have to understand what is the logic. See, this is the IV characteristic of the panel that you all know, and the PV characteristic that we are extracting from the panel. See, there is a point, there is only single point where we are extracting the maximum power. All other instant, this power is not maximum. So how to make it to extract a maximum power from the panel? This is the load line. Everyone knows what is a load line. Simple. This is the slope of this will be the load line. 1 upon R0. R0 is the output resistance of the panel. Suppose if somehow I can manage to maintain this load line at a constant point here, such that means the voltage which is from the panel will be this, and current from the panel will be this, so that all the time this point is maintained. We can ensure that the power which we are extracting from the panel is maximum power. But how it is possible? Because if your irradiance is changing, then this R0 is changing. This R0 is changing, but this line is moving here to here, here and here. In that way, it is changing. So if somehow the resistance seen by the converter is changed, then we are able to change this R0 such that it is always at this particular point, and we can ensure that the operating point will always be on the maximum power point. So we can ensure that it is a maximum power point. And how it is possible with the DC-DC converter. These are the mathematics involved with the DC-DC converter. Yes, we can relate output voltage and input voltage in terms of duty cycle. Duty cycle is nothing but T on upon total time of the switch. So similarly, we can also relate the input current and output current in terms of duty cycle. If we so, then we can have relation between R input. This is R input is the input to the converter side, which is nothing but equals to R0. जो R input है आपका वो R0 के बराबर है, क्योंकि we are connecting this DC-DC converter directly to the panel. So from here we can see that this R input, this R0 is the output of the converter. This is not R0 this. ये R0 नहीं है. Don't be confused. This R0 of the converter. तो हम ये बोल सकते हैं कि because by changing the value of duty cycle, here we can change the value of Rn. हम Rn को चेंज कर पा रहे हैं तो हम R0 को चेंज कर पा रहे हैं, seen by the panel. यदि हम R0 को चेंज कर पा रहे हैं, so that we are ensuring that your operating point is always at this particular point, and which is ensuring that you are extracting the maximum power from the panel. This is the logic that you have to do. मैं आपको सब इसलिए why I'm telling to all of you, because यही पे logic है सर. अब if you want to play with this this DC converter, so you have to play with the D, capital D, this duty cycle. If you are able to change the duty cycle somehow, what will happen?
you can change this value of Rn and you can ensure the maximum power point tracking. बहुत काम हो चुका है इस पे, lot of work has been done and still work is going on and so many if you study the paper. अब आपको सिर्फ यही करना है, when you go for your literature review, what you have to see the year of publication. And my second point is that कि you see which paper you are looking. आपको पेपर वही रीड करना है that is published in IEEE, IET, IETE, elsewhere or somewhere. Second point is that the paper should be published in SCI, SCIE or Scopus Index journals. Why I'm telling to all of you? Because whenever you initiate your research, when you go for your RDC, then they will ask you which research paper you are following. Which research paper you are following? That is the point. When you show your research paper that you are following, because whenever you initiate your research, you have to show that this is the base. This is my base paper. From here, I have taken my idea, and this improvement I am going to propose. This is the idea. So the RDC committee, RDC means research committee, will ask you, okay, which paper is this? You will say this paper is like this. So then you have to depend. This paper should not be from the conference site. First of all, this is my advice to all of you. It should not be from the conference site. Second point is that it should be from IEEE, IIT, and it should be latest 2020 or 2021, even not 2019. Your base paper should not be like that. If you are saying your base paper is 2015, 2011, 2012, 2016, sorry, it will not give you a good impact on the RDC committee, research committee. So what I'm saying is that if you have an idea, you just play with this D such that you can fulfill your objective or your idea. Okay. So the next stage is inverter. That is DC-DC converter, AC-DC converter. Okay. Yes, this is the output, maybe from panel or maybe from DC-DC converter. This is the inverter, and this is the output. You must be aware this is a conventional DC to AC converter, and this is two level. And see, this is not a sine wave. This is a two level, plus VDC or minus VDC. But the fundamental of this particular waveform is a sine wave. And other components are the harmonics. So this two level DC to AC converter is enriched of the harmonic components. That is why you require a filter over here. The filter will take care of this, or the filter, what it will do, the low pass filter, what it will do, it will allow all other harmonic component and block the fundamental. That fundamental one will be transferred to the AC side or to the transformer. So this is the logic. So from here you can say that if you go with the conventional inverters, conventional inverter means what? If you say, see, in a present scenario, every so many individual also just installing the solar PV panels at their homes or other small industries and other. That there this inverter will be a two level with MPPT. This will be come with MPPT. So, but there will be also a filter. So this is the two level converter. The stage next is filter. It is an inherent part of this inverter because output is not a sine wave. The power quality is very bad. If the power quality is very bad, it will not be tolerated by the, because it will also having a DC component. The transformer will not take care of it, and grid also will not be able to entertain this. Just wait. Hello? Okay, so this is the idea. So got the point is what is happening right now. अभी क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. You should know, you should understand कि अभी क्या हो रहा है. अभी हम ये use कर रहे हैं with filter.
Actually, these are the some terms that you come across, that is central inverters, string inverters, and micro inverters. The three things. Micro inverter is a new concept that I want to let you know, and maybe this is the your concern for your research. Basically, central inverters, what will happen? You will be having a lot of large number of panels connected in series and parallel, and this is for high level, and there will be a central inverter taking care of all panels. This inverter will converter this DC into AC with this AC filter, transformer and the grid. This is the whole logic. This is the whole logic for this central inverter. This is for the high power applications. Another term is string inverters. What is happening? This is the one single PV panel or series of PV panels, and there will be a one inverter for that particular, and converting the power with LC filter, transformer, and the grid. Like this, there will be a number of strings, and they are feeding to the grid. So this is string inverters. This is also happening in the present scenario, and this is used for the medium power. Power is also written 2 to 3 to 20 kilowatts. And this is single phase. Definitely, if it is going for lower power, it is single phase without transformers, and string level tracking is required. What is tracking? What is that? I'll let you know. And what is error level tracking? Another aspect. This is a micro inverters. This is another point. जो माइक्रो इन्वर्टर है आपका, ये मे बी यू हैव हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग. व्हाट इज हैपनिंग? द पैनल विल बी देयर. बिलो दैट there will be a small inverter. This inverter with MPPT is below this particular panel. You can say the output of the inverter will be an AC to directly connect to the DC grid. So this is the micro inverter. This is for the low power right now. This concept is given for the low power, and sorry, in this scenario, for household applications, for small industries, this can be useful. So this is the logic of micro inverters. We'll talk about at the end, see the details of micro inverter also. So this is the three category that we are dealing with right now. Central inverters, yes, proved matured technology. String inverters, yes, matured technology. Micro inverters, there you have to work a lot. So yes, inverter is an inherent part of the solar PV conversion system. So classification will be done by two methods: direct or indirect. Direct cycloconverter, matrix converters, yes, power quality is very poor, so we're not talking about all this thing. Indirect method, based on current source or voltage source. Current source, all of you are knowing that if you're from the power electronic side, current source, because involvement of the inductor, we always avoid the current source inverter, but voltage source inverters will be always an probable option for using this converter. There will be two type of structure: multi-level inverter or two-level inverter. I'll talk a lot about multi-level. Just a minute. Just give me 1 minute. Sorry. Okay. So, see, for the high power applications, see, why I am moving towards the high power applications. See here. This is for low power. And this concept, we have given a new concept that I'll let you know in the end. And why this new concept? For the high power. So what is high power applications? Yes, for to take care of large power, there are two possibilities: using a DC to AC converter. Like two possibilities are what? High power semiconductor or medium power semiconductors. Why we are using? Just wait. Just wait. Take a minute.
Okay, sorry. So, high power applications, there are two possibilities. Either you go with the high power semiconductor devices or medium power semiconductor devices. Like if you talk about high power applications, earlier it was difficult. What we were doing, series parallel connections. And series parallel connections, because the availability of the devices were not there. So what we were doing, we are connected in series or parallel to increase the voltage and current rating of the devices or the system. But now, because a lot of research which has happened in this particular field, now this high power rating devices are now available. So we can use here these high power devices here and here. IGBTs are available. You can have 1200 volt or 600 amperes or more than that. So this solved the problem of series parallel connection of the devices. Another braid, that is a multi-level braid, is available, in which we can use a medium power semiconductor devices. Why, I'll let you know, and that is specifically why it is we can use medium power semiconductor devices, that I'll let you know later. But there is a structure which is available. It is long time back, 1981, the NEBE has given this particular structure. But that time it didn't become a famous because of so many reasons that we'll discuss in between also. So for high power application, there are two possibilities. Right now, what we are using classical two-level converters. This is the two-level converters. Still we are using, but we are moving towards a new concept, that is a multi-level converters, where we can use this medium power semiconductor devices. Okay. Now, what is MLI? What is multi-level inverter? From here, I'll try to convince you. I'll try to give an idea why we can use the medium power devices. See, this is a simple bridge structure. If we give a DC from the input side, you'll get a alternating or time variant output. This is the input. VDC will be the input, and here the output. This is the VA0. This is the VA0 will be like this, either VDC or minus VDC. And this is a waveform. Is a periodic waveform. If you go for the Fourier analysis of this particular periodic waveform, you will see that it comprising of three things: DC component, sine component, and the cosine component. If your waveform is symmetrical, then your DC component will be 0 and cosine component will also be 0. What will happen? There will be only sine component will be there. You will see the fundamental of this waveform will be a sine. That is why we are saying that it is an alternating quantity that we are getting at the output. That is VA0. VA0, I'm talking about all this thing. So this is the output we are getting. That is why this inverter, this bridge structure is always called as two level. Yeah? Excuse me, sir. Yeah, tell me. Sir, what is the maximum level of inverter is used for the design of converter? बेटा In ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? देखो आपका, मैं भी आंसर कर देता हूँ उसका. वैसे मुझे आपको उसका आंसर आखिरी में भी मुझे करना चाहिए था. सी इन ए वेरी सिंपलर लैंग्वेज, आपका TSG आउटपुट, TSG कितना होना चाहिए आपका आउटपुट में? व्हाट IEEE 519 इज सेइंग, कितना होना चाहिए आपका? कितना होना चाहिए? सी 5% से कम होना चाहिए. Yes, less than 3%. नहीं, 5% से कम होना चाहिए. और देखिए वोल्टेज लेवल में भी बड़े इश्यूज हैं. आप जब पावर क्वालिटी की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर क्वालिटी, 5% इज नॉट 10% से 15% लाइक दैट. तो व्हाट आई एम सेइंग एज ए इंजीनियर, if you are getting the output voltage, TSG in the output voltage less than 5%, यदि वो 5 लेवल से भी आ रहा, तो आप 5 लेवल के लिए जाइए ना. Why you going for 15 or 21 levels? Got my point or not? Yes, sir. Yes, sir. This is the question, a very good question. This question is asked in an interview board in an NIT कि कितना होना चाहिए. So he came to me and asked, sir, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया. So answer is very simple. Don't go for 21 level, don't go for 41 level, don't go for 25 level.
your purpose is solved with 11, 13, 17 level. You are getting voltage TSD below than 5%. Your current TSD will also be less than that. Yes, sir. तो आप नंबर ऑफ लेवल क्यों बढ़ाना चाहते हो? नंबर ऑफ लेवल बढ़ाओगे तभी आप, अभी मैं इसका आंसर करता हूँ, स्विचेस बढ़ जाएंगे। पहले अपन इसको समझते हैं कि हम मॉडरेट स्विचेस को क्यों यूज कर पा रहे हैं। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर इज देयर। ये ब्रिज है हमारा जो अपन लोग यूज करते आ रहे हैं, जो अपन इंजीनियरिंग के डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। आउटपुट विल बी लाइक दिस। अब मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सी आई एम एन इंजीनियर और मुझे पता है कि आउटपुट साइन वेव कैसे है, बट मैथमेटिक्स सब सॉल्व करोगे तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस विल बी अ साइन वेव। इतना आप लोग समझ सकते हैं मुझे लगता है। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है मेरा, VDC है, और जो वोल्टेज स्ट्रेस है स्विच के अक्रॉस वो VDC है। कैसे VDC है? हाउ इट इज VDC? सी दिस S1 एंड S4 इज ऑन, तो दिस विल बी ऑन। यदि ये ऑन है तो ये ऑफ से कॉम्प्लीमेंट्री हम S2 में देंगे। सिंगल लेग में क्या होता है बेटा, PWM इन्वर्टर्स में व्हाट विल हैपन, जो अपर स्विच है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लोअर स्विच में दिया जाता है। PWM की बात कर रहा हूं मैं, थायरिस्टर बेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। थायरिस्टर बेस का जमाना गया, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग। अब जमाना क्या है, सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइसेस लाइक IGBT एंड MOSFET। इतनी बात समझ में आती है, मुझे लगता है आपको आती होगी सबको, कि वी ऑल आर फैकल्टी एंड डूइंग रिसर्च। तो ये S1 यदि ऑन है तो S2 डेफिनेटली ऑफ होगा। सिमिलरली इफ दिस S4 इज ऑन देन दिस इज डेफिनेटली स्विच ऑन, है ना। तो अभी दोनों स्विच यदि ऑफ है और यदि ऑन है, दिस पावर विल फ्लो लाइक दिस। अभी जो वोल्टेज स्ट्रेस है इनके अक्रॉस वो VDC क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस भी VDC है, ये VDC, तो अपीयर क्या होगा, 2 VDC होगा इसके अक्रॉस। व्हाट विल हैपनिंग, द स्विचेस आर स्ट्रेस्ड विद 2 VDC। इफ यू आर डीलिंग विद 100 वोल्ट, योर स्विचेस मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड विद 200 वोल्ट। इससे एग्री करते कि नहीं करते आप? यस सर, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आप, चला गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि हियर VDC इज से 600 वोल्ट, तो you required a switch of 1200 volt. That is why I am saying for high power application, you are able to, you have to use a high power rated devices. इसके पीछे रीजन ये है। अब यहाँ पे अपन बात करें, what is multi level? What we have done? Cell 1, this is cell 1, this is cell 2. What I have done, I have connected these two in a cascaded manner. I have connected this in a cascaded manner. हमने दोनों cascaded manner में connect कर दिया। Now see what will happen. This is the output of cell number 1. This is cell number 2. Now this, ये जो आपकी जो width है इसकी, the width of this particular waveform is adjusted. ये आपने adjust करिए। कैसे करिए? आपने स्विच को ऑपरेशन करके PWM pulses देखिए। This is an overhead. When we add this two waveform, this soul, your output है आपका, it will be look like this. This is staircase output. Now see. This is the output of cell number 1, this is output of cell number 2. When we join, we take in a cascaded manner, the output will be like this. So my question is that, first of all, this is more near to the sine wave? Yes or no? ये sine wave को resemble कर रही है? अभी जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर, कर रही है। What is happening? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, इट विल बी मोर नियर टू द साइन वेव। और वो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे इंक्रीज होंगे? इस सेल को कैस्केडेड आप और कैस्केडेड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ लेवल्स विल इंक्रीज। द क्वेश्चन वाज दैट कि जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतना TSD कम होगा, उतना TSD कम होगा, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 5%। बिलो है तो हम जो सेल कनेक्ट करें। नाउ अनदर पॉइंट इज दैट ओवर हियर द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 2 VDC। 2 VDC हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है और voltage across is only VDC, and this is the beauty of this particular multi-level inverter. So if you think that here if the voltage is say 600, you can manage
this power conversion with the use of 300 volt voltage devices. That is why it is called medium power single devices. So there is another possibility that if you can handle this problem for high power applications with medium power single devices. This is the logic. I think it must be clear to all of you. ये बेसिक है आपके मल्टी लेवल कन्वर्टर का 1981 में दिया गया था. This concept has been given 1981 by the Neve. And ये नेवे ने दिया था अपने को और that time the intention was to meet the high power applications issues, and because that particular time high power rated devices are not available, that is why this concept is given. But once these devices come into the market, then this structure is not researched a lot, but in earlier stage of 2000 it's become again very, very popular. Nowadays everyone is moving towards the multi-level structure. So this is the statement that MLI wins over two-level inverters. This is because of the good power quality, less TSD. Good power quality because this is, as compared to this is more sine wave. The TSD of this waveform is around 80%, and of this 5 level is around 18 to 20%, 20-20%. The power quality is improved. TSD will be less, which is required. Important point: reduce voltage stress across devices so that we can accommodate a low medium power or low medium power devices in our structure. And better utilization of DC plus voltage. Yes, when you go for the research, you can understand this problem. So this is the whole idea. What is missing over here? यहाँ पे क्या मिस हो रहा है भैया? जो पहले अपन ने देखा उसमें और इसमें क्या? What is the difference? Anyone from the participant side? ये मुझे बता सकता है कि what is we are missing over here? Please. Earlier it was 3-stage. The DC to Solar DC PV? converter, क्या? DC to DC converter is here. वो तो है बेटा, it is there, still it is there. इसको भी गायब करना है. But यहाँ मैंने लिख दिया CHV MLI. 2 level को मैंने I have replaced with multi level. Yes, yes. Because your TSD is improved and you are able to accommodate TSD below 5% कर सकते हो, तो filter is not required over here. When you use multi-level converter in this application, you can say a filterless operation. एक स्टेज आपकी खत्म हो गई यहाँ पे. If you use multi-level, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is the idea. Yes. I always prefer step-up transformer. This is my preference. But आप चाहो तो इसको भी खत्म कर सकते हो. यहाँ पे आइसोलेटेड डीसी डीसी कन्वर्टर यूज करके हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर अपने आप आ जाएगा, तो आपका ये पूरा सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा विद पैनल. क्योंकि व्हाट विल हैपन, you have to wash the panels with water and so many things. It should not be this fault should not be forwarded to the grid side also. हाँ सर, सर इस चीज के लिए सर हाँ सर, हाँ सर अभी फटिया भी आने वाली है. बस लेक्चर ले लो. सर आप मीटिंग में जा रहे थे तो पीजी को मीटिंग में जी सर ने बुलाई तो बाद में बुलाई. वो मेरा एक्सपर्ट मैंने उसको फॉर्म कर दिया. सर मैं करता हूँ, मैं 11:30 फ्री होकर आपको फोन लगाऊंगा. तो प्रक्रिया आएगी सर आज उसको रियली सॉरी सब ऑफिशियल वर्क. सो ये आप लोग कर सकते हैं. मतलब सी दिस इज ओपन टू ऑल ऑफ यू. मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स.
you can remove this power transformer. Instead of this, you can use a high frequency transformer. Size कम हो जाएगा आपका और इसको अपन, क्योंकि जब हम when we repair maintenance पे जाता है या when we washes the panels, ये power हमारी कम हो जाती है, तो maybe some short circuit or other thing should not be forwarded to the grid side. So isolation is very much required. So if you go with isolated DC-DC converter, तो यहाँ पे भी आप you can isolation you can provide. अब मुझे करना ही है. This is my idea. This single stage conversion. This transformer is a part of grid. What I'm supposing is that it's part of this. तो मुझे तो ये भी eliminate करना है. और this is the whole idea. So how we are moving ahead? यदि मैं CHB यूज कर पाऊंगा, यदि मैं MLI इन्वर्टर्स यूज कर पाऊंगा, तो व्हाट विल हैपन, मैं DC-DC कन्वर्टर को मैं अवॉइड कर सकता हूँ. फॉर दैट व्हाट आई रिक्वायर्ड इज दैट, क्योंकि जो वोल्टेज लेवल 24 वोल्ट है मेरा यहाँ पे, 24 वोल्ट जो मेरा यहाँ पे जो हैपनिंग ओवर हियर, तो अकॉर्डिंगली आउटपुट इन्वर्टर विल बी दिस, बट दिस ट्रांसफार्मर विल टेक केयर ऑफ दिस लेवल ऑफ वोल्टेज, नॉट ए इशू. तो DC-DC कन्वर्टर का एक काम तो खत्म हो गया. The function of DC converter is first function is what? To increase the input voltage. What transformer will take care of. And the second part is what? MPPT. See, I have shown the mathematics. Only you have to deal with duty cycle. If you are able to play with duty cycle, तो वो MPPT आप inverter में भी incorporate कर सकते हैं. All of you can incorporate that functionality in this particularly CHB based MLI. यदि आप वो कर पाए, कर क्या वो, तो it is happening, we are using that, वो हमारे साथ हो रहा है, we are doing that. और papers में we will find that without DC-DC converter. So my idea is that if you are still using a step up transformer, then why you record DC-DC converter? Incorporate the functionality of MPPT in the CHB MLI itself. और इसको यूज करने के लिए मेरे पास दूसरा कंसेप्ट भी, इसकी मैं आपसे बाद में बात करूंगा. सर टाइम तुम्हारे पास कम बचा है, मेरी भी मीटिंग है, बट आई फिनिश इट ऑफ मेरे पास. अब यदि मैं इस कंसेप्ट को एम्प्लॉय करता हूं, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट पुट एंड टारगेट फॉर आरईएस बेस्ड जनरेशन इन 20, ये 2020 नहीं है, 2022 है ना, ये 2022 भैया, दिस इज 2022. 2022 में क्या होना चाहिए? इट शुड बी 2020. the targeted installed capacity will be 510 gigawatt. C, it is around 100 gigawatt. Now the percentage share of the solar power PV generation is around 20%, and this is a significant part, and this is happening because of this. So this is the whole idea why we are going from for green technology. This is the whole idea, this is the whole answer. अब अपन जो आंसर करते आ रहे थे कि व्हाट इज RES बेस्ड, व्हाई RES बेस्ड, दिस इज द आंसर ऑफ RES बेस्ड. कैसे करेंगे उसकी बात तो अपन करते आ रहे थे, हम यहाँ मल्टी लेवल इन्वर्टर को यूज कर रहे हैं. इट इज आंसर ऑफ हाउ. सो मे बी ऑल ऑफ यू आर कन्विंस्ड, इज दैट all of you convinced that we will use RES based, we will use multi-level converters in RES based generation. That is the whole idea, and because of that we are able to increase the percentage share of power generation using solar PV from 10% to 20% in the present. What is happening right now, and after an year or half a year or 1.5 year, this will be around 20%. So this is because of that. So the conclusion till here is that we have to use multi-level inverter. अब मल्टी-लेवल इन्वर्टर यदि हम यूज कर रहे हैं तो दो पार्ट हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिल्टर पार्ट, एक स्टेज चली गई आपकी. सेकेंड DC-DC कन्वर्टर हम एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज मल्टी-लेवल कन्वर्टर्स में यू हैव एन फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज more and more switches so that you can have an opportunity to play with this duty cycle. तो आपके पास चांस है कि हम उसको चेंजेस कर सकते हैं. I'll discuss this in detail. So
Basically, here I am going to discuss basically two type of topology, conventional topologies only. I'll not talk about current source. I'll talk about the voltage source, which two possibilities: multi-level or two-level. Yes, multi-level will be what? Multi-level will be nothing, having a two type of. If we go for the classification, multiple DC source or single DC source. Basically, multiple DC source in the RES based generation, we always go with multiple DC source because we have different number of panels. But if you go for drives applications, then single DC source where you can further classify it as a flying capacitor or neutral plant. We will discuss all about all this thing in the coming session. अभी अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं और see the concept. But RES based generation will always go with multi-level DC source. In that cascaded edge bridge जो अपन ने how multi-level converters works, inverter works, वो अपन ने इसी basic structure पे and what we have understand. There will be two possibilities. If your input voltage is either VDC, both are VDC for equal voltage sources, हम उसको symmetrical CHB based multi-level inverter बोलते हैं. If you are VDC or 2 VDC, then we call it as an unequal DC force sources based CHB MLI or asymmetrical CHB based MLI. We can say that. Simple. This is a neutral point clamp. Here, what is happening is this 1981. This concept is given by the Navy, and you see here over here we have a single leg for per phase system. 4 devices we are using. Basically, if this is on, this S1 dash is off. It's complementary of that. If S2 is there and if S2 is on, this is off. And these clamping diodes are used to have an staircase output. So this is given by Nebe, Takashi and Agaki in 1981. For m number of phase voltage at the output, you require m-1 capacitors on DC bus side. So if you require, if you want 3 level, you require two DC capacitor at the input side. If you require 5 level, you go 4 DC DC bus capacitor on the DC bus side. Similarly, you can go ahead with a large number of. But this is the issue. How it works? See, if these two switches are on, this two will be off because there is a complementary of this two. If this is on, we'll get VDC. If this is 2 is on, this is 0. And this is on, this is minus. So what we are getting? Level number 1 VDC, level number 2 that is 0, level number 3 is minus VDC. This is what we call it 3 level output. ये 3 level output है, ये हम न्यूट्रल्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. When we use with phase voltage 3 phase में जाएंगे तो ये 5 level बन जाएगा आपका. आप यूज करके देख सकते हैं. This is all you can understand. Advantages of this particular NPC: less number of capacitors are required with other topology. हम इसकी बात करें, ट्रांसफॉर्मर लेस आप यूज कर सकते हैं because you can avoid transformer at the input side or sorry output side और हम DC-DC converter में. But drives applications के लिए we are talking about all this thing. But difficulty is to maintain the same voltages. देखिए बहुत important part है कि हमारा ये दोनों voltage same ही होना चाहिए. अभी हमारे पास two कैपेसिटर हैं तो we have to maintain these two voltages same. But 5 level के लिए we required 4 DC capacitor on the DC bus side. तो हमें चारों का सेम करना होगा. This is the issue. चारों वोल्टेज हमें सेम करने होंगे. That is the issue. तो अभी हम 7 के लिए जाएंगे तो you require 6. हम 9 के लिए जाएंगे required 8 like this. This statement is given on that particular point. Or less attractive for the higher level because high losses will be there. क्योंकि यदि हम number of switches को देखें यदि यहाँ पे आप तो यदि आप यहाँ पे M लेवल के लिए हमारे पास 4 हैं तो सॉरी 3 लेवल के लिए हमारे पास 4 हैं तो 5 लेवल के लिए कितने होंगे? 8 होंगे. आप खुद ही कैन कैलकुलेट ऑन दिस थिंग. तो दिस इज द ऑल इश्यूज हियर. दिस इज द फ्लाइंग कैपेसिटर टोपोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसमें व्हाट इज ओनली इसमें जो डिफरेंस वो है वो कहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लैंपिंग डायोड फॉर क्रिएटिंग द वोल्टेज लेवल we are using clamping capacitors. That's it. So to generate m level of staircase output voltage,
we required M-1 DC buses are needed. ठीक है, तो this is the idea. इसमें कैसे use हो रहा है same. If this is here complementary structure will not be used. अभी ये दोनों on है तो ये दोनों off करने पड़ेंगे. हमें दोनों ऑफ करने होंगे ये, तो we'll get BDC. If we want zero level, तो we can either of this हमने इन दोनों को ऑफ ऑन कर दिया, इन दोनों को ऑफ कर दिया, we'll get minus VDC, क्योंकि यहाँ पे जीरो वोल्टेज मिल जाएगा. If we want minus VDC, we'll switch it on these two devices and switch it off these two devices. We'll get minus VDC. Okay, so advantages of this FC is if large number of capacitators are there, you will have extra energy storing devices that will be beneficial for extra write through the capability during power stages. More redundancy, this is very important, because when you go for switching actions, you will be having more redundancy. You can have a possible number of options to switch the devices, so that you can have a 0, plus VDC or minus VDC options. But what is the disadvantage? Large number of capacitors, again an issue. And second point, which is very important, you require the charging, pre-charging of the capacitor. So you require extra circuitry to pre-charge the capacitors for creating this extra levels of voltage at the output size. This we have already discussed in detail. This is the bridge type. If you continue cascade it, you will get the output. See, this is the output. If this two is on, we'll get plus VDC. If this is on or this is on, we'll get minus VDC. Sorry, 0. If this is on and this is on, if this is on, we get minus VDC. To see, there's two options for getting minus 0 level. This is the structure of CHB based MLI. Okay. Yes. Least number of components required. CY we'll see in the comparative statements. Very easy to understand, very easy to control, easy to packagings. No extra clamping diodes required. Voltage balancings are not required. Soft switching technique can be used in effective manners. So many things can be used. A disadvantage of the CHB will be what? Extra DC source is required and transformer required here. यहाँ पे आपको if you do 2 devices for 5 level, यहाँ पे आपको isolated DC source required होंगे, जैसे अपन ने वो देखा था plus VDC plus VDC. But here in our case, the panel, if you are using panel, तो आपके पास there is not an issue. This is the comparative statements for different topologies, which is based on number of main switching devices, main diodes, clamping diodes, bus DC bus capacitor requirement or balancing capacitor requirement. See, till here everything is same. Number of diodes, number of main DC devices, same. But clamping diodes we don't require in flying capacitor and CHB. DC bus capacitors you don't require in CHB. Balancing capacitor you don't require in CHB. So from here the statement is given that least number of components are required for CHB based MLIs. That is why the CHB based MLIs are more preferable for RES based generation. Okay, this is again another comparison which is basically based on a specific requirement, design and implementation, complexity, control, concern and fault tolerant capabilities. See here, in NPC, neutral point clamp capability, what you require? Clamping diodes. In FC, you require additional capacitor. In CHB, you require isolated DC source. If you talk about design and implementation complexity, which is very low in NPC and very high in CHB, because हमें input transformer चाहिए होता है, we I have discussed a lot about this. And control, concern. In NPC, you require a controller for balancing the capacitor voltage. That is why we told you if you go for a large number of flavors, this balancing will become difficult. But this control concern is there. And in FC, you require a voltage setup across the capacitors that is used for creating the step output in the output waveforms. And in CHB, you require a power sharing. Power sharing means what? We require different isolated DC sources. So how much power can be shared from each DC sources? For that, you require a control circuitry.
fault tolerant capability. It's very difficult with NPC and very easy with the CHP. From this discussion, we can easily say that NPC is easy to design and implemented for DICE applications, whereas the CHP based MLI can be effectively used for RAS based generation. This is whole story about which topology we should use with CHP based. So research is going on CHP based MLI and RS based generation, and then the CHP based may be here. How much for 5 level? How much switches are required? 8 switches are required. Now a lot of topologies are coming daily. You can say that least number of devices with 5. हमने जो प्रपोज किया है वो CHG बेस्ड हमारा जो इन्वर्टर है वो 5 डिवाइसेस को यूज कर रहा है और बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डायोड वो इंडक्टिव लोड के लिए नहीं है सिर्फ एक्टिव पावर ट्रांसफार्मर के लिए तो ग्रिड के लिए तो ठीक है व्हाट वी हैव प्रपोज इज 5 नंबर ऑफ डिवाइसेस विद 5 तो CHB विद reduced is used nowadays. हाँ अपने को फिर अभी now अपन ने यहाँ पे सब बात कर ली थी कि how the switching is done. For that we have to understand what are the modulation schemes. See here it is very important to understand that multi-level modulation scheme can be of 2 types for low switching frequency and high switching frequency. If you know about the concern about the power quality, it is always preferable for high switching frequency. MOSFET device where we can use for the high switching frequency. Why we are using high switching frequency? Because if you go for high switching frequency, the harmonic component will be reduced drastically. Because the filter requirement will also be reduced down. For a low switching frequency, you can work with the power frequency. But at the same time, if you go with the high switching frequency, losses will be very high. But in case of low switching frequency operation, losses will be very low. So it's up to you which and what you are concerned, what is your priority, what to use. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो it will totally depending upon you कि in which area you have to work. बट अपन यहाँ पे भी कन्वेंशनल तरीके से बात करते हुए विल डिस्कस अबाउट हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्लासिफिकेशन लाइक मल्टी कैरियर PWM. स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन स्कीम इज वेरी गुड. ओनली थिंग इज दैट टू इम्प्लीमेंट इन द रियल टाइम वर्ल्ड इट्स अ इशू. वहाँ पे इशू है तो यू कैन वर्क ऑन दैट. आप लोग उस पर काम कर सकते हैं. तो मल्टी कैरियर PWM की बात हम करें तो फेज शिफ्ट और लेवल शिफ्टेड. बेसिकली इफ यू स्टार्ट योर वर्क विद लेवल शिफ्टेड जिसमें PD, POD एंड व्हाट इज APOD अपन इसके बारे में डिस्कस अभी करते हैं. वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में. दिस इज PD. दिस इज फर्स्ट जनरेशन इन PD. दिस इज फेज डिस्पोजिशन. सी you required 2 carrier waves. This is upper wave, carrier wave for operating upper switches. This is lower for lower switches. See what is happening. I am comparing this sine wave with 2 carriers, upper carriers and lower carriers. What is happening? For the lower carrier, this sine wave is always higher. What is happening? This switch is always on, and this is given to S2, and complementary of it is given to the S2 dash. This is always high for this duration. This is always high for this duration, and this is always low for this duration. But for this upper wave, which is given to this switches, whenever this sine wave is greater than this triangular wave, this is on. Whenever this lower than triangular, this is off. Accordingly, this is on and off. Suppose if this is on, this is always on, you will get VDC. You will get VDC over here like this. Now this sine wave is become low than the carrier wave. This is off and this is on. This too is on. You will get 0 voltage. This is label. You will get VDC 0, VDC 0, VDC 0, VDC 0, VDC till here. Now for the lower half, second half cycle, what will happen? This will be always on. This switch will be always on. Sorry, this switch will be always on. Complementary will be always like this, and this is on and off accordingly.
depending upon the comparative between triangular wave and the sine wave, and you'll get BD minus BDC 0 minus BDC accordingly. So this is the scheme that you have to employ. This is a simple scheme, and why it is called phase disposition? Because see here, this waveform and this waveform are identical. This phase disposition and phase disposition. Similarly, this is the output waveform that we have already discussed. Similarly, this is POD, phase opposition disposition. See, this is a waveform and this is the phase opposition disposition. That is what I call second disposition. And this is alternate. What we are doing? Alternatively, we are doing. This is, or this is. Level shift. What we are doing? We are shifting the level of your carrier waves up and down. Accordingly, you are comparing with that. This is a phase shift. We are shifting the phase between these two carrier waveforms. So, this is see on the basis of this, like this. For this, I have made in one comparative statements for three different topologies. Y stand for applicable, N stand for not applicable, dash means applicable but not recommended. Space vector modulation applicable for all three, and this selective harmony application all three. Till here, this is for low frequency operating frequency, switching frequency, and this is for high switching frequency. So from here, you can see for which particular application you will go for which particular modulation scheme. So this will be an easy. This is the based on the literature review. अब आप लोग ये कर सकते हो कि जहां पे नो लिखा हुआ है, you give an idea or another concept proposed system दें जिसमें ये hybrid modulation n की जगह y हो जाए. That is why मैं आपको बोल रहा हूँ कि research world it will just like a sea having immense potential. कोई उसका zero potential है उसका, मतलब वहाँ पे कोई उसका sea का कोई वो नहीं है, अथाह सागर है, आप कहीं भी जा सकते हैं. तो y तो है, y ठीक है, how more effectively we can implement, but where is this n is there, you can propose the system where this n become y. So this is the idea that I want to give you. So because of this all discussions, we can say that multi-level is everywhere. अभी जो अपना टॉपिक है वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी. तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम देखें तो यस, ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम कहीं भी जा रहे हैं. हम यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रेट कॉम्स भी हम बोल सकते हैं, आपका दिस कन्वर्जन की हम बात कर सकते हैं, फोटोवोल्टिक एनर्जी की हम बात कर सकते हैं, विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं. दिस ऑल सेक्टर्स कैन बी यूज इफेक्टिवली विद द use of multi-level converters. So this is the role of multi-level converters in the converter system. तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अपन ने तभी एडवांटेजेस की बात करी है, but now we have to also discuss about the challenges. Very simple, in simple logic. See, if you increase the number of label, number of devices will be increased, losses हमारे increase होंगे, conduction losses increase होंगे, और that is the issue. Or it requires large number of devices, very difficult to go for the packagings. जितने number of devices, उतने gate drivers, उतने protection circuits, circuit size will increase and you have to take care of it. If you go for modularity, then it will be an issue. So many things are there. That is why I am talking about the challenges. अभी challenges आप तो research objectives बन सकते हैं, और ये research objectives you go for research goal बन गए आपके, और research goal you can go for research work. So we can say the आपका जो if you go for multi-level converters, it will increase the cost as well as the control complexity. Also reduces the overall reliability and efficiency. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ reliability? Because if number of switches are increases, control यदि आपका complicated हो गया in that particular point, हम उस particular point पे करें तो reliability हमारी reduce. So number of devices increase होंगे, control signal increase होंगे, तो हमारा reliability will reduce down. Efficiency क्योंकि losses हमारे increase हो रहे हैं तो efficiency will also be increased. So this is the statement. So this is the research challenges in multi-level based PV system. 3 sectors ही हमारे पास, inverter side पे, control side पे और grid side पे. तो grid side पे if you want to work on the green side, the grid side, तो solar
प्लांट लेवल इश्यूज हो सकते हैं आपके, जो यू कैन टेक केयर ऑफ इट. माइक्रोग्रिड्स के इश्यूज हो सकते हैं, दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इट. यदि आप इन्वर्टर साइड पे आएंगे तो यू गो फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. और यदि आप कंट्रोल साइड पे आएंगे, ग्रिड जो रिलेट कर रहा होगा, तो पावर क्वालिटी कंट्रोल पे जा सकते हैं, LVRT, है ना, लो वोल्टेज राइट थ्रू, voltage support, so many things are there. That is this I already told you, this is the immense potential जहाँ पे आप काम कर सकते हो. These are the avenues you can create by your own, with your own ideas. So this are the research challenges in the multi-level technologies for solar PV based generations. This is the concept that I want to go ahead with that. मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और 2 or 3 स्लाइड्स. टाइम इज आल्सो रनिंग आउट ऑफ इट. और देखिए, हमने माइक्रो इन्वर्टर किया, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट माइक्रो इन्वर्टर्स. तो व्हाट वी आर डूइंग, हम एक इन्वर्टर को इसके नीचे, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग एन इन्वर्टर बिलो द पैनल. तो पैनल विल कम एंड द आउटपुट ऑफ द पैनल विल बी AC, दैट विल कनेक्ट टू द ग्रिड साइड. So this is the micro inverter. ये अभी अवेलेबल है. If you search in the Google, you will find it out. Advantages क्या है? पैनल लेवल पे you can observe the performance. पैनल लेवल MPPT कर सकते हैं हम, क्योंकि that inverter incorporates MPPT. आपकी जो allows increased design flexibility, modules can be oriented in different directions. No need to calculate the string length, circular to design systems. Ability to use different makes, models of modules in one system, particularly when repairing and updating an older system is required. Increase the system availability, ये सब चीजें जो होंगी वो माइक्रो इन्वर्टर्स में आ जाएंगी. तो ये माइक्रो इन्वर्टर्स जो अभी वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसकी बात करते आ रहे हैं. दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन वर्क इट आउट, बट दिस इज फॉर द लो लेवल. Once I am talking about multi-level converters, if I replace this micro inverter with a multi-level, then it will become micro multi-level inverters. तो जो हमारा रिसर्च ग्रुप है, जो हमें प्रोजेक्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट, इस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हमने वी हैव गिवन ए माइक्रो मल्टी-लेवल इन्वर्टर कंसेप्ट. अब ये कंसेप्ट व्हाई वी हैव गिवन फॉर दिस कंसेप्ट, हम आप पहले पार्ट में जाएंगे यहाँ पे. ठीक, कन्वर्जन पे आ जाओ. तो मैंने मल्टी लेवल इन्वर्टर दिया यहाँ पे. व्हाट विल हैपन, ये वाला पार्ट पूरा आपके पैनल में अंदर आ जाएगा. इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड विद द पैनल. अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लेवल कन्वेंशनल इन्वर्टर है और ये पार्ट हम बोल रहे हैं माइक्रो इन्वर्टर. इफ यू इम्प्लीमेंट, जो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, यदि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो ये हो रहा है माइक्रो मल्टी लेवल इन्वर्टर. अभी माइक्रो मल्टी लेवल इन्वर्टर क्यों, ये भी क्यों भाई साहब, why we are talking about all this? Because of high power applications. तो माइक्रो इन्वर्टर है that is only for low power. If we use multi-level inverters, it will become for high power application. तो हम यहाँ पे ये concept जो आप बात कर रहे हैं, ये this macro multi-level inverter will be for high power. It will take place of this. This is the whole idea where we are working. And let me see, कुछ बचा है आपके लिए कि let's finish. Disadvantages क्या है आपके? Right now it is very costly affair, but when we increase the production, this will goes down. Earlier the installation of solar PV panel of 1 kilowatt cost around 1.06 lakhs. After subsidy, it was around 72,000. Now, because of the technology and so many things, the cost is around 60,000, and after subsidy, it will be around 30,000, 35,000 rupees. See, just half. So this is the disadvantage. If you work in this particular manner, the technology will get more and more matured, and the cost will goes down. Complexity will increase just because now there will be an inverter part also in between the panel. And given their positioning in an installation, some microinverter may have an issue in extreme heat position. This is the part of the panel side. Increased maintenance cost due to there will be multiple units in the array. अब जब आप मेंटेनेंस के लिए जाएंगे
तो अभी सिर्फ पैनल मेंटेनेंस हो रहा था और सेंट्रल इन्वर्टर था, बट अब इन्वर्टर भी नीचे है आपके, तो यू कैन नॉट हैव ईज, यू कैन गो फॉर मेंटेनेंस वेरी इजीली. These are the disadvantages with the maintenance. So thank you very much all of you. I hope मैं आपको कुछ बता पाया होऊंगा, और शायद जो टॉपिक आपके कोऑर्डिनेटर्स ने, आपके मैनेजमेंट ने फॉर विच द वर्कशॉप इज कंडक्टिंग, तो कुछ फ्रूटफुल हो पाए शायद ये लेक्चर. तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. आपके क्वेश्चंस के लिए मैं आई एम हियर. एनीवन वांट्स टू टॉक, एनीवन वांट्स टू आस्क, प्लीज गो अहेड. और यदि फिर भी टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास और यदि है तो मेरा मेल आईडी है आपके पास. यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, आवर ग्रुप, आवर वर्किंग ग्रुप, सो दैट हम कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. डॉक्टर अमित ओझा जी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर. थैंक यू. nice presentation, and you have elaborated all which are very much required for this multi-level converter and RES based generation. So participants are requested to kindly interact with the speaker. Yeah. Because see, Dr. R.N. Patel is also from electrical engineering department. Yeah. Dr. ओझा जी, आप मुझसे Dr. पूछिए R.N. सर, Patel is मुझे भी काम also करना from है. NIT Raipur. Yeah, sir. Good Patel afternoon, sir. sir. Yeah. Good पटेल सर, afternoon, कैसे हैं sir. आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ. मतलब मुझे आपकी जर्नी याद है, वहां से अच्छा. एनआईटी रायपुर की पूरी. और अच्छा. यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ चाको सर ना. हाँ, yes. और यू कैन आस्क अबाउट चाको सर, आपकी जर्नी वहां से एनआईटी रायपुर तक कैसे हुई. अच्छा. गुड. मेरी आपके बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है. अच्छा. ललित इज Great. माय स्टूडेंट. ललित इज माय स्टूडेंट. अच्छा, आपके स्टूडेंट है. हाँ, मेरा student. अच्छा. ललित जी का पढ़ाया आप? मैंने एमएससीटी में उसको सर एमटेक मेरे साथ का ही था वो. और अच्छा, he was- great. उसके बाद फिर सर वो पीएचडी में आ गया, और then, अब आपके साथ में है सर, और इज डूइंग वेरी गुड. Yes. Thank you. ही इज माय कलीग. एनीवे, अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ सर. और नहीं. आपका मैंने बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा. वेरी वंडरफुल. आपने जिस तरह से समझाया, इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा. सर, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे जो रिसर्च में आ रहे हैं वो रिसर्च में आए, क्योंकि बिल्कुल, आप भी बिल्कुल. समझ रहे हैं कि रिसर्च, भाई गवर्नमेंट अभी खैर लॉकडाउन है, अभी सब चीजें हैं, तो गवर्नमेंट का थोड़ा फ्रंट का कॉन्शियस है. अदरवाइज आप भी जानते हैं इतनी स्कीम्स हैं. आप तारे बिल्कुल. स्कीम में जाइए, आपके फैकल्टीज को बताइए प्राइवेट कॉलेज में जो काम कर रहे हैं वो तारे स्कीम, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. और गवर्नमेंट Yes. जो है वो दे रही है आपके लिए. आप जैसे यदि कोई आपको जैसे मेंटर बन जाएगा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए वेरी बेनिफिशियल. 60,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है. तो कौन सी स्कीम सर? कौन सी स्कीम? तारे स्कीम सर. आप तारे देखिए, और आपके स्टूडेंट जो अच्छा. काम कर रहे हो तारे स्कीम पे जाइए, आप एसईआरपी पे ढूंढिए सर. वो टेक्निकल Okay. असिस्टेंट रिसर्च एक स्कीम है जिसमें उसको फंड मिलेगा 5 लाख रुपए तक का, और उसमें कोई भी फैकल्टी जो एनआईटी या आईआईटीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में वो मेंटर होगा उसका, पर Okay, पीआई very जो good. होगा वो वही होगा, और उसको तो 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगा. वहाँ मध्य प्रदेश में सर ओपन है अभी? ओपन है नहीं, सर? सर एसईआरपी डीएसटी की सर ये. अभी ओपन है क्या वो वाला? सर सर ओपन रहती है. आप कुछ चेक करिए, मेरे ख्याल 12 महीने ओपन रहती है. ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच. सारे स्कीम में जाइए सर, और अपने स्टूडेंट्स को आप बोलिए और काम करिए, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको भी शेयर करिए सर प्लीज. ललित Definitely. आपको सर है. ललित है. यस सर. डॉक्टर ओझा साहब, थैंक यू. हाँ डॉक्टर ओझा साहब, सर. ये क्वेश्चन वगैरह आपने प्रेजेंटेशन तो बहुत, मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ. सर और आप बताइए सर. मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है अंबिकापुर में. नाइस टू मीट यू सर. हाँ, थैंक यू. जबलपुर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भोपाल से पीएचडी मेरा आरजीपीवी से. ओह वेरी गुड सर. वेरी गुड सर. बेसिकली मैं रहने वाला भी वहीं का हूँ, पन्ना मध्य प्रदेश. ओह वेरी गुड सर. बहुत सर जबलपुर बस सर, जीसी आप से सिविल पास में हमारा इंस्टॉलेशन आप पैनल में, अभी मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ सर, बड़ी कंसल्टेंसी है वो, तो उसमें वो सिविल Yes, इंजीनियर sir. हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें पैनल को जो नीचे है उसके लिए भी हमें काम करना है, तो हमारी टीम पूरी काम कर रही है. बट एनीवे सर, मतलब दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो हम बच्चों को कुछ दे पाए.
लेकिन सर हम लोग यदि काम नहीं करेंगे तो ये लोग भी नहीं कर पाएंगे ज्यादा काम कुछ, क्योंकि वी आर द पार्टिसिपेंट क्वेश्चन वगैरह पूछना शुरू करिए। सर इतना अच्छा बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लिए। 11:30 बजे ड्यू टाइम खत्म भी हुआ है। और सर दूसरा मेरी मीटिंग भी, पर सर किसने मुझसे कहा था कि व्हाट्सएप में द नंबर ऑफ लेवल, तो मुझे लगता है कि उसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ लेवल पे नहीं जाना, हमें डिवाइसेस को भी मेंटेन करना है। हमें यदि हमारा टीएसडी 5% से नीचे आ रहा है तो यू स्टॉप देयर। और किसी तरीके से स्विचिंग लॉसेस जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स मैंने आपको डिफाइन करी हुई है, ओवर मॉड्यूलेशन में चली जाइए, स्विचिंग लॉसेस अपने आप कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ लेवल्स को इतना इंक्रीज करिए कि टीएसडी 5% से कम हो जाए, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो। अब आप देखिए, जो अच्छे पेपर्स होंगे जो IEEE या IIT में, आपको कभी वो पेपर नहीं मिलेगा जिसमें कोई टोपोलॉजी दी होगी 41 लेवल्स होंगे। मुझे तो कोई लेवल नहीं दिखाई दिया। वो पेपर आपको वही मिलेंगे जो जर्नल ऐसे होंगे जहां कोई पेपर छप रहा हो, क्योंकि हमें 41 लेवल्स के लिए नंबर ऑफ स्विचेस क्यों बढ़ाए हम? राइट। यदि आप टीएसडी 1% कर लोगे तो एक स्टूडेंट 1% कर रहा है और एक आदि 4% कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। IEEE के नीचे तो है ना 1519 के नीचे, दोनों सेम है हमारे लिए। श्योर सर, पर श्योर। दूसरा 4% कर रहा होगा, उसकी नंबर जो डिवाइसेस है वो आधे से भी आधे हो गए होंगे, कंट्रोल सर्किटरी कम होगा हमारा। तो शायद मेरा आंसर यही होगा कि तो कोई थंब रूल नहीं है, वो तो आपको डिसाइड करना है एज ए इंजीनियर। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर, बताइए सर। Sir, for example, for generation of high voltage, like HVDC plant, Yeah. that is comes under the high voltage. Okay. Correct. So in that side, there is any effect of increase or decrease of level of inverter? Sir. Actually, HVDC, when you talk about HVDC, Yes, so if you are working in the research, तो आप मॉड्यूलेबल मल्टी लेवल इन्वर्टर्स पे जाइए, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ इट। तो मॉड्यूलर मल्टी लेवल इन्वर्टर्स में वो दैट विल बी टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ लेवल्स। तो यदि आप HVDC में जा रहे हैं, वो टॉपिक को हमने टच नहीं किया अभी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट HVDC, तो आप, और यदि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड ओपनिंग। आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल जाइए। तो नंबर ऑफ लेवल्स पे सिर्फ आपको दो चीज पे पॉइंट है जहां पे आपको कंसंट्रेट करना है, पावर क्वालिटी प्लस योर परफॉर्मेंस इश्यूज। क्योंकि चैलेंजेस क्या है हमारे पास, वो कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस करना। यदि हम 24 कंट्रोल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस इज ए इशू, माल फंक्शनिंग इज ए इशू। मेरे को 12 कंट्रोल सिग्नल के लिए जाऊंगा या 24 के लिए जाऊंगा, 24 के लिए जाऊंगा, तो मेरे लिए आसान क्या है, 12 है। yes sir. इंटरफेरेंस इज एन इशू, माल फंक्शनिंग ऑफ डिवाइसेस। समझ लीजिए एक इंटरफेरेंस हुआ और एक ने माल फंक्शनिंग कर दिया, अगेन इशू। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप हाई वोल्टेज के लिए जा रहे हैं, 2 पॉइंट पे ध्यान रखिए। आप मॉड्यूलेबल मल्टी लेवल इन्वर्टर पे जाइए, प्लस 5 लेवल में फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी पे जाइए। यदि आप फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी यदि होती भी है आपकी, तो 5 लेवल से 3 लेवल पे हो जाएगा वो। तो मल्टी लेवल की ब्यूटी भी रहेगी और फॉल्ट टॉलरेंट कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी आपकी। तो दिस इज व्हाट आई सी इन HVDC। बाकी आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम HVDC, बट जितना मुझे पता है, यदि आप नंबर ऑफ लेवल से बिल्कुल मत जाइए, यू गो फॉर मॉड्यूलर मल्टी लेवल इन्वर्टर्स फॉर Sure HVDC। sir, sure sir. Thank you very much sir. थैंक यू। Very nice session sir. Thank you. नहीं सर, आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, और आईडी है मेरे पास, मेल आईडी, आप कैन कम्युनिकेट। हाँ बताइए सर, बताइए कोई भी साहब, हाँ। ये मल्टी लेवल इन्वर्टर जो होता है ना सर, उसमें मल्टी लेवल इन्वर्टर जो होता है, वाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व व्हेन मल्टी लेवल इन्वर्टर अप्लाई टू इंडक्शन मोटर। सर ड्राइव साइड में हाई वोल्टेज क्या, फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया। Normally, why voltage fluctuation is generally observed when multi-level inverter applied to induction motor load. सर ऐसा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ मल्टी टोपोलॉजी का पार्ट है ही नहीं सर वो। यदि सर देखिए, इंडक्शन मोटर जो लोड है हमारा, राइट से, लेकिन हम लोगों ने एक सर हमने एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग का डिजाइन किया था, ओके, एमटेक के दरमियान हमने दिल्ली IIT के द्वारा। तो उस समय हम लोगों ने 3 हॉर्स पावर का ब्लोअर लगाया था, उसमें मल्टी लेवल इन्वर्टर भी लगाया था। उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा था, हमने सिमुलेशन भी उसका किया था सर। तो जब सिमुलेशन प्रोसेस किया था तो अपने प्रॉब्लम की अपने कंट्रोल सर्किटरी या ऑपरेशन में इशू होगा। मल्टी लेवल में सिर्फ इशू जो होता है, देखिए ड्राइव्स के लिए जाएंगे। अब टोपोलॉजी सर कौन सी यूज करी थी उसमें, डायरेक्ट क्लेम करी थी कि CHB यूज करी थी आपने?
CHP वाला था। सर वो आपको नहीं टेक्निकलिटी नहीं पता होगी सर। डायरेक्ट क्लेम में यदि आप जाएंगे फ्लक्चुएशन तभी होगा जब आपके जो वोल्टेज लेवल है आपके VDC1 VDC2 वो यदि सेम नहीं होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट एनपीपी की प्रॉब्लम आएगी। तो ड्राइव्स में एनपीपी की जो प्रॉब्लम है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो आपका जो कंट्रोल सर्किटरी है इट शुड टेक केयर ऑफ दिस VDC1 एंड VDC2। तो या तो आप उसके अक्रॉस तो बैटरी लगाइए सेम वोल्टेज की, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, या कंट्रोल सर्किटरी में आप एनपीपी को न्यूट्रलाइज कर दीजिए किसी तरीके से, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 100% सॉल्व हो जाएगी। Correct. नहीं होगी सर तो आप मुझे बताइए, हम सॉल्व करेंगे सर। एक्चुअली उस समय मुझे याद आ रहा है उन लोगों ने क्या किया था, 17 लेवल जो 3 फेस जो था ना CHP, तो सर 17 लेवल पे यदि आप गए थे तो CHP हम होगा। लोग तो चूंकि इलेक्ट्रिकल वाले थे नहीं तो उस पर हम लोगों ने काफी वर्क किया था एनर्जी। हाँ, yes sir, yes. नहीं So, सर, आप thank you मुझसे sir, you have took out time in our this important technical university webinar. So we are very much thankful on behalf of Technical University Bhilai and on behalf of Bhilai Institute of Technology Raipur that you very wonderful time and your speech was very stimulating and you have covered all the aspect of this important aspect of application of multi-level converter. Actually, this is the university CSB2 MOU program and we are organizing 11 FDP this financial year 21-22 and likewise 33 FDP program will be organized in 3 consecutive years. So this is only the objective to impart the knowledge to our faculty so that they may be very enriched in the technical fraternity. So thank you all. Thank you very much. Thank you all of you. Over Thank you to Khaja Dr. sir. Khaja ji. Thank you Khaja sir. Thank you all of you. Thank you sir. Thank you, sir. participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. आप लोग और टच में रहेंगे, आगे मुझे मौका दीजिए। Thank you very much. I'll try my best. Surely, sir. Thank you पटेल सर। Thank you, sir. Meet you. थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, या मुलाकात सर, करते हैं। आपसे मिलेंगे, आपको बुलाएंगे तो हमारे लेक्चर में। सर बिल्कुल मिलेंगे। Thank you very much. डेफिनेटली थैंक यू। Thank you. या Sir, I am leaving the meeting. Thank you very much, sir. Thank you, sir. The participants are being informed that the next session will be start after 20 minutes. So kindly report at 12 noon. And I once again request all the participants to please interact with the keynote speakers regarding the queries, whatever may be possible they would like to solve. As this is an online faculty development program, it is not at all possible to interact personally. But if you are getting this online interaction facility, so I request all the participants to utilize this opportunity. Thank you one and all. We will be connecting soon after 20 minutes. Thank you. Thank you Patel sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा, काफी अच्छा चल रहा है प्रोग्राम आपका। थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू सर, थैंक यू।
All the participants are being informed that the keynote will be joining us shortly. Dr. Hadi Habib Sheikh from Egypt has joined or not? Dr. Khaja. Sir is about to join, sir. Yes, So you may start because session is started. Yes, So now you introduce to Professor Hadi Saab from Egypt. yes, sir. I welcome you, sir, from Indian University, Technical University, Chhattisgarh. Yes, sir. Are you listening? Yes, very pleasure to invite you in Indian Technical University. Just now, Dr. Hadi Habib has joined, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Hadi. Your voice is mute. Good afternoon. How are you? I'm Good very sorry for being late, but the traffic was not that easy to reach the university. Okay. But I'm now here. Thank you very much for the invitation. So, are you belongs to India or Asian countries? Because your look is not looking like this Egypt. Your face is looking like Indian. Or some Asian faces. It's early morning in Egypt. Yeah, it's now it's Okay. 30. Yeah. Okay, nice, and welcome you, sir, from India. Welcome, sir. So, introduce to Professor Hadi Saab and start the session. Surely, sir. Surely. Dr. Hadi Habib received a PhD degree in 2019 at the age of 29 in electrical power engineering from Helwan University, Egypt, including associated research with Texas A&M University, USA. He got his BSc degree in 2011 and MSc in 2014 from Helwan University, Egypt. He is the chairman and the initiator of the IEEE Industrial Electronics Society, Egypt chapter. His area of study includes smart grid, energy, power system control, optimization, control engineering, and water energy. In 2017, he won a grant to study teaching and research of renewable energy in Texas University, USA, from Fulbright Association. And now he is a member of Fulbright alumni. In 2016, he won the Best Paper Award from the Tranix Tempus project on creating a model to integrate sustainable water, green energy, and secure food together. He is also an expertise in the field of sustainable energy and development. So, sir, a warm welcome to you in this faculty development program on behalf of BIT Raipur. For a kind information, the program is being conducted under the collaboration of AICT CSVTU Joint MOU Teachers Training Program, sir. And here with among us, we also have Dr. R.N. Khare. He is the CSVT FDP coordinator. Sir, a warm welcome to you also. So I request Dr. Hadi Habib to start the keynote session on advanced technology based 100% sustainable energy regions and communities. Sir, please. Okay, thank you very much for this presentation to myself, and I would like to thank all the organizers for hosting me today in this excellent program, which has the title Green Technology and Sustainable Engineering. And since we are all working to the technology for sustainability
and to help the world to better life in the upcoming years and decades. Today I'm going to present you the presentation titled Advanced Technologies Based on Sustainable Energy Regions and the Communities. When I'm working as a lecturer in Heliopolis University for Sustainable Development, which is the Sustainable Development University in the Middle East. In addition, I'm the chairman of the IEEE Industrial Electronics Society in Egypt. Well, I would like to start my presentation with this image. Well, you can see in this image that all the energy that is generated is coming from renewable resources. And well, I can tell you that this image is a dream of all the people working in the electricity and the energy sectors, as a professors, engineers, researchers, students, and anybody working in this field aims to reach this dream. And electricity generated only from renewable energy resources, but at the same time, it should be reliable, safe, and high quality electricity to let all the people be able to do whatever they like from the electricity. And there is a very big initiative towards electrifying everything in the world. So electricity is very important in the upcoming decades. It's very important now already, but in the upcoming decades, it will be more and more important. And from this image, we need to ask ourselves a question: is 100% renewable energy something possible or not? Well, before answering this question, we need to look at some facts, look at some numbers. Well, in Iceland, all the electricity generated there are from renewable energy resources. It has 100% penetration level of renewable energies. Norway and Costa Rica are almost done to reach 100%. They are 98 or 99. Even Costa Rica is more than 99.6% now. So you can say that they reached almost 100%. Brazil and Kenya are 70% now. Egypt, as we will see further in the presentation, is increasing the penetration level of renewable energies. And worldwide scale, we can say that the penetration level of renewable energy in producing electricity is 23% in the whole world. So the answer of our question is yes. 100% renewable energy is something achievable. Why I'm saying so? Because it already exists in Norway, in Iceland, in also Costa Rica. Then we come to another question: why 100% renewable? Number one, because as we said, that is something achievable. We can do so. We can reach 100% renewable energy technically and economically. Countries already reached it, or in the way to reach it. Number two, it saves money, because the cost of the crude oil is going to increase in the future. And the scenario of 100% renewable energy would be less expensive than relying on crude oil, especially that the crude oil, as I mentioned, will have high price in the upcoming years. Number three, it creates more jobs. So it will solve the unemployment problem that the world is facing nowadays. Number four, which is most important from my point of view, 100% renewable energy will help to below the temperature to 2 degrees, which will help us to face the climate change and save our climate from the problems that we are facing nowadays. Okay, so if the world is planning to have 100% renewable energy, and if this is the dream of all the people who are working in sustainable energy, so what are the plans to reach clean generation? Well, the plan is in 2050 to have a world of 100% penetration level of renewable energy. So we are planning, the world is planning to have all the electricity in 2050 from renewable energy resources only. To make this done,
This means that in 2030, we have to reach 42% penetration level of renewable energies worldwide. Because in 2020, we already reached the 23%. This means that the world in 2050 is going to generate 23,000 gigawatt or even more from renewable energy resources. This scenario will offer 45.2 million jobs. And the scenario which the energy sector is working now will offer only 29 million jobs, which means that we are able to produce or to offer jobs by 1.5 or more times the current situation now. And if this happened, this will lead to carbon dioxide emission reduction. Will reach in 2050 0%. In 2012, it was 146%. In 2020, it decreases. It was 145%. In 2030, we aim to reach 96%. In 2040, it will be 39%. If this happens in 2050, we will reach 0%. All are measured in the reference of the 1990 emissions. So this is the plans of the world. In 2050, all the world have electricity from renewable energy resources only. If this is the plan, if this is the dream, so what are the main renewable energy technologies that we are going to rely on to reach the dream of 100% renewable energy? Well, the sun is a resource. We can convert it to electricity through two technologies, the photovoltaics and the solar concentrated power. The wind turbines, which can convert wind energy to electricity. The geothermal converters, which can convert the heat and the energy under the earth or the ground to electricity. The tidal, the waves, the hydroelectric resources can be converted to electricity through turbines and so many other technologies, dams and so on. And the bioenergy or the biomass and how to convert it to electricity through biogas, biodiesel, and many other technologies and facilities. The most three promising technologies are the PV. Well, we can say that the PV is the most growing technology nowadays worldwide, followed by the wind, and now we can say that the biomass is in the picture. It's growing, especially in countries like India, Egypt, and countries like this, which has many agriculture wastes. Well, if this is the technologies and the dream, what are the challenges to reach the 100% renewable energies? Of course, it's not easy to turn to 100% renewable energy. There are challenges. Number one is the uncertainty due to stochastic nature. Well, I'm always telling my students that we are not sure in August, where it's very hot here in Egypt, that we will have enough wind to feed our demand. And I'm not sure that in January, where there is no sun or the sun is very poor in comparison with the rest of the year, we'll have enough power to feed our building. So there is an uncertainty due to stochastic nature. Number two, large tract of lands. Most of the renewable energies need space, need large tract of lands to implement the projects, especially in the big scale. For example, if you need to demonstrate 1.8 gigawatt of photovoltaics, you need a huge space for that. Number three is the materials. We can say that the renewable energies materials, especially those who are new, are still expensive and not available everywhere. Number four is the transportation of renewable energies is not that easy, either before the installation or in the transmission of the electricity. It's not that easy, and it needs work and needs more logistics achievements to be done. Number five is the economic cost is always an issue, especially for the energy storage system. And there is no way, if you are going to establish off-grid solutions for renewable energy, you need storage, because
has stochastic and uncertainty nature. So we are all aiming to reach 100% renewable energy. Those are the challenges. So to face these challenges, we need to have like rules, or what we say features for the 100% renewable energy community, how it will look like. Number one, it should be energy efficient. It has no meaning to operate the lights in the morning. Number two, the electricity should come only from renewable energy resources, and we can say that you cannot rely only on one technology. You cannot rely only on PV only to reach 100% renewable energy. But it will be better if you rely on PV and wind, for example, PV and biogas, biodiesel, whatever. Number three, you should make sure that everyone has an access to this renewable energy and to the energy market, and he can monitor and work with the energy market in a good way. Number four, the utility business should always cooperate, the generation companies with the distribution companies, with the transmission companies, with all the companies to achieve the 100% renewable energy, and at the same time you guarantee high reliable and high safe electricity. Number five, you should make use of the technology of this era, smart grid technologies, the storage technologies, the artificial intelligence, the real-time control, the real-time protection, and so on, to reach the 100% renewable energy environment. So actually, I'm working in this field, can say 5 years ago. So I worked in many projects in different levels. Some of them are in the grid level, others are in microgrid level. I will illustrate you and discuss with you 6 projects of the projects that I'm working in. The first one is targeting 100% renewable energy in power grids. Mainly we mean here the Upper Egypt region in the Egyptian grid. In Egypt, we have a region called Upper Egypt region, where you can find Luxor, Aswan, and Canaan. By the way, Luxor includes 1/3 of the monuments worldwide. So it's a beautiful and famous city. Well, as I'm telling you, the Egyptian grid, you can say that it's partitioned into regions according to the regional control centers. Cairo region, where you can find the capital; Alexandria region, along the Mediterranean Sea; Tannar region, along the Red Sea; Delta region, Middle Egypt region, and the Upper Egypt region. The thing that I want to tell you about is that all the power stations in the Upper Egypt regions are from renewable energy resources only. There are 2 dams and a photovoltaic park, as we will see now. And there are also renewables in the Canal region, along the shore of the Red Sea. You can find very good speeds for the wind. So they demonstrated since 1990 many wind farms there. The most famous one of them is Za'farana, as we will see now. But as I mentioned, there are 2 dams in the Upper Egypt region. The High Dam, which has 2.1 gigawatt installed capacity, and Aswan Dam, which has 0.55 gigawatt installed capacity, with total installed capacity of the 2 dams 2.65 gigawatt. We have also the world's greatest photovoltaic park without storage, which is 1.8 gigawatt, Bimban Photovoltaic Park. The project is now done, and I think it's a matter of days, and all the project will be connected to the grid. Now 3/4 of it is already connected and injecting the power to the grid, and the final quarter will be integrated to the grid in the upcoming 2 months or something like this. This is for the Upper Egypt region. 2
as I mentioned, 2 dams and a photovoltaic park. In canal regions, there is 2 wind farms, Zafrana wind farm, which is 545 megawatt, Jabal al-Zayt wind farm, which is 580 megawatt. 2 great farms. Zafrana farm in the beginning of the millennium was the greatest wind farm worldwide, but now there are others which are maybe have more installed capacity than Zafran. One of the initiatives that we did is we need to maximize the penetration level of renewables in the operation of the Egyptian power system. And at the same time, we don't need to make huge power losses in the transmission lines. So we created power system optimization algorithm. Has 2 objectives: minimum power losses and maximum penetration level of renewables through minimizing the curtailed power of each renewable energy power station, either farm or park, photovoltaic or wind or even hydro. And this is the first objective definition, mathematical definition, and this is the second objective, mathematical definition for minimizing the curtailed power of each renewable energy resource. And we assumed that both objectives have the same importance, so both of them is 50%. The variables were how much power each generator will produce from active and reactive power. And we subjected our optimization problem to the power flow equations. The generated power should be equal to the demand and the losses for active and reactive powers. The active and reactive power capabilities of each generator are considered. The limits, acceptable limits of the buses are considered according to the Egyptian grid code, and also the thermal limits of each transmission line or cable is also considered in this optimization process. And we applied teaching and learning based optimization process to perform this optimization technique, and it proves better results in terms of the increasing of the share of renewable energies. To test our system, we simulated a typical summer day in terms of the load hour by hour, the radiation and the wind speed, also hour by hour. And we calculated the penetration level of renewable energies in the Upper Egypt. Since it includes only renewable energy resources, it should feed all its loads from only renewable energy resources, and the penetration level of the whole Egyptian grid according to the 2 equations, as you see. And we found that using this optimization, we can reach in summer more than 10 hours of 100% penetration level of renewables in the Upper Egypt region, and more than 15% or 15% penetration level of renewables in the whole Egyptian grid. And we achieved less total power losses by 20% or even more. And we also simulated a typical winter day, hour by hour, radiation and wind speeds, and we found from the data that we got from the control center that the total load is minimized by 3 times in winter than that from summer. And we could achieve in winter 100% penetration level of renewables in the Upper Egypt region. So using our optimization technique, whole day or winter day. So all winter, you can operate the Upper Egypt region only from renewable energy resources. You will not need to take power or import power from other regions, either Middle Egypt region or the Canal region. And we could reach in 7 hours a day more than 20% or equal 20% penetration level of renewables in the whole grid, which is very good. And we achieved less total power losses by 10% using this optimization technique. Well, this results is improving, and we are trying to use modern techniques even to reach better operation for the Egyptian power system in terms of higher penetration level of renewable energies and less power losses. For project number 2,
Now we came to our university where I'm working and where I'm talking to you now, which is Heliopolis University, and how to turn it to 100% renewable energy community through on-grid. Now we are in the implementation phase of this. We got everything. We got the approval from the government and so on. We are trying to have zero-cost grid-tied renewable energy systems, and we get electricity for free after 2 years, and we will see how. This happened through installation of a 200 kilowatt PV systems in the university. How we reach the number 200 kilowatt? We first calculated the current demand calculations and future load predictions. And then we calculated the required PV capacity to cover this total kilowatt hour consumed by the university, and you will see how. And this was a little bit challenging. And then we selected where we are going to put those PV microgrids in the university, above which buildings. And then we began to draw the mechanical and the electrical designs, and then we test the system, and we are now in the implementation phase, and then we will operate the system, and it will be working. Most probably next month we'll finish this project. Well, the first step was to calculate or to know the loads. We got the amount of money that we paid to the electricity company and the kilowatt hours that we consumed in every month in 2019 and in 2020. And we found that at the end of 2019, we paid like 720,000 to the electricity company, while at the end of 2020, we paid only 439,000. The reason behind that is that 2020 was the COVID-19 year, and all the education turned to be online. So as you see, the university was working with, you can say, half of its, or even a little bit more of its facilities, and is consuming like half of its consumption in 2019. Actually, the Ministry of Education now is trying to turn the education to be hybrid between offline and online. Like the student should come 2 days here in a week to the university, and the other 3 days should be at home. And then we try to calculate the peak sun hours in Heliopolis University, because the peak sun hours differs from country to country, from city to city. So we already have a 4.5 kilowatt PV installed capacity in the roof of Faculty of Engineering. We try to use the data that found in the portal of this power plant, and we calculated the peak sun hours of each month. And then we began to size the PV system, and we found that 200 kilowatt will allow to the production of 300,000 kilowatt hours a year, which is an average number between 2019 and 2020 consumptions. And since the government is moving towards hybrid learning, so I think this average should work with our future loads. And the total cost of this PV system is like million LE Egyptian pounds. And we calculated the payback, and we found that we will get our money back after 1.6 years, almost a year and a half. And then we will begin to have electricity for free without paying anything to the Ministry of Electricity and the electricity company. And then we selected the pharmacy roof that we are going to install 100 kilowatt PV in it, and 50 kilowatt PV system will be installed in the physical therapy faculty roof, and another 50 kilowatt will be installed in the roof of the main office. This project is almost done. We are in the implementation phase. It will be in service
I think maximum by at the end of July, which is next month. Number 3, we moved to how to achieve 100% renewable energy in communities, especially agriculture communities. And Egypt is famous for agriculture. Well, the people of agriculture also have a dream to reach sustainable agriculture. And since we have also a dream to reach 100% sustainable renewable energy, so we can integrate our dreams to achieve one big dream. We are trying to use the organic waste of the animals and plants and the humans to be seed or an input for the biodiesel and biogas generators. And then the biomanure, which you got from the generation process of the biodiesel and the biogas, you can use it in organic farming. And since the humans and planets and animals are living through this organic farming, they have waste, so we will again repeat the cycle. So we have renewable energies, the biodiesel, the biogas, and we have also the sun, so we may use the photovoltaics and the solar thermal until this. And actually that is what we did. We have 2 farms, 2 interconnected farms. They are both related to the same holding, which is SECAM holding, as we will see. We made a study that how we can operate the 2 farms from photovoltaics, CSP, biodiesel, biogas, and battery energy storage system in the 2 farms. The 2 farms are identical, as you may see, and they are also identical in the farm loads. And we modeled and simulated these renewable energy generators and storage. And we assumed that each one is 150 kilowatt installed capacity. And we began to think how to use new technologies in the implementation of these projects, which will improve the efficiency of it. So we used a new controller called nonlinear fractional order PID controller. It's a hybrid controller between the fractional order PID controller, which is now famous, and the nonlinear PID controller. And this is the equation, And we began to use the phasor measurement units to measure the voltage and the current in real time or in microseconds delay domain. And we also use the 5G networks. And we also considered in our study the losses of the transmission of the data. And we also sent the control signals through this 5G network. We also began to use new optimization techniques. In this study, we used poor and rich optimization techniques, which are 2 optimization techniques are merged in one to improve our results and to get the optimal parameters of the controller, which is 6 parameters. The results prove that this optimization technique is better than genetic algorithm and other state-of-the-art techniques. We made our study according to the real change in demand and change in radiation in SECAM, where you can find these photos from SECAM, the animals, the trees, and even the people who are living in SECAM community. And then we calculated the change in frequency, the change in the high line power, and how the bioenergy is injecting the power according to the change of the load, considering this change in radiation in the morning and at night, and how the storage are feeding at the emergency and at the critical moments, and then it returned to its origin. And the bioenergy is responding in long run to the change of the load. The study proved its progress and is successful. And we are now trying to buy the biodiesel and biogas to implement this project in the 2 farms which are related into SECAM. The 4th project is a little bit different. All the previous 3 projects are in Africa, Egypt. The 4th one is in the marine
communities in oceans and sea, and how you can turn them to 100% renewable energy. Well, if you are talking about the marine renewable energy technologies, you can find the tidal, the offshore wind, and the wave converters. So we assumed that we have 1 megawatt installed capacity of each of these facilities, and we modeled that, and we began to think, how can we handle the change of the loads in an isolated community in the middle of the sea or in the middle of the ocean? And we found that there is a way to track the changes in the load and allow the generators of the tidal to cover the change of the load through what we call supplementary control. We use 3 different controllers: the integrator scheme, and the fractional integrator scheme, and the nonlinear fractional integrator scheme. We also used a new optimization technique which is inspired from the Black Widow behavior, and it's called the Black Widow optimization. And we simulated the real wave change in power in the area of Fiji, where you can find Fiji in Australia. And we found that through these controllers and through this ideology, we can reach a stable power system to feed the off-grid Fiji from only renewable energy sources, mainly tidal, offshore wind, and wave systems. And as you can see, the tidal is responding to the change of the waves and the change of the demand in Fiji. Project number 5 was part of my PhD, and how to apply secondary voltage control to 100% renewable energy power grids. We assumed that we have a system or a power system which is only operating from renewable energy resources, mainly photovoltaics and wind, with very low penetration level of hydropower. So most of the penetration levels are coming from the photovoltaics and the wind energy. Moreover, we make it a little bit difficult. We assumed that the wind farms and the wind system are integrated to the grid according to the Norwegian grid code, and the PV system is integrated to the grid according to the German grid code. And then we began to design a new secondary voltage control circuit for the renewable energy systems. Already there is a circuit for the secondary voltage control, which is well known for the traditional generators and traditional power stations. But we made a new thing according to the inverter-based power stations. When you have a load bus, you need to reach the voltage of a certain load bus to that level. You put it as a reference, and then you measure the current voltage, and through PID you are tracking it. This is the control signal. You put it as an input to be compared with the reactive power already injected from this renewable energy system as a PV or wind, and then through integrators you can control the pulse width modulations of the inverters to help you to reach the voltage that you are going to track hour by hour, half an hour by half an hour in your grid. To make it easier, we need real-time measurements. So we assumed that we are going to use the phasor measurement units, which can measure both the magnitude and the angle. And since it's a little bit expensive, we minimize the number of PMUs such that all the buses should be monitored and measured. This could happen. The PMU can measure the bus which is installed in and buses which are connected to it through transmission line or transformer. And we found that the optimal allocations of the PMUs are at buses 22, 6, 8, and 9. And then we began to think which load bus that we are going to implement the secondary voltage control circuit in.
we calculated the sensitivity change in voltage with respect to the change of the reactive power and the short circuit current, and we found that bus 5 is going to be the most bus which its voltage is affected by the change in reactive power, and we selected to control it. And then we assumed the many operation conditions. One of them was the outage of 1/4 of the wind farm system which is installed in bus number 1. And then we calculated through optimal power flow to achieve the minimum power losses, the optimal voltage of bus number 5. And then we applied our second voltage control circuit, and we found that we can reach this value through it by injecting reactive power from the 75% which are still alive of the wind farm in bus number 1. And then we calculated the voltage deviation index. The voltage deviation index, as much as it's 0, is better. And we found that it's very better, very good if we are going to use our technique, and it would be bad if we didn't use the secondary voltage control that we developed in this study for the voltage deviation index and for the power losses in megawatt. This project, and the final one, is what we call floating PV, and how using floating PV in Egypt, because our study in Egypt, but I know a lot of people working in this in India, because I think you have projects already implemented in this in India. I also did a paper with a girl called Nigansini from India about this topic. Well, the idea of the floating PV is to put PV in water. Why this is important? Because 70% of the Earth's planet is water. So putting this PV means that you are going to use this space of water in generating electricity. But not only that, I can tell you that the PV, which is floating PV, is more efficient than the ground-mounted PV by 50%, and 20% more efficient than the rooftop-mounted PV. Why? Actually, this is because in summer, the temperature increase. The high temperature minimize or reduce the productive power from the PV systems. So in order to make it stable power or to maximize the output of this power, you need like cooling or natural cooling, let us say that. So natural cooling should be done through something natural. So if you put it in water, this water will make this cooling. In addition, it's also very important because it will reduce the evaporation rate of the dams, which is very important nowadays for the people who are working in water engineering. And because here in Egypt also we have another problem, which is the new dams that they are going to construct in Ethiopia, which means that the amount of water that will come to Egypt will be reduced year by year. Actually, we make all these calculations if we put the floating PV in the high dam and in Aswan Dam, and we found that we first assumed many scenarios and many types of PV that we are going to use, the monocrystalline, the polycrystalline, and the thin film, and we found that the annual production of electricity using the FPV is going to be 10 gigawatt hour, which is a very big number. Actually, the water will be saved from evaporation, will be 0.1 MCM, which is also a big number. And the most important thing is that through this project, if implemented in real, because it's not yet implemented, it's a research based, it's going to reduce the carbon dioxide emissions by 44,000 tons. And also, since you stopped the evaporation of the water,
in dams. So you are going to increase the hydropower by 11 gigawatt hour, which is also a very big number. So such technologies of implementing hybrid renewable energies. Here we hybridized the PV with the hydro systems because we made our study in Aswan Dam and the high dam in Aswan in the Upper Egypt region. It maximizes the efficiency of the renewable energy to the two renewable energy technologies. The hydro and the photovoltaics in Egypt. So at the end of the day, I would like to conclude with you the results of this presentation. 100% renewable energy environment is something applicable. It's already there in Iceland and in many regions, many communities, and also, as I mentioned, in countries. Statistics and studies and the newspapers and everything said that in 2050 the world will reach 100% renewable energy. In my opinion, there will be penalties for the countries or for the people who are not obeying this strategy. And if you are generating electricity from something unfriendly, not renewable, I think there will be penalties for those who are doing so at that time. 100% renewable energy systems is not only thing related to energy people, but there is a collaboration should be done from the people from agriculture sector, from water sector, people who are working in computer engineering, and all the people actually should collaborate to reach this 100% renewable energy dream. In new techniques, smart controllers, smart metering, like the phasor measurement units, the new controllers that use the nonlinear fractional order PID, the nonlinear fractional integrators, all the new optimization techniques are key points to reach secure 100% renewable energy systems. Storage will play a very big important role in this 100% renewable energy dream. I believe it's not cheap now, but it's going to be less and less for the money year by year, as much as the technology is well propagated and known. Well, this is the references for this presentation, and those are my papers in the 100% renewable energy. The first paper is targeting the second voltage control in 100% renewable energy. Second one is targeting the idea of maximizing the renewable energy in the Egyptian grid. The third one is targeting how to achieve 100% renewable energy in marine isolated communities. The fourth one is targeting how to apply 100% renewable energy in communities in Egypt, like Eleusis University. The fifth one is targeting 100% renewable energy in agriculture farms here in Egypt, as in Sekem. They are all open access, or most of them are open access. The sixth one are targeting the emerging floating PV systems in dams like High Dam and Aswan Dam in Egypt. It's published in Process with a girl from India called Nagasina Shafin. And the fifth one is targeting how to apply load frequency control in the Egyptian power system, considering control only from the hydropower plants, assuming that there is no control from the wind and photovoltaics side. It's published in the Energy Journal. At the end, I would like to thank you very much for listening to my presentation and for hosting me in this excellent program. And I will be very happy to hear your questions. You can find my email if you want to send me anything. Thank you very much. Yes, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon.
Dr. Good Hadi, afternoon. good Yeah, afternoon. good afternoon. Good afternoon. Thank you, sir. Thank you for your valuable time and session on this concerned topic. Participants you. are most welcome for queries. Dear participants, you can even post your queries on the chat box also. Yeah. Surya Narayana Murthy, do you have any queries, sir? Yes, sir, you can stop the presentation slide over there. Yeah, sure. Yeah, thank you, sir, once again, Dr. Hadi Habib Fayad, for your presentation on advanced technology based 100% sustainable energy regions and communities. And for participant information, Dr. Hadi Habib had discussed about green technology and sustainable engineering, covering the topics relevant to engineering plan, its energy plan towards clean generation, reduction in carbon dioxide emission. He has also discussed about the main renewable energy technology generation with simulation results. It was really practical output for all the participants, sir. And he has also explained about 100% renewable energy environment structure, including power grid, which is the ongoing operation in the Upper Egypt region. Further discussion includes optimization problem as well as optimum power flow in the field of renewable energy sources. Thank you so much, Dr. Hadi. This was our second time interaction in the field of webinar information. Last time we had a webinar, and this time you are one of the keynote speakers in the faculty development program. So it was a pleasure on behalf of BIT Raipur that you have been taking out your technical concepts oriented presentations and presenting among the scholars who are available in the today's session. I once again thank all the participants also to be with us the whole session of Dr. Hadi. And hopefully, sir, we will be collaborating with your university in the future aspects. And definitely, I'm expecting your same response as usual. Sir, any few words about the program which we are organizing, sir? Any few words from your side regarding the program which we are hosting? Because 4 of the speakers are international. One was Dr. Panos, one was Dr. Emilio Gianni, one was Professor Ciano. All of you are the colleagues of yours. So, any concern? Yes, I would like to mention that I like the idea of this program. Actually, sustainable engineering is now the trend for all the people who are working in, let's say, the engineering umbrella in all its disciplines, either energy, water, mechatronics, or whatever. All the people are targeting to have the work in a sustainable green way. So I think this program is targeting different courses or different presentations related to this topic. I think it's very beneficial to all of those who will join it. I myself was very interested to be part of this excellent program, and thanks for hosting and inviting me to be part of it. And you are more than welcome, and I like working with you for any further work and any further collaboration in my personal basis or in my university basis. So thank you very much again. Thank you, sir. Participants are informed very soon the BIT Raipur will be collaborating with the Heliopolis University, Egypt, with a kind approval and a consent from Dr. Hadi Habib Fayad.
Thank you, sir. Thank you so much for your valuable presentation among the participants in this creator training program. And the next session will be starting from 2 p.m. onwards on environment issues and consequences and mitigation measures by Dr. Madhur Mohan Ranga from a former head and the Department of Environmental Science, Sarguja University, Ambikapur, Chhattisgarh. So I request all the participants to join after 1 hour, that is at 2 p.m. to listen the keynote of Dr. M.M. Ranga sir. Thank you all the participants. Thank you, Dr. Hari. Thank you, sir. Thank you. See you. See you, sir. Goodbye. Thank you. Bye-bye. ये आवाज नहीं आ रही क्या डॉक्टर खाजा? हेलो हेलो ओके मुझे 2 बजे याद करा देना एक बार। ठीक है, ठीक है। मैं ये फॉर्मेट भेज रहा हूँ आपको, तो इसी फॉर्मेट में जानकारी बनाइएगा। ये मैं आपको 1 मिनट आपको भेज देता हूँ। मेल आईडी क्या है अपना खाजा?
Hello, sir. Hello. Sir, can you hear me? Hello. Yes, sir. Ma'am, will you send a feedback once again, ma'am? Due to net Sure, sir. problem, I could not able to submit, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Hello. I will send you, Hello. sir. Hello. Yes, sir. Hello. Sir, am I Ma'am, audible? will you able to send feedback? Yes, sir. Yes, sir. Sir, please. Okay, Yes, thank you, sir. ma'am. Thank you, ma'am. Oh, okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, sir.
Sir, very good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून ख्वाजा जी। रंगा साहब नमस्कार सर, स्वागत है आपका। अरे सर तो नमस्कार 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 सर, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर। आप ज्वाइन कर लिए सर? बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। खरे सर, रंगा सर जो है सारे सेशंस अटेंड किए सर। अच्छा नहीं, रंगा साहब सिंसियर है काफी। नहीं सर, मैंने कोशिश की, आपने कहा है तो उसका तो आदेश मानना ही था खरे साहब। आदेश नहीं सर, आपका तो आशीर्वाद है सर, आदेश का। पर मैं ते सेशन सुना, मैंने कहा वो तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ज्यादा टेक्निकल था, तो मैंने कहा अब एक बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं 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 सर, अच्छा है सर। हाँ बिल्कुल। क्या बोलते हैं?
रंगा साहब अभी अंबिकापुर की राउंड पूजा मैडम, रंगा साहब पानी वेलकम डॉक्टर मधुर मोहन रंगा सर। Good afternoon. हाँ सर, I heartily मैं कह रहा था अंबिकापुर भी आ जाइए सर कभी। सर आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी भी लग रहा है अंबिकापुर में बैठा हूँ। सही बोल रहे। I heartily welcome you, sir. Today's keynote speaker of this session is Dr. Madhur Mohan Ranga, sir. Sir has served in Rajasthan Education Services as lecturer and principal for more than 33 years. He acted as principal at Government College Ajmer, Malpur and Pune. Sir remained professor at Environmental Science at St. Gahira Guru University, Ambikapur for 5 years and has also been Dean Life Sciences, Natural Resources, Law and Legal Studies and Student Welfare. He has supervised 11 PhD theses and 24 MPhil dissertations in Environmental Science. Sir is having more than 75 papers in various... अच्छा सुनो, ये सुनो बेटे, जी सर। आपका नाम क्या है जो आप एंकरिंग करती हैं? आपका नाम क्या है? सर पूजा अग्निहोत्री। कौन सी ब्रांच से हो? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैं कह रहा था आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो, तो एक काम करो कि जैसे ये जो कमरा है ना, जी सर। पहले तो इस कमरे को चेंज कर दो आप। मतलब आप दूसरी जगह में बैठना कर जो है ना, एक पूरा कमरे में इको आवाज आती है बहुत ज्यादा। आप इतना अच्छा बोलती है ना, इनॉग्रल फंक्शन में भी और अभी वैलिडेटरी भी होगा, और बाहर से जो गेस्ट आते हैं और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रही हो, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है ना। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो तो ये पूरा कमरा जो है ना इको सिस्टम से मेहरबान है। और ये हाँ, तो पूरा कमरे चेंज करके भले इस फ्लैक्स को दूसरे लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर खाजा जी जब बोलते हैं ना तो वहाँ कोई इको नहीं आता है। इसके पहले आपके जो इनॉग्रल कर रहे थे वो डॉक्टर शंकर क्या नाम था, उनकी आवाज बहुत ज्यादा इको आ रहा था। तो थोड़ा सा मेरी पर्सनल सलाह है, आप आगे बढ़िए, प्रोसीड करिए। ठीक। Sir acted as member in Board of Studies and Research Board in different universities. We heartily welcome you, sir, and we are looking forward to listen to you. And with such an eminent personality, you have given us time, your precious time. So now forwarded to you, sir, for your keynote speech. Thank you so much, sir. धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मुझे जैसा भी खरीद साहब से मैंने बात की तो मुझे लगा कि मैं शायद अंबिकापुर में ही हूँ, और अंबिकापुर की याद जो है वो कहीं जुड़ी हुई है। हमने बहुत साथ काम किया और इन्होंने हर कार्यक्रम में मेरा साथ दिया, और मैं यदि सफल रहा तो इनका इसमें कहीं न कहीं योगदान है। तो मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम तो स्वामी छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर M.K. वर्मा जी, जो कि सारे के सारे कार्यक्रम के जितनी भी अकादमिक गतियां विश्वविद्यालय में होती है, शैक्षिक गतिविधियां होती है, शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, इन सबके सूत्रधार कहीं के वर्मा साहब है, तो उनके प्रति मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के वर्मा जी, जो प्रशासनिक कार्य के साथ साथ कहीं के अकादमिक कार्य में भी अपना पाथेय प्रदान करते हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार 2 महाविद्यालय के इसमें प्राचार्य हैं, डॉक्टर R.K. खरे साहब और दूसरे टी रामाराव साहब। दोनों विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य हैं, जितनी गतिविधियां होती है उनमें सबसे निश्चित रूप से एक सूत्रधार के रूप में वह कार्य करते हैं। और मुझे पता लगा कि कुछ समय बाद भी है जो आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका भी कार्यक्रम करवाएंगे। तो दोनों सूत्रधार के प्रति मैं अपना साधुवाद व्यक्त कर रहा हूँ, अपने आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम में योजक कड़ी के रूप में कार्य करने वाले, जो कड़ी से कड़ी को जोड़ने वाले, इस कार्यक्रम के जो संयोजक है डॉक्टर मोइनुद्दीन ख्वाजा जी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अब अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। खरे साहब, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ शासन में ज्यादा हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। तो मैं संपूर्ण, जैसे कि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, और जब विद्यार्थी रहता हूँ, और मैंने भी खरे साहब के साथ कई सेमिनार अटेंड किए। जब सेमिनार हम कोई भी अटेंड करते तो मन में एक भाव होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, उसका क्या कंटेंट है, वो कितनी देर तक बोलेगा। और मुझे पता है माइंड जो हमारा मस्तिष्क है वो
कुछ देर तक तो बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रहण करता है और बाद में उसको लगता है कि आगे क्या बोलेगा। तो इसलिए मैं संपूर्ण जो मेरा व्याख्यान है उसकी एक रूपरेखा रखता हूँ। संपूर्ण जो ये आज के पर्यावरण के कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट आर मिटिगेशन मेजर्स, हम कैसे इसको ठीक कर सके। तो परिचय से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा और उसके बाद में हम सब पूरा विश्व के अंदर एक कोविड पेंडेमिक था और उस कोविड पेंडेमिक में एनवायरमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट है, उन पर असर पड़ा, दे आर अफेक्टेड। सो यदि हम उनके एनवायरमेंट के कंपोनेंट को देखें तो उनके बारे में बताऊंगा। मुख्य रूप से कुछ ही कंपोनेंट मैंने लिए। उसके बाद आज के एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो सारे के सारे बर्निंग टॉपिक है। अब चूंकि एक एक बर्निंग टॉपिक पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं और मैं तो काफी समय से ये चिंता कर रहा था कि सारे अब तक जो संभाषण हुए सारे संभाषण हाईली टेक्निकल थे। मैं तो बायोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं तो इसलिए गणित पर इतना जोर है नहीं, परंतु फिर भी मैंने जब पढ़ा तो ज्यादातर रिसर्च था या उनकी केस स्टडी थी। ये सिंपल बिल्कुल जितने मैं कहूँगा शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं उनको लगेगा कि सामान्य बात है, परंतु सामान्य के साथ साथ पर्यावरण के से यह जुड़ी हुई है। तो यदि हम अभी 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था और उसका मेन थीम था अपना जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन, टू रिस्टोर द इकोसिस्टम। Every year we celebrate the World Environment Day. We also celebrate the Earth Day. We also celebrate the Water Day. We also celebrate the ozone layer day. We also celebrate the Heritage Day. So many days we used to celebrate. The main purpose of all these days is to preserve and protect our planet. To preserve our planet और our जो पृथ्वी है इसका कहीं न कहीं इसके संदर्भ में रहता है। सो ऑल यूनाइटेड नेशंस यूज्ड टू ऑब्जर्व सो मेनी डेज और द मेन थीम रिगार्डिंग दिस डेज इज टू वी हैव टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड वी हैव टू नरिश आवर एनवायरनमेंट। सो इफ यू सी आवर दिस इकोलॉजिकल ग्लोबल सिस्टम, इकोलॉजिकल ये आपका जो ग्लोबल इकोसिस्टम में इट हैव थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हम जानते हैं हाइड्रोस्फीयर होगा, लिथोस्फीयर होगा एंड बायोस्फीयर होगा। हाइड्रोस्फीयर में कंप्लीट वाटर आ जाता है, आइदर इट इज अ फ्रेश वाटर और इट इज अ मेरीन वाटर, इट इज अ ग्राउंड वाटर, इट इज अ ग्लेशियर वाटर, ऑल टाइप ऑफ वाटर, रनिंग वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर है, ऑल वाटर इज इंक्लूडेड इन दिस हाइड्रोस्फीयर। अनदर इज अ लिथोस्फीयर, लिथो मींस नॉन लिविंग। सो लिथोस्फीयर जनरली वी इंक्लूड द अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का कोर है और इसका इंटरनल मेंटल है। So we include this, and the next is the biosphere. So my emphasis is that all these sphere, either biosphere, hydrosphere, lithosphere, they all are interconnected, and for this interconnection, there is a biogeochemical cycle. It connects the living with the non-living. So all these they are connected. So in order to preserve and protect, it is our theme. पर यदि हम हमारा दर्शन को देखें, दार्शनिक दृष्टि से देखें तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन में हर साहित्य में, हर यदि मैं कहूँ साहित्य में पर्यावरण के संरक्षण में कहा है और ये कहा गया है कि ये जो दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो प्रकृति है ये ईश्वर की कृति है और हम सब प्रकृति की कृति है। इसलिए ईश्वर की कृति और प्रकृति की कृति इन दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। ऐसा अधिष्ठाता बनाकर हमारे ईश्वर ने, जिसको भी हमें माने, उन्होंने इस पृथ्वी पर भेजा। परंतु हमने जो प्रोग्रेस है, हमने जो डेवलपमेंट है अपने अनुसार किया, और जब अपने अनुसार किया तो एनवायरनमेंट के जो 2 इंपॉर्टेंट घटक है, देयर इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट के बीच के अंदर कहीं इम्बैलेंस हुआ, असंतुलन हुआ। और जब इनके बीच में असंतुलन हो रहा तो निश्चित रूप से जो एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट के जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो एनवायरमेंट से में जो मिलता है वह सब भी प्रभावित है। तो पूरे देश के अंदर एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ कि व्हाट इज द प्रोग्रेस। अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर ऐसी लगातार प्रोग्रेस हो रही है। जब ये प्रोग्रेस हो रही है तो निश्चित रूप से कई वर्ड निकल के आते हैं, डेवलपिंग नेशंस, डेवलप नेशंस एंड द नेशंस व्हिच आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट।
तो ये शब्द बार बार निकल के आते हैं, परंतु ये प्रश्न ये उठता है कि डेवलपमेंट कैसा? डेवलपमेंट इस प्रकार का कि उसके अंदर एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट हैं वह कम से कम क्षति हो, तो ऐसा कहीं ना कहीं कंसेप्ट डेवलप होता है। और जब किसी भी देश का हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक हैप्पीनेस इंडेक्स देता है, और हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे फिनलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर फिनलैंड है, अब वहां उनकी जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट है उसको भी कंसिडर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मापदंड है। परंतु जब जैसे जैसे देश के अंदर या वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो कई प्रकार के हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं बायो का विद्यार्थी उसी संदर्भ में बताऊंगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें कई केमिकल्स को काम में लेना पड़ा, जैसे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, बायोसाइड है, जर्मिसाइड है, रोडेंटिसाइड है, इन सबको उपयोग में लेना पड़ा, और इनके यूज के कारण हमारी जो सॉइल है, सॉइल पर फर्क पड़ा। और इसीलिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर 1962 के अंदर एक किताब पब्लिश हुई, उस किताब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेचल कार्सन ने किताब पब्लिश की और कहा कि एक्सेसिव यूज ऑफ डीडीटी है, एक्सेसिव यूज ऑफ बायोसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट से इनका एक्सेसिव यूज है, एंड दिस एक्सेसिव यूज इज हैविंग a bad impact on our soil ecosystem, soil microfauna, and in the soil we know that soil provide each and everything, so the nutrient cycle of soil is also affected. So this was the first publication, and because of this in 1970 another important agency was formulated, that is Environmental Protection Agency। 1972 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता व्यक्त की, और इसी किताब के कारण डीप इकोलॉजी मूवमेंट शुरू हुआ। डीप इकोलॉजी मूवमेंट का मतलब है कि वह एनवायरमेंटल मूवमेंट जो डीप सी से शुरू होकर आपके हाई एल्टीट्यूड तक जो पहाड़ है वहां तक जाए, तो डीप इकोलॉजी मूवमेंट जो है इसके बाद शुरू हुआ, और उसके बाद ही एनवायरमेंट अवेयरनेस है, एनवायरमेंट रेगुलेशन है, इन सब के ऊपर भी वैश्विक स्तर पर ध्यान गया। 5 जून को यूनाइटेड नेशंस ने एनवायरनमेंट के संदर्भ में कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट का जुडिशियल यूज होना चाहिए, देयर शुड बी सस्टेनेबल यूज, और इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मानते हैं। 15 जून तक ये कॉन्फ्रेंस चली, और 15 जून तक जब कॉन्फ्रेंस चली तो एक और एजेंसी वहां बनी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंटल प्रोग्राम। तो पूरे ग्लोबल लेवल पर जो भी एनवायरनमेंट से कंसर्न है उसके ऊपर ऐसे यूएनईपी प्रोग्राम करता है। So this was the first book published in 1962. Then another important event which took place in California, अमेरिका के अंदर एक और हुआ, और उन्होंने सी कॉस्ट के ऊपर जो ऑयल ड्रिल करने के लिए उन्होंने कोई मैकेनिकल प्रेशर लगाया, मैकेनिकल प्रोसेस को अडॉप्ट किया। So because of this oil extraction, huge amount of ऑयल जो है वो पूरा का पूरा जो सी है उस सी के ऊपर फैल गया, और उसके अंदर वहां की जो बायोडाइवर्सिटी स्पेशली जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है दैट वाज अफेक्टेड। तो इसीलिए उसके बाद एक और कंसेप्ट हुआ कि देयर शुड बी एनवायरमेंटल रेगुलेशन। सी के अंदर बहुत सारे एनिमल है, स्पेशली 10,000 सी बर्ड वहां खत्म हो गए, ऐसे सी लॉयन खत्म हो गए, डॉल्फिन खत्म हो गए, ये सारे के सारे कुछ जो रिपोर्टेड है ये सारे एनिमल खत्म हुए। तो ग्लोबल स्तर के ऊपर एक वैश्विक स्तर पर एक प्रकार का सोच डेवलप हुआ कि इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन जरूरी है, इसलिए हम सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, ऐसा हैबिटेट बनाएं, ऐसा आवास बनाएं जिसमें बायोटा, प्लांट और एनिमल है ये सब सरवाइव करें, और मनुष्य और पर्यावरण के जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध से मेरा मतलब जो इंटर रिलेशंस है, देयर शुड बी नॉट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वी शुड हैव जुडिशियल यूज ऑफ एनवायरनमेंट। तो मनुष्य के बीच में जो अंतर संबंध है उन अंतर संबंधों की पुनरपि परिभाषा हो, पुनः उनकी व्याख्या हो, और इकोसिस्टम में हम लगातार जुडिशियल यूज करते हुए इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए। तो कुल मिला के ये एक प्रकार का कंसेप्ट है, और इसके संदर्भ में यही है कि अब हम इकोसिस्टम में हम कई बार देखते हैं कि इकोसिस्टम में कई प्रकार के जाने अनजाने में हम कई प्रकार के इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये मैंने परिचय बताने का प्रयास किया है। कुल मिला के इन नटशेल वी कैन से दैट वी हैव टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व
our ecosystem, all the component of the ecosystem. अब अगला इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइज का क्या रोल है. तो दूसरा मेरा एम्फेसिस रहेगा कि एट इंटरनेशनल लेवल व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर वर्किंग in the field, in the restoration of ecosystem and in the restoration of environmental problem. Right. वो नहीं पहली slide, first slide. Next. Next. इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कल परसों में लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब यूनाइटेड नेशंस ने कुछ पैरामीटर रखे और 2030 तक हैप्पीनेस इंडेक्स हर देश का होना चाहिए. और हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब है हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है, और बीमारियों कहीं किसी प्रकार की महामारी नहीं हो, किसी प्रकार का पेंडेमिक हो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 पॉइंट हैं, उन 17 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे हैव प्रिपेयर्ड ए ब्लूप्रिंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर. दे हैव ए ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन, फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड फॉर जुडिशियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसा इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है. तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 2030 के अंदर भी एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट जोर दिया गया. अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. लास्ट की बात है मैं शुरू करूं, इकोसिस्टम सर्विसेज. हर इकोसिस्टम हमें बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है. जैसे आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मेरीन इकोसिस्टम है, टुंडा इकोसिस्टम है, पीटलैंड इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है. छत्तीसगढ़ के अंदर जो मेन पार्ट है वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम. तो ये सारे इकोसिस्टम है, दे प्रोवाइड द सर्विसेज. इकोसिस्टम बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा सर्विस देता है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, ग्रासलैंड इकोलॉजी है, इको टूरिज्म है. इनको वी स्पीक देम एज इकोसिस्टम सर्विसेज. इसका जो हेडक्वार्टर है वो बोन जर्मनी के अंदर है. और इनके अनुसार इकोसिस्टम ये जो बायोडाइवर्सिटी पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, इन्होंने कहा कि हर वर्ष 1 मिलियन प्लांट एनिमल दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. लगातार इनका यह एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसलिए एक नियमन जरूरी है, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है. अगला तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर है जियो-6 रिपोर्ट. ये जियो-6 रिपोर्ट, ये जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये काम करता है यूएनईपी प्रोग्राम से, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. एशियन रीजन के अंदर भी जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ तो उन्होंने एशियन ब्राउन क्लाउड एक नई टर्म को कॉइन किया. तो जियो-6 रिपोर्ट जो है यह भी एनवायरमेंट के संदर्भ में काम करता है. ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक. इन्होंने कहा कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब है कि once there is a pollution and the pollution is spread in the whole area, then we speak it is a ecological degradation. तो इनका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के मेन काम है लैंड यूज में चेंज होना, क्लाइमेट चेंज होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड इन्वेजिव स्पीसीज. इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब दो स्पीसीज विच वी बोरो फ्रॉम अदर. बीच में आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर विलायती बम्बूल आया, यूकलिप्टिस आया. उस समय तो लगा कि एनवायरमेंट के लिए ठीक है, पर ये एनवायरमेंट के लिए बाद में पता लगा कि एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इनको हम कहते हैं इन्वेजिव स्पीसीज या एक्सोटिक स्पीसीज. तो ऐसी ये जियो-6 की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कहीं की काम कर रहे हैं जिसका एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम, कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट. कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट यह भी अमेरिका के अंदर है, कैरोलिना के अंदर है, और ये काम करता है IUCN के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन IUCN. ये पूरा IUCN जो देश के अंदर कहाँ से एनवायरमेंट के संदर्भ में कौन सी सेमिनार हो, कौन से सिंपोजियम हो, इनको मॉनिटर करता है. और इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, that may be economic factor, that may be social factor, that may be religious factor, or that may be environment factor. What are the factors which directly or indirectly have an impact on natural resources,
उनके संदर्भ में भी ये एक इम्पोर्टेंट काम करता है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड ए लिस्ट, जिसको आप कहते हैं रेड डिजिटल लिस्ट। Red data list, it has included the plants and animals which are at the verge of extinction, which have extinct, ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट है। उसके 7 या 8 इंपॉर्टेंट इनकी कैटेगराइजेशन है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है ग्लोबल ब्यूरो ऑफ डिजीज। देखिए कई बार हम मूव करते हैं, आप बस में भी मूव कर रहे होंगे तो कोई व्यक्ति आपके सामने बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पीता है, यू हैव टू इनहेल दैट कार्बन डाइऑक्साइड। अब कभी कभी लगता है कि उसका हमारी बॉडी पर क्या फर्क पड़ेगा, और उसका आपकी बॉडी पर फर्क पड़ता है। और इसी का कैलकुलेशन जो है ग्लोबल ब्यूरो ऑफ डिजीज करता है। एक ग्लोबल ब्यूरो ऑफ डिजीज WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और दे हैव रिपोर्टेड देयर आर 26 ग्लोबल रिस्क फैक्टर। उन्होंने कहा कि 26 ऐसे ग्लोबल रिस्क फैक्टर हैं जो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उस पर फर्क डालता है। जब आप पॉल्यूशन में एक्सपोज होते हो और बीमारियों में यदि आपके शरीर में आ जाती है तो शरीर में कई विकृति आती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट डिसेबिलिटी यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद में आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। चाहे बॉडी के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, वहां ट्रीटमेंट होगा, बट यू हैव टू एडजस्ट विथ दैट इक्विपमेंट। तो इन्होंने कैलकुलेशन किया कि यदि ये नहीं होता तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती। तो इन्होंने एक टर्म दिया डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। आप डिसेबिलिटी के साथ लाइफ कितने साल तक रह सकते हो, और उसके साथ इन्होंने कैलकुलेट किया कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी थी और कितनी आपकी ये डिजीज के कारण या और ऐसी चीजों के कारण होगी। तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। और ये जीवन की प्रत्याशा कि जीवन कितना होना चाहिए और कितना था, ये एक प्रकार का कैलकुलेशन है। ये पूरी की पूरी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये एक कंसिस्टेंट एनालिटिक फ्रेमवर्क है, कंसिस्टेंट एनालिटिक फ्रेमवर्क, जिसको आप कहते हैं कंपैरेटिव रिस्क फैक्टर असेसमेंट। बहुत सारे पैरामीटर, इन सारे रिस्क फैक्टर को ये कंसिडर करते हैं, और इट इज सिंपली ए मेजर। ये एक प्रकार का मेजर है कि बीमारी का कितना बर्डन होगा, बीमारी के बर्डन से क्या आप पर फर्क पड़ेगा। तो जब भी कब हम एनवायरमेंटल के अंदर एक्सपोज होते हैं तो इसका कैलकुलेशन होता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे इस पे फर्क पड़ता है। तो ये भी ग्लोबल ब्यूरो ऑफ डिजीज इसके संदर्भ में काम करता है। उससे पहले अभी पूरे देश के अंदर एक शब्द बहुत चला था, लॉकडाउन। लॉकडाउन के साथ आपने एक शब्द और पढ़ा होगा, ये क्वारंटीन। एक शब्द और पढ़ा होगा, वैक्सीन। एक वर्ड और पढ़ा होगा, वायरस। मुझे ध्यान है वायरस आपको ध्यान होगा, वैक्सीन भी ध्यान होगा। वैक्सीन किसी चीज को प्रिवेंट करता है, सो प्रिवेंटिव मेजर तो वैक्सीनेशन कहलाता है, और क्यूरेटिव मेजर जो क्योर करता है दैट इज इंजेक्शन। ये वर्ड बहुत आए थे। और एक वर्ड और आया था आपके क्वारंटीन। क्वारंटीन वर्ड जो है, अब इसका ओरिजिन मैं बताना चाहूंगा। क्वारंटीन वर्ड ये जब एक ब्लैक प्लेग फैला, बुबोनिक प्लेग फैला 1346 के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ दिस ब्लैक डेथ और बुबोनिक प्लेग। अब बुबोनिक प्लेग जब फैला तो उन लोगों को पता लगा कि वहां जो दैट इज बिकॉज ऑफ विसिनिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट। उन्होंने कहा कि विसिनिटी और कॉन्टेक्ट के कारण ये बीमारी फैल रही है। तो पोर्ट सिटी ऑफ इटली में जो लोग आ रहे थे उनको वही पोर्ट पर ही, शिप पर ही रोक दिया गया। और जब शिप पर रोक दिया गया तो एक वर्ड है आइसोलेशन। पर आइसोलेशन कितने समय का हो, तो उन्होंने पहले कुछ डेज किए और लास्ट में उन्होंने 40 डेज रखा। तो इटली में 40 का मतलब होता है 40 को कहते हैं क्वारंटीनो। 40 का 40 दिन को इटली में कहते हैं क्वारंटीनो। तो क्वारंटीनो से वर्ड पड़ा है क्वारंटीन। तो इस प्रकार का वर्ड ये रिक्स हुआ। मुझे भी लगा कि बार बार में ये वर्ड कैसे आया, कहाँ से आया, तो लगा कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए। एक वर्ड और खूब आया होगा, जूनेटिक। जूनेटिक का मतलब होता है वो बीमारियां पूरे, यदि हम ग्लोबल डिजीज को स्टडी करें तो ज्यादातर डिजीज जो है दे स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू मैन, उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। तो ये भी वर्ड आया था जूनोटिक डिजीज, बहुत बार इसके ओरिजिन के संबंध में बताया होगा। तो एक मैंने ये बताने का कोशिश की है। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि पूरे विश्व के अंदर ये रहा आपके लॉकडाउन।
अब लॉकडाउन के दौरान कई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। उस रिसर्च पेपर ने कुछ उनके फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस डायग्राम में तो सिर्फ इतना ही बताया कि जो एयर है, एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं उसके क्या पैरामीटर हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक पैरामीटर है उसका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, पार्टिकुलर मैटर है, ये सारे के सारे हैं। और इनकी परमिसिबल लिमिट जो इसमें दे रखी है, इंडस्ट्रियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, इन सब में दे रखी है। और एक वर्ड मैंने काम लिया, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वो होती है जो कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, इनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, जहाँ बायोस्फीयर, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी रही है। तो एक डायग्राम है जिसमें एयर क्वालिटी के बारे में भी है। यह भी डायग्राम इसमें ओजोन, अब ओजोन हम सबसे ज्यादा ओजोन लेयर है, ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन होल है, ये शब्द हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो ओजोन की भी जो लिमिट है, अब एक्चुअली क्या है कि ये जो एक्सपोजर है ये 1 आवर का भी कैलकुलेशन किया जाता है, 8 आवर का कैलकुलेशन किया जाता है, 24 आवर का भी कैलकुलेशन किया जाता है और एवरेज कैलकुलेशन भी किया जाता है। तो कहीं इस डायग्राम के अंदर भी ये एक लिमिट है जो ओजोन लेयर के बारे में बता रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अब ये तो मैंने आपको जो पैरामीटर है ये बताए थे कि ये इनसे जुड़े हुए हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका इंडेक्स क्या है। हम कैसे कह सकें कि एयर ठीक है, तो उसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कई मेथड है उसमें, कई हम पॉल्यूटेंट को कंसिडर करते हैं। जैसे 0 से 50 हम कहेंगे एयर क्वालिटी गुड है। कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, अपना जो समाचार आता है उसमें आते एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो 0 से 50 है, 51 से 100 है, ये सारे के सारे एक प्रकार के क्वालिटी इंडिकेटर, इसमें कहीं हम एवरेज लेते हैं। तो एयर को स्टडी करने के लिए हम एयर के बहुत सारे पॉल्यूटेंट को भी देखते हैं, जैसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये सारे के सारे इसके अंदर है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक पेपर कोट किया है, एल्सवियर का एक पेपर था जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्टडी किया, और दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन जो है उस पर इन्होंने स्टडी किया। इससे पहले बताना चाहूंगा कि WHO की रिपोर्ट है 2014 की, ये रिपोर्ट है नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की 2020 की, मेहनतो इटाल का ये है। इन्होंने भी दिल्ली के अलग अलग रीजन में स्टडी किया और बताया कि WHO की जो रिपोर्ट है 2014 में WHO की रिपोर्ट ने कहा कि दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, और इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स था 200 से भी ज्यादा था, पुअर था, और पुअर के बाद में सीवियर की तरफ जा रहा था, ये 900 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो WHO ने कहा। उसके बाद में नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर ये लॉकडाउन लगा। केजीएन गोस्वामी ने भी इस पर रिसर्च किया और बहुत सारे पॉल्यूटेंट को स्टडी किया और बताया कि ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसके अंदर फर्क पड़ता है। मेन फाइंडिंग्स इसके हैं मेहनतो टाल के। इन्होंने कहा दिल्ली का जो सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है एंड नदर्न रीजन है, इन सबको उन्होंने स्टडी किया और बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। आपको आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन के पहले दिन 40% एयर क्वालिटी में सुधार होता है। चौथे दिन PM पार्टिकुलर मैटर, इसके 2 मेजरमेंट है, पार्टिकुलर मैटर 10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5, ये इसका माइक्रो डायमीटर से ही जुड़ा हुआ है। तो कहा कि चौथे दिन ये पार्टिकुलर मैटर जो दिल्ली का था वह परमिसिबल लिमिट में आ गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी प्रकार दिल्ली के जो ये सारे सेंट्रल ईस्टर्न ये जो दिल्ली के रीजन थे ये भी परमिसिबल लिमिट में आ गए। इस बार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सर्वे उससे भी कहा है कि शुरू के फर्स्ट वीक के अंदर 35 से 40% जो है रिडक्शन था, इनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट था। ये दिल्ली का एक और सर्वे है। इसी प्रकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी के पूना, इन्होंने भी स्टडी किया और बताया कि पूरे देश के अंदर जो है करीब 71 सिटीज जो है जो हाईली पॉपुलेटेड है उनके अंदर भी एयर क्वालिटी जो दैट वाज इन ए परमिसिबल लिमिट, और हम कह सकते हैं कि अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स था। इसी प्रकार एक और रिसर्च है डेटा इंटेलिजेंस रिपोर्ट। डेटा इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी भारत में कहा कि ड्यूरिंग 25 मार्च से 25 अप्रैल तक 2020 तक भारत में 67 सिटीज जो 2019 के अंदर हाईली पॉल्यूटेड थे, ये सारे के सारे सिटीज है, दे कम अंडर दिस गुड और सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी कंडीशन। पंजाब को हम जानते हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इनको काम में लेते हैं।
मैं तो कई बार बीकानेर जाता हूँ, बीकानेर भी रहा हूँ, पंजाब से एक ट्रेन आती है और वो मॉर्निंग में चलती है और करीब 2 बजे बीकानेर 10 या 11 बजे बीकानेर पहुंचती है। आपको आश्चर्य होगा उस ट्रेन का नाम क्या है? ऑफिशियल नाम कुछ अलग है और दूसरा नाम उन्होंने दिया है कैंसर ट्रेन। मतलब इतना एक्सेसिव यूज इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का है कि कैंसर के जो पेशेंट हैं वो बहुत अधिक बढ़े हैं। तो एक अलग दूसरा विषय। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पंजाब का जो रूपनगर है, लुधियाना है, पटियाला है, इन सब के अंदर भी ये परमिसिबल लिमिट में आ गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसी प्रकार कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर ये सब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि ये सब परमिसिबल लिमिट के अंदर है। एक और इम्पोर्टेंट ये जो मैंने डेटा दिया है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये का ही ये डेटा है। अब इन्होंने दिल्ली को सेटिस्फैक्ट्री, पूना सेटिस्फैक्ट्री, मुंबई सेटिस्फैक्ट्री, अहमदाबाद सेटिस्फैक्ट्री, ये सारे के सारे इन्होंने बताया। और एक और इम्पोर्टेंट बताई, जो पीएम है पार्टिकल मैटर है, जो पार्टिकल मैटर है वो सबसे ज्यादा रिस्क करता है आपकी बॉडी में। यदि पार्टिकल मैटर इनहेल हो गया तो जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लंग कैंसर है या लंग फाइब्रोसिस है या एस्थमा है, एम्फिसेम है, ये सारी की सारी बीमारियां इसके द्वारा होती है। दूसरा मैंने पैरामीटर बताने की कोशिश किया, वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट चीज जो है, वाटर के अंदर भी हम या तो पीएच को देखते हैं या कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है और टोटल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, मतलब किसी भी पानी के अंदर ये दोनों तो बिल्कुल होना ही चाहिए नहीं चाहिए। तो ये पानी का एक पीएच है, पानी के से ये जुड़ा हुआ है। ये जो पहले वाला एयर क्वालिटी थी उसमें 2 चीजों को और मैं जिक्र करना चाहूंगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के संदर्भ में स्पिंजर में एक पेपर पब्लिश हुआ था हसन इटाल का, और हसन इटाल ने भी चाइना में विशेष रूप से हुआन जो सिटी है उसके अंदर उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि वहां भी कार्बन का जो इमिशन है वो 25% कम हो जाता है। इसका जो पेपर का नाम था इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एनवायरनमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये स्पिंजर में पेपर छपा था, हुसैन इटाल का था। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ कोविड, ये अंसारी एंड इटाल का था। इन्होंने भी पूरे देश के अंदर स्टडी किया और पूरे देश की स्टडी ने बताया कि मैं सिर्फ भारत का बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर जो कभी ये आपका पीएम था पार्टिकल मैटर 91 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, 91 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक, और ये आ गया आपके परमिसिबल लिमिट में 26 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रिसर्च, और भी बहुत सारी रिसर्च है तो ये उनसे जुड़ा है। दूसरा वाटर क्वालिटी इंडेक्स है, यह भी वाटर क्वालिटी इंडेक्स है। इसमें कई बार हम आप तो घरों के अंदर आप भी काम में लेते हो, वाटर फिल्टर के लिए क्या काम में लेते हैं, कई डिवाइस काम में लेते हो। कभी देखा कि उसका टीडीएस कितना है? टीडीएस भी परमिसिबल लिमिट में होना चाहिए, टीडीएस भी परमिसिबल लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड, फ्लोराइड इंपॉर्टेंट है, ये 0.6 से 1.2, इससे ज्यादा फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड कैल्शियम से जुड़ता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स है, बोन्स के ऊपर अलग चार्ज है, फ्लोराइड के ऊपर अलग चार्ज है, दोनों अलग अलग चार्ज है, दोनों जुड़ के बनाते हैं कैल्शियम फ्लोरोएप्टेट। और जब कैल्शियम फ्लोरोएप्टेट बनता है तो आपने एक बहुत बीमारी का नाम सुना होगा, फ्लोरोसिस, कहीं आपने नाम सुना होगा डेंटल फ्लोरोसिस, कहीं आपने नाम सुना होगा स्केलेटल फ्लोरोसिस, ये सारे के सारे फ्लोरोसिस है। तो ये एप्टेट आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ये फ्लोराइड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये भी पानी से जुड़े हुए सारे हैं, और इसका वाटर क्वालिटी इंडेक्स भी मैंने बता रखा है, 0 से 44 कितना होगा, 45, ये सारा का सारा एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च किया गया, तो कुछ रिसर्च पेपर में मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी होगा। तो यूपी का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उत्तराखंड का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्होंने गंगा के वाटर को, यूपी के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है गंगा के वाटर को स्टडी किया और कहा कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, एक्चुअली पानी के अंदर क्या होता है इंपॉर्टेंट, एक तो घुलित ऑक्सीजन होती है और एक होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन, बीओडी। किसी भी पानी की यदि क्वालिटी को देखना है तो हम पीएच तो देखते ही हैं, परंतु उसके अलावा बायोकेमिकल ऑक्सीजन कितना है, डीजल ऑक्सीजन कितना है। यदि डीजल ऑक्सीजन 6 या 7
mg पर लीटर है तो ठीक है, पर बीओडी जो है वो बीओडी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इट इज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, इट इज द इंडिकेटर ऑफ द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया या ई कोली बैक्टीरिया का एक प्रकार का वो इंडिकेशन है। तो ये पैरामीटर है जो पानी को बताता है, जैसे डीजल ऑक्सीजन 6.4 से 8.8 होनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है, कम है तो पानी के अंदर ही ठीक नहीं है। तो इसी तरह उत्तराखंड पॉल्यूशन बोर्ड है, इन सब ने स्टडी किया और गंगा के अंदर उन्होंने 36 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए और आपको आश्चर्य होगा 36 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। और ये कहा कि 27 जो पॉइंट है वहां जो पानी है दैट वाज इन ए परमिसिबल लिमिट, वो परमिसिबल लिमिट में था, वो स्नान करने के लिए काम में आता था। और इस गंगा रिवर के अंदर 40 मिलियन लीटर वेस्ट डेली इसके अंदर डाला जाता था जब लॉकडाउन नहीं था, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन ये कम हुआ और इसका तो बीओडी जो वेट है, बीओडी जी का जो वॉल्यूम है वह कम हुआ। और सिर्फ इस प्रकार बनारस एनटीयूसी, आईआईटी, इन सब की जो रिसर्च है वो सारे रिसर्च पेपर यही कहते हैं कि जो वाटर क्वालिटी है, इन वाटर क्वालिटी में भी कहीं जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कहीं हम कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन हमेशा होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इनका एक इम्पैक्ट है, कहीं नहीं हमें ये तो बताता है कि किस साइड पर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है जो जुड़े हुए हैं। अब ये इटली का है, वेनिस सिटी का है, दो फोटोग्राफ है, एक लॉकडाउन से पहले का है और एक लॉकडाउन के बाद का है। दोनों को हम आराम से देख सकते हैं। अब आफ्टर लॉकडाउन जो पानी की जो स्कैर्सिटी थी फ्रेश वाटर की वह ज्यादा है, पानी की जो क्वालिटी है दैट हैज इम्प्रूव्ड। और पहली बार 60 ईयर के अंदर यहाँ डॉल्फिन नजर आई। एक्चुअली डॉल्फिन जो यहाँ का हैबिटेट नहीं है, डॉल्फिन यहाँ नहीं रहता, परंतु फिर भी जब वाटर क्वालिटी बढ़ी तो दे हैव माइग्रेटेड, तो यहाँ भी पहली बार डॉल्फिन जो है उसको देखा गया। और पोल्यूशन के जो है, पोल्यूशन के कंटेंट है यहाँ कम हुए। नेक्स्ट यह भी डायग्राम, ये तो अपने भारत का ही है, यमुना रिवर का है, 5 अप्रैल 2020 का है। ये भी हम देख सकते हैं कि वाटर क्वालिटी बिफोर एंड आफ्टर, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की। अगला इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी एक वर्ड बोला था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और कहा था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये पूरे विश्व की बायोडाइवर्सिटी पर निगरानी रखता है। और इन्होंने जब पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी पर निगरानी करी तब इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई और इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की जो डाइवर्सिटी है दैट इज एट द वर्थ ऑफ एक्सटिंक्शन, देयर शुड बी मेजर्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड प्रिवेंट द बायोडाइवर्सिटी। ये डायग्राम ये बता रहा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन की ये जो उड़ीसा का जो कोस्ट है, जो टर्टल है जो आपकी रेड एडिटर लिस्ट में था, वह लिस्ट जिसकी जो उन एनिमल की लिस्ट डालते हैं जो कहीं ना कहीं उनको खतरा है, उनका लुप्त होने का की कगार पर है। परंतु ड्यूरिंग लॉकडाउन इट वाज ऑब्जर्व कि ये ईस्टर्न कोस्ट, उड़ीसा का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये इकट्ठा हुआ और इसको हम कहते हैं सी टर्टल, रिडले सी टर्टल, और इन्होंने करीब 60 मिलियन एग्स जो है यहाँ ले किए। और एग यदि वो ले करता है तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट कंडीशन सुटेबल ही रही होगी। इसी प्रकार यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबल लेवल पे इन एल्बिनिया देयर वाज इंक्रीज इन फ्लेमिंगो वहां देखा गया। गंगा का जो कोलकाता घाट है उसके अंदर डॉल्फिन को देखा गया, मुंबई के अंदर फ्लेमिंगो को देखा गया, इन सबको देखा गया। और कुछ और रिसर्च पेपर है मुझे ध्यान है, उन्होंने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन दे हैव कैलकुलेटेड द बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को कैलकुलेट किया। और बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में इतना ही कहूंगा, बायो के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पर आप लोगों की भी टेक्निकल साइड से और इतने दिनों से आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल सुना है, तो मैंने सोचा कि ये जो आपका व्याख्यान बिल्कुल बहुत ही सिंपल होना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में क्या करते हैं कि हम उसकी रिचनेस क्या है, उसकी स्पीसीज कौन कौन सी है, उनका हम कैलकुलेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड के ऊपर है। तो बायोडाइवर्सिटी पर इससे कहीं की बायोडाइवर्सिटी का भी एक पॉजिटिव साइन है। और
ये IUCN यूनाइटेड नेशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने जो रेड डेटा की जो बुक जो कैटेगरी पब्लिश की है, मुझे लगता है कि कुछ एनिमल्स जो है वो इसके बाद इस कैटेगरी की लिस्ट से वो दूसरी लिस्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट आपने नोट किया होगा, कई फोटोग्राफ ऐसे आएंगे जिसमें एनिमल जो कैप्टिविटी में थे, और चूंकि एनिमल कैप्टिविटी में थे तो दोज पर्सन्स हु आर कनेक्टेड विद द ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब का मतलब है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सेज दैट इज ए ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब का मतलब है कि दोज पर्सन हु आर रिलेटेड विद द जॉब who is concerned with the conservation of nature। अब ये इसमें जो भी व्यक्ति जुड़े होंगे, चाहे वो सुरक्षा कर्मी होगा या पर्यावरण कर्मी होगा या क्यूरेटर होगा या कोई बायोलॉजिस्ट होगा, ये सब इनको कहे, उन्होंने कहा ग्रीन जॉब्स। तो जो भी व्यक्ति ग्रीन जॉब से जुड़े हुए, जो उनको मेंटेन करते हैं, इनके केयरटेकर हैं, उनको नहीं जाना पड़ा। जब वो नहीं गए तो ये द एनिमल बिकम फ्री इन द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम में जाने लगे। और कई देशों का जो इको टूरिज्म है दैट इज अफेक्टेड। मैंने भी शुरू में कहा था इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज में एक इंपॉर्टेंट टर्म है इको टूरिज्म। वैसे तो मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहां इकोसिस्टम को, इको टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया, और मैं कहूंगा प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। आप मेन पार्ट में जाइए और आप टाइगर पॉइंट में जाइए, क्या आपने कभी वहां कोई होटल देखा है? क्या आपने वहां कोई चाय की दुकान देखी है? जो नेचर ने हमें दिया है, they are the gift of nature. Gift of nature should be in the lap of nature. नेचर ने जो गिफ्ट दिया है वो नेचर की, प्रकृति की गोद में ही रहना चाहिए। और इसीलिए आज भी छत्तीसगढ़ इतना सुंदर स्टेट है। यदि इको टूरिज्म के रूप से डेवलप किया, हो सकता है ये रेवेन्यू से जुड़ा हो। अब रेवेन्यू से जुड़ा हुआ ठीक है, कहीं के रेवेन्यू भी जरूरी है, पर आज भी उस स्टेट के अंदर ये सारा का सारा इकोसिस्टम दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड। और आपको आश्चर्य होगा, देश के अंदर छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर जो अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 86 की, उसमें 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट छत्तीसगढ़ इज हैविंग मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो इको टूरिज्म भी इफेक्ट हुआ। और नामीबिया एक ऐसा देश है जो सारा का सारा उसकी जो इकोनॉमी है दैट वाज डिपेंडेंट ऑन दिस इको टूरिज्म, वे अफेक्ट हुई। परंतु इन एनिमल को कहीं की खतरा था, आप इसके कारण इलीगल डिफॉरेस्टेशन से, इलीगल वाइल्ड लाइफ के पर जो हम उनको कैप्चर करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, अब चूंकि मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूँ और एनिमल बिहेवियर में पढ़ता हूँ, वी कैन ऑब्जर्व द एनिमल इंस्टिंक्ट इन नेचुरल कंडीशन, वी कांट ऑब्जर्व इन द कैप्टिविटी। तो जो एनिमल नेचुरल हैबिटेट के अंदर आ गए, कैप्टिविटी में नहीं रह रहे, उनकी भी कहीं ये जो स्टडी है वो एक इम्पॉर्टेंट इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बड़ा डायग्राम मैंने बनाया और बताने की कोशिश की है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपके इस पर क्या फर्क पड़ा। मैंने शुरू में बताया था कि हमारा जो सॉइल इकोसिस्टम है, देखो हमें जो कुछ भी मिल रहा है दैट इज थ्रू द सॉइल। तो सॉइल का जो इकोसिस्टम है, तो इसमें एक फिनोमिना है सॉइल इकोसिस्टम ड्रिवन फिनोमिना। सॉइल क्या करता है, आपको ध्यान होगा कि हम जितना भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती है, कार्बन इमिशन को कम करें, डेवलप नेशन सबसे ज्यादा करते हैं, डेवलपिंग नेशन पर वो जोर देते हैं, पर कार्बन इमिशन को सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका सी कर रहा है। सी जब कार्बन को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम कहते हैं ब्लू कार्बन। जितना भी आपका प्लांटेशन है, जितना भी आपका वेजिटेशन है, जितने भी आपके प्लांट है, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब करते हैं। साथ के साथ आपकी जो सॉइल है, ये सॉइल एब्जॉर्ब करती है कार्बन को, और उसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जब कार्बन को कैप्चर करता है, ये सॉइल कार्बन को रिटेन करता है। और आपको मालूम है कार्बन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, न्यूट्रिशन का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये और प्रोडक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है। तो देखा गया कि जब लॉकडाउन नहीं था तब केमिकल स्प्रेड नहीं हुआ, न तो बायोसाइट आया, न पेस्टिसाइड आया, न जर्मिसाइड आया, न कोई केमिकल आए। और जब वो केमिकल नहीं आए तो सॉइल की जो क्वालिटी बढ़ी, वाटर साइकिल हुआ,
और आपको जान के एक और अच्छा लगेगा कि सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। ते वो क्या करते हैं कि जो पोल्यूटेंट है, दे एक्ट ऑन पोल्यूटेंट एंड दे डिग्रेड दैट पोल्यूटेंट। उस पोल्यूटेंट के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं। और सॉइल का यदि हम रूट सिस्टम देखें तो रूट सिस्टम के अंदर एक सिम्बायोटिक फंक्शन है। सिम का मतलब टुगेदर, बायोटिक का मतलब जीवन, साथ जीवन। कहीं हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सिम्बायोटिक फंक्शन। जब दोनों को फायदा होता है तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक फंक्शन। तो प्लांट की जो रूट है, रूट के अंदर बहुत सारी जड़ें होती है, जड़ों का नेटवर्क होता है और नेटवर्क फंगस से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको ध्यान होगा फंगस प्लांट से कुछ प्राप्त करता है और उसके बावजूद वह फंगस प्लांट को कुछ देता है। तो प्लांट को भी कुछ मिल रहा है, फंगस को भी कुछ मिल रहा है। तो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। और जब सिम्बायोटिक रिलेशन है, अच्छा है, तो ये प्लांट की ग्रोथ है जो हम देख रहे हैं। और इससे सॉइल यदि ठीक है, कार्बन को उसने एब्जॉर्ब किया है, तो क्लाइमेट चेंज पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और जो वाटर साइकिल है उस पर इसका फर्क पड़ेगा। और इसलिए हमारे लोगों ने, पुराने लोगों ने कहा वन वर्षा और विकास। एक और इंपॉर्टेंट जो पीपीई किट, बहुत नाम सुना होगा ना, पीपीई किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो जब लॉकडाउन हुआ तो जितना भी प्लास्टिक के जो पोल्यूशन से जो चीज जुड़ी हुई थी, और आपको ध्यान है उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि हमने ऑनलाइन सेवाएं जो है वो काम में लेने लगे। सारा आपका फूड पैकेट भी ऑनलाइन आने लग गया, डिलीवरी सिस्टम ऑनलाइन होने लग गया। उसके में जो प्लास्टिक काम में आने लग गया वो थैश के रूप में, कचरे के रूप में एनवायरमेंट में फेंका गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इसका डिस्पोजल कहीं ना कहीं जरूरी है। पर एक बात बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक कचरा, ये इतना कचरा इकट्ठा हुआ है कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसे 30 गुना यदि देखा जाए वॉल्यूम में तो बड़ा है। तो ऐसा ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट डिस्पोजल होता है। अब उसके इंपॉर्टेंट डिस्पोजल से बहुत प्रकार के आपके ये गाइडलाइंस है। मैं उनको गाइडलाइंस को नहीं बताऊंगा, पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गाइडलाइंस है और एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है बायोमेडिकल वेस्ट का। इंपॉर्टेंट जो भी आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट है, आज देश में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रॉब्लम है तो डिस्पोजल ऑफ दिस बायोमेडिकल वेस्ट। और ये सब प्लास्टिक से बना रहा, आपको ध्यान है प्लास्टिक जो डिग्रेडेबल नहीं है, हजारों वर्षों तक सॉइल के अंदर रहता है। तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसका हैंडलिंग है, इसका कलेक्शन है, इसका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है। ये 5 इसके प्रोसेस हैं। अब यदि कोई व्यक्ति इन 5 प्रोसेस से गुजरता है तो नेचुरली वो एक्सपोज होगा। इसलिए ये कहा गया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है, इससे पहले एथिल अल्कोहल है या आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसका बार बार उपयोग करें। और एक इंपॉर्टेंट आने वाले टाइम पर तो मैं कहूंगा कि हमें तो वायरस के साथ जीना पड़ेगा। और जब वायरस के साथ जीना पड़ेगा तो हम हमारी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें घर में 3 बैग रखने पड़ेंगे, एक येलो बैग है, एक रेड बैग है और एक ब्लू बैग है। येलो बैग में हम हमारे हाथ पांव में कुछ लग जाती है तो जो एनाटॉमिकल वेस्ट है उसको उसमें डालना है। आप में जो सिरिंज काम में लेते हो, आप में जो मेडिकल इक्विपमेंट काम में लेते हो, उसका डिस्पोजल रेड बैग में करना है। और आपके जो ग्लासेस टूट जाते हैं उनको ब्लू बैग में करना है। तो मुझे लगता है कुछ देशों में पढ़ रहा था, कुछ देशों ने तो ये कंपल्सरी कर दिया कि घरों के अंदर इस प्रकार के 3 बैग होंगे एंड जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल वो इस प्रकार करेंगे। एक एनजीओ का बताना चाहूंगा, ओशन एशिया एक एनजीओ है। इन्होंने भी स्टडी किया और बताया कि हांगकांग का जो आइलैंड है, हांगकांग के आइलैंड में 100 मीटर स्ट्रेच तक इसके बीच पे ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, ये इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले फिर कहा था, इसने 2020 के अंदर एक रिसर्च पब्लिश की और कहा कि 5 ट्रिलियन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो प्लास्टिक बैग्स आर फ्लोटिंग इन द मेरीन के अंदर, समुद्र के जो कचरा है उसके अंदर 5 ट्रिलियन, और ये 60 to 90% ऑफ मेरीन ट्रैश है। समुद्र का जो कचरा है उसका 60 to 90% ये है। अब इससे क्या होगा, आपको ध्यान है बहुत सारे एनिमल जो पॉलिनेट करते हैं, एनिमल का पॉलिनेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जिसमें हम नाइट्रोजन को काम में लेते हैं, इनका असर पड़ेगा। ये सारा का सारा अपने
जो मेरीन इकोसिस्टम है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। ये भी वेस्ट डिस्पोजल का ही कहीं डायग्राम है। नेक्स्ट, जब ये सारे कार्गो शिप वगैरह बंद थी उस समय का एक फोटोग्राफ है कि जो भी अपने सब्जियां वगैरह थी कहीं किस प्रकार वेस्ट होगी, तो एक प्रकार का ये भी ऑर्गेनिक वेस्ट था। अब इंपॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट जो मैंने कहा, पहला जो एस्पेक्ट था अपना कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक के दौरान जो भी वाटर के जो भी कंपोनेंट थे, हालांकि सारे कंपोनेंट को मैंने टच नहीं किया, जैसे नॉइज को टच ज्यादा नहीं किया क्योंकि जब नॉइज पोल्यूशन ही नहीं था तो उसमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगले इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, यदि हम अर्थ क्लाइमेट सिस्टम को देखें तो 1850 से 19 तक, यदि हम अर्थ क्लाइमेट सिस्टम को देखें तो 1850 से 1900 तक अर्थ का जो ये टेम्परेचर है प्लेनेट का वह बढ़ा है। और इसका काम क्या है, इसका कारण क्या है? द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इज फॉसिल फ्यूल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मनुष्य के कृत्य, मानवीय कृत्य, जीवाश्म ईंधन है, इन सब के अंदर भी। और आप एक वर्ड बहुत पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? इस सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है और ट्रैप होने के बाद वो आउटर स्पेस में जाने नहीं देती, तो ये भी कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। तो अर्थ इकोसिस्टम में लगातार ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इसके लिए कारण कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में कहा गया है कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो हम देखें कि ग्लोबल लेवल पे, इफ यू कंसीडर इट इज द ग्लोबल लेवल, then so many freshwater lakes they are at the verge of extinction. ग्लोबल लेवल पर देखें तो बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर की लेक है, either they have extincted or they are at the verge of extinction. For example, बोलिविया की जो नमक की झील है वो ये करीब करीब खत्म हो गई है। अमेरिका की कोलोराडो जो लेक है वह खत्म होने के कगार पर है। चीन की प्योंग झील है ये खत्म होने के कगार पर है। और माली का जो पेगुबाइन लेक है यह खत्म होने के कगार पर है। दैट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और एक और नेचर में एक पेपर पब्लिश हुआ था। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैक्रो लेवल पर इसका फर्क है, पर इसका माइक्रो लेवल पर भी फर्क है। स्वीडन के अंदर एक नेचर के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ था और उन्होंने स्वीडन के अंदर स्टडी किया और कहा कि जो 46 जो हनी बी है, और हनी बी पता है आपको क्या करती है? हनी बी आपको पता था शहद देती है, और शहद एक ऐसा फूड है जो कंप्लीट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। मतलब शहद ही एक ऐसा फूड है जो करीब करीब पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ऐसा नहीं कि हम 1 लीटर पी जाएं, ये हमें बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो उन्होंने बताया कि जो मधुमक्खी की जो 43 स्पीसीज है विच वर वो बाद में खत्म हो जाती है, सिर्फ 11 प्रजातियां रह जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इसी प्रकार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेटा ने भी बताया है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह औसत 1.5 आगामी वर्षों में लगातार ये बढ़ता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था, ये 6 मास एक्सटिंक्शन। अब आपको ये शब्द जब पता लगेगा तो आश्चर्य होगा कि ये मैंने शब्द काम में क्यों लिया। मैंने शब्द काम में अपने मन से नहीं लिया है। ये यदि हम इसमें वर्ड मैंने लिया है 6 मास एक्सटिंक्शन। यदि हम पृथ्वी की ग्लोबल साइकिल को देखें या हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें, आपने एक मूवी देखी हुई जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में मीजोजिक एरा है उसका वर्णन था, और हमने यदि उसके साथ छेड़छाड़ करी तो उसका क्या हुआ। तो यदि हम इसके टोटल हिस्ट्री को देखें, अर्थ की हिस्ट्री को देखें, तो इसमें बार बार एक्सटिंक्शन हुआ है। अलग अलग पीरियड में एक्सटिंक्शन हुआ है, जैसे सिलोरियन पीरियड, चूंकि साइंटिफिक वर्ड है इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। अलग अलग पीरियड के अंदर पृथ्वी पे एक्सटिंक्शन हुआ है। और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, आगे जो मैं फैक्टर बता रहा हूं वो फैक्टर के कारण वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कहीं अब जब इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज है, एनवायरमेंट में कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, हमारा जो ये ट्री लाइन है, ट्री लाइन चेंज हो रहा है। ट्री लाइन चेंज होने का मतलब है, ट्री लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि हमने कोई प्लांटेशन किया। अब आपको पता है प्लांटेशन आपने किया और उस प्लांटेशन में यदि आप देखो तो कोई पहाड़ी है, पहाड़ी के कम टेम्परेचर होगा, नीचे फिर और टेम्परेचर में चेंज होगा, और उसके बाद फिर टेम्परेचर में चेंज होगा। तो वहां जो प्लांट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो प्लांट वहां से शिफ्ट हो रहे हैं, वहां से दूसरी जगह जा रहे हैं,
तो हम कहते हैं कि चेंज इन ट्री लाइन। तो ट्री लाइन चेंज हो रहा है, और जब ट्री लाइन चेंज हो रहा है तो आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। मरुस्थल को रोकने का सबसे बड़ा जो है वो प्लांटेशन है। तो ये कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण, एस्टेरॉइड मूवमेंट के कारण, एस्टेरॉइड का इंपैक्ट कारण, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण कहीं मास एक्सटेंशन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बताता है कि हमारा जो ग्लोब है इसके अंदर ट्रिपिंग एलिमेंट है, ट्रिपिंग चेंज हो रहा है। ऐसे चेंज जो एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के बाद यदि वो चेंज हुआ तो कम चेंज भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के बाद यदि कोई चेंज होता है, वो कम चेंज भी ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो कुछ बताना चाहूंगा। अभी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, ये रिपोर्ट है 14 सितंबर 2021 की, और कहा कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 0.89 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। ये रिपोर्ट है। उसके बाद का ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर हुआ। अब बुश फायर आग लगना है। इसमें अफ्रीका के अंदर लॉकस्ट जो है इनकी बहुत अधिक संख्या बढ़ गई। एशिया के जो देश है वहां जो क्रॉप है वह खत्म हो गया। और एंटार्क्टिका का जो आइस है, देखो पहली बार किसी ने रिपोर्ट किया कि एंटार्क्टिका का जो आइस है इसमें पहली बार माइक्रो प्लास्टिक देखा गया। माइक्रो प्लास्टिक हम कभी कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स काम में लेते हैं। कॉस्मेटिक्स भी माइक्रो बैड होते हैं। माइक्रो बैड भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं। तो एंटार्क्टिका रीजन के अंदर पहला बार माइक्रो प्लास्टिक जो है ये इसके अंदर पहली बार मिला। एंटार्क्टिका के अंदर एक हीट वेव जो है वह स्टार्ट हुई। और इसी प्रकार जो ग्रीन आइसलैंड है, इसका आइस शीट है, ये मेल्टिंग होने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो भी हम कृत्य कर रहे हैं, जो भी हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं, उन सबको कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उसको अवशोषित कर रहा है, ये आपके फॉरेस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका, ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, यह भी डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहा है। चाइना के अंदर सबसे भयंकर फ्लड आया। कनाडा के अंदर जो है ये यहाँ जो जितने भी पार्क वगैरह है इनके अंदर भी एपिडेमिक, दो प्रकार की डिजीज होती है। एक एंडेमिक होती है जो कुछ ही एरिया के लिए होती है, और एक एपिडेमिक होती है जो पूरी एरिया में फैल जाती है। तो यहाँ भी देखा गया कि बहुत सारी एपिडेमिक हुई, एंडेमिक हुई, फिर वो एपिडेमिक हो गई, कुछ स्थान पर आई और फिर पूरे दूसरे स्थान पर फैल गई। और वाइल्ड लाइफ जो है वो 85% जो है वाइल्ड लाइफ खत्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कहीं ये एक क्लासिफिकेशन है ट्रिपिंग पॉइंट के संदर्भ में, कॉपन क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द ट्रिपिंग पॉइंट। ट्रिपिंग पॉइंट उन्होंने बताया कि हमारा जो अभी ग्लोब है ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पर है। अब उस थ्रेशोल्ड के बाद कोई भी चेंज होगा तो वो हमारा जो है ग्लोब का जो पूरा साइकिल है वो चेंज होगा। अभी आपने कुछ तूफान के नाम भी सुने होंगे, टाउटा तूफान का नाम सुना होगा, ये सारे के सारे एक इम्पोर्टेंट आपने इसके अंदर सुने होंगे। तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ही है। फिर एक वर्ड और मैंने इसमें कहा, मैंने एशियन ब्राउन क्लाउड, जैसे मैंने कहा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ओरिएंटल रीजन में। ओरिएंटल रीजन में भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब आ जाते हैं। और इन्होंने कहा कि इस ओरिएंटल रीजन में देयर इज लेयर ऑफ एयर पोल्यूशन। हम फॉसिल फ्यूल को काम में रहते हैं, बायोमास का बर्निंग हो रहा है, इसके कारण हमारा जो ओरिएंटल रीजन है इसमें क्लाउड देखा गया और उसको कहा एशियन ब्राउन क्लाउड। और कहा गया कि इसके अंदर ब्लैक कार्बन है। ब्लैक कार्बन का मतलब है वह कार्बन जो कंपेट उसमें कंबशन नहीं है, वो कम जला हुआ है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। तो कहा ये ब्लैक कार्बन वहां इकट्ठा हो जाता है, इसमें डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, इसके अंदर PM 2.5 इकट्ठा हो जाता है। अब आपको पता है PM 2.5 यदि इकट्ठा होगा तो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी कर सकता है। तो अब ये जो एशियन ब्राउन क्लाउड है ये हमारा कई बार हम देखते हैं मौसम में चेंज होता है, फिनोलॉजी इसको हम कहते हैं, मौसम में चेंज होता है। हम कहते हैं कहीं एक्सेस अधिक वर्षा हो गई, अकाल पड़ गया, तो ये जो वाटर साइकिल है इस वाटर साइकिल पर भी ये प्रभाव डाल रहा है। और ये एनवायरनमेंट के आने वाले जो रेडिएशन हैं
उस रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये फिर एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह जिम्मेदार है। तो इसको हम कहते हैं एशियन ब्राउन क्लाउड। दूसरा ओशन हीट कंटेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ओशन हीट कंटेंट ये ग्लोबल वार्मिंग का एक इंडिकेशन है। ओशन हीट कंटेंट इज ए वार्मिंग ऑफ ए ग्लोबल वार्मिंग का एक संकेत है। और समुद्र के द्वारा, जैसे मैंने कहा आपका जो समुद्र है या हमारा जो है वो बहुत ज्यादा अवशोषित करता है इनको, कार्बन को। तो समुद्र के द्वारा जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको आप आंतरिक ऊर्जा भी कह सकते हो, तापी धारिता भी कह सकते हो और एंथैल्पी भी कह सकते हो। ये उसको ऑब्जर्व करती है और जब ये उसको ऑब्जर्व करता है तो सी लेवल में परिवर्तन होता है और एक्सेस 90% एनर्जी जो है वो सी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो समुद्र का कोई तो लिमिट होगा कब तक वो आपकी ये उत्सर्जन के द्वारा जो ऊर्जा निकली उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इंटरनेशनल डेटा है जो ओशन हीट कंटेंट को बताते हैं। इंटरनेशनल डेटा ऑन ओशन हीट कंटेंट ये बताते हैं कि 2019 के अंदर 0 से 2000 मीटर गहराई तक समुद्र के अंदर हीट कंटेंट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया और यदि यही रहा तो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे इफेक्ट होंगे। इसी प्रकार इन्होंने कहा है, इंटरनेशनल डेटा सेट इन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में, इन 60 इयर्स 700 से 2000 मीटर समुद्री गहराई तक हीट इकट्ठा होता है और जब हीट इकट्ठा होता है तो मेरीन हीट वेव का अनुभव किया जाता है और मेरीन हीट वेव जब हम अनुभव करते हैं तो आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट है, सी पर इफेक्ट है, मोर्टिलिटी पर इफेक्ट है और एक फिश का नाम सुना होगा आपने, स्टार फिश, उसके अंदर वेस्टिक बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी है। तो ओशन हीट कंटेंट से ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रियल टाइम डेटा है, ये भी कह रहा है, नेचर के अंदर भी ये पेपर पब्लिश हुआ था, ये ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी कहता है कि 2018 में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन जो 2018 में 311 ppm हो गया नाइट्रोजन जो है, जबकि बहुत ज्यादा है और 20% जंप है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग से ये सारे चीजें जुड़ी हुई है। फिर एक इसमें मैंने कुछ साइक्लोन का नाम दे रखा है, कब कब भारत के अंदर हुए ये सारे के सारे साइक्लोन। अभी एक बहुत ज्यादा चर्चित साइक्लोन था टाउटे का नाम जो है वो एक लिजार्ड के द्वारा दिया गया। एक लिजार्ड है, गैको जिसका नाम है, GEC को, ये बहुत ज्यादा आवाज करती है तो इसका नाम है हाईली वोकल लिजार्ड। तो हाईली वोकल लिजार्ड के नाम से इसको दिया गया है। जैसे एनिमल, कोई भी एनिमल होता है वो पहले तो शांत बैठा रहता है और जैसे इसको प्रे मिलता है वो उस पर अटैक कर देता है। तो ऐसा ये है, साइक्लोन भी एकदम चुपचाप था और एकदम इन्होंने अटैक किया, न जाने कितनी क्षति हुई। और ये सारा का सारा चक्रवाती तूफान जो है ये आपके अरब सागर से इकट्ठा हो रहा है। नेचर के अंदर एक और पेपर पब्लिश हुआ था और उनका कि जनवरी से अक्टूबर 2020 में उन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर है वो 1.2 सेल्सियस बढ़ा। दूसरी तरफ ये इसी पेपर में लिखा है कि जिस ड्यूरेशन में ये बढ़ा वह आपका जो इक्वेटोरियल रीजन था उसका कूलिंग पीरियड था। उस समय लाल नीनो था, लाल नीनो इसका कूलिंग पीरियड कहता है कि एक तरफ तो कूलिंग पीरियड था और दूसरी तरफ वहां का टेम्परेचर कहीं बढ़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो ये बताते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट इसमें O3 डिप्लीशन, ओजोन लेयर आपने सबने सुना होगा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि हम जिस स्फीयर में रहते हैं वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर है। यदि हम एटमॉस्फेयर को देखें तो ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है और एक्सोस्फीयर है। ये सारे के सारे जो है एक्चुअली आपका जो ओजोन है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या करता है कि जो यूवी रेडिएशन आ रही है, क्वेश्चन तो नहीं है, ओजोन लेयर जो है वो 15 से 30 किलोमीटर तक ऊपर है। ये क्या करती है कि जो यूवी रेडिएशन आ रहे हैं उन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। तो आपको पता है यूवी रेडिएशन जो पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी पर यदि जो वो आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसको के लिए वो जिम्मेदार है। अब आपने एक तरफ तो हम ग्रीन हाउस गैसेज दे रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज में वाटर वेपर भी है, मीथेन भी है, O3 भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और फ्लोरिनेटेड गैसेज भी है। ये सारे के सारे हम काम में ले रहे हैं, फ्रिज के अंदर है और न जाने हम कितने ये डनलप के गद्दे काम में ले रहे हैं, इन सब के अंदर भी है।
कॉस्मेटिक्स है, यह भी है। तो ये सारे के सारे जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार है। एक पेपर को मैं कोट करना चाहूंगा, नीदरलैंड का एक पेपर पब्लिश हुआ है और वो पेपर है इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन ऑन स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लीशन, ऑक्सीजन O3 डिप्लीशन। एक नीदरलैंड का पेपर है इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन ऑन स्ट्रेटोस्फेरिक O3 डिप्लीशन। इन्होंने कहा कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के जो कंपाउंड है, जो मीथाइल क्लोरोफॉर्म है, मेथिल ब्रोमाइन है, ये सारे के सारे, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारे के सारे ओजोन 3 के लिए के डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। और इसने कहा कि जो मीथेन है, मीथेन इमिशन इतना बढ़ गया है कि यदि हम तुलना करें 1980 से 2000 तक की, तो ये O3 का डिप्लीशन है 1.4% पर डिके हो रहा है, पर डिकेड के अंदर ही 1.4 हो रहा है। तो एक डिकेड के अंदर 1.4 ये O3 का डिप्लीशन हो रहा है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग पोजीशन तो हमें बताता ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ये माइक्रो क्लाइमेट से भी जुड़ा हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो ग्लोबल इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, मैंने इनको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड हम बहुत पढ़ते हैं, एसिड रेन है, एसिड रेन है, बहुत पढ़ते हैं। और आपको मालूम होगा कि जब आप छोटे होंगे, छोटे थे तब, और जब छोटे थे तब वर्षा में स्नान करते होंगे, और जब वर्षा में स्नान करते होंगे तो माता पिता कहते होंगे कि पहली वर्षा में स्नान मत करो। अब लगता है कि पहले के लोग कहीं वैज्ञानिक तो नहीं थे, या वैज्ञानिक थे। एसिड रेन का मतलब है कि बिजली के चमकने से वोल्केनिक इरप्शन के लिए टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो और इंडस्ट्रियल यूनिट के कारण, रिफाइनरीज के कारण जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो निकलते हैं, जो सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, एंड दे कंबाइंड विद द वाटर एंड दे फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक एसिड ये बनाते हैं। तो ये जब पृथ्वी पर आता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सॉइल पर ज्यादा फर्क पड़ता है। अब जब एसिड रेन हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हमने मूल्यांकन कर लिया कि वो देश उतना ही विकसित है। पर सबसे ज्यादा ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन के कारण लो पीएच होगा, लो पीएच होगा तो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी सरफेस वाटर के अंदर, तो बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे फिशेज है, उन पर ये उस पर फर्क डालेगा। और अमेरिका के अंदर एक पेपर पब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक पेपर पब्लिश किया कि ये एसिड रेन के कारण 75% लेक जो अमेरिका की है वो एसिडिफिकेशन की तरफ जा रही है। 50% लेक तो एसिडिफिकेशन हो चुका है और बाकी दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस एसिडिफिकेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैंने भी बाहर में जिक्र किया था, जब एक प्लांट का डायग्राम मैंने आपको बताया था कितना सुंदर वो प्लांट दिख रहा है, तो इसका सॉइल पर फर्क पड़ रहा है। सॉइल हमें सब कुछ दे रहा है, न्यूट्रिएंट भी दे रहा है, ऊर्जा भी दे रहा है। तो सॉइल के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो एसिड होगा तो माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे, और जब वो डीनेचर हो जाएंगे तो लीचिंग होगा, लीचिंग ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इसका लीचिंग होगा। और एसिड रेन के अंदर हाइड्रोनियम आयन होता है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, टॉक्सिक को मोबिलाइज करता है। तो एक तरफ तो आपका सॉइल जो है टॉक्सिक को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने कहा आपके सॉइल के अंदर ऐसे कई माइक्रोब्स होते हैं जो आपके टॉक्सिक को खुद इकट्ठा कर लेते हैं। पर जब एसिड रेन होगा तो एसिड रेन इनको मोबिलाइज करेगा और वो टॉक्सिन इकट्ठे हो जाएंगे, और ये आपका जो ब्लीचिंग है, न्यूट्रिएंट का जो ब्लीचिंग है, मिनरल का ब्लीचिंग है, वह नहीं होगा। और कई आप देखते हो जब ज्यादा एसिड रेन हो जाती है तो आपके लीफ को ऑब्जर्व कर सकते हो। लीफ जो है उसके ऊपर एक छोटी सी कोटिंग होती है, वह कोटिंग टूट जाती है, और जब कोटिंग टूट जाती है तो ज्यादा इवोपरेशन होगा, और ज्यादा इवोपरेशन होगा तो वो उस पर फर्क पड़ेगा। और जो इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, हम सबको पता है कि नेचर की जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को एब्जॉर्ब करके, सिंगल कार्बन को एब्जॉर्ब कर वो C6 कार्बन बनाता है, और C6 कार्बन हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो ये प्रोसेस हमारे
सेल के अंदर हो रहा है, हमारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो ये एसिड रेन है वो क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोफिल को, उसका मैग्ना को, उसके दूसरे इंटरनल ऑर्गेनेल है उनको, उन पर फर्क डालेगा। इसी प्रकार जर्मनी, पोलैंड, चेक और का जो एरिया है, इसके अंदर एक एरिया है जिसको नाम दिया ब्लैक ट्रायंगल इन यूरोप, ब्लैक ट्रायंगल इन यूरोप, और कहा कि यहाँ एसिड के कारण, एसिड रेन के कारण सबसे ज्यादा यहाँ की जो वेजिटेशन है उस पर फर्क पड़ा है। और आपको पता है कि हमें सी फूड मिलता है, हमें फ्रेश वाटर फूड मिलता है, तो इसको इन्होंने कहा कि ब्लैक ट्रायंगल इन यूरोप और सबसे ज्यादा एसिड रेन के कारण ही। और इसी प्रकार कहीं एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है। अभी आपने साइक्लोन का नाम सुना होगा, जब साइक्लोन नाम आया तो आपने मैनग्रूव का नाम सुना होगा। हम यदि कोस्टल एरिया में आप लोग गए होंगे तो वहां मैनग्रूव होते हैं, एक ऐसे प्लांट जिसको अपन कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट प्लांट जो है वो वहां कोस्टल एरिया पर होते हैं। ये हेलोफाइट प्लांट क्या करते हैं कि ये दिस इज अ नेचुरल सपोर्ट सिस्टम which is the gift of nature। ये नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है जो हमें नेचर ने दिया है। तो जितने भी ये समुद्र के अंदर जितने भी तूफान आते हैं इन सबको ये रोकता है। तो ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो मैनग्रूव पर फर्क पड़ेगा, और जब एसिडिफिकेशन होगा तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। और आपको पता है नाइट्रोजन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, और ज्यादा नाइट्रोजन यदि है तो वो यूट्रोफिकेशन होता है। यू मीन्स मोर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिएंट, बायोमेक्ट्रम आता है यूट्रोफिकेशन, यू मीन्स मोर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिएंट। तो एसिड ज्यादा होगा, एसिड क्या करेगा, ये नाइट्रोजन का और एसिमिलेशन करेगा और यूट्रोफिकेशन होगा। फिर हम फॉसिल फ्यूल को भी देखते हैं, फॉसिल फ्यूल पर भी एसिड रेन का एक एस्पेक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट जो एसिड रेन से जुड़ा है। दूसरा मैंने एसिड और एसिडिफिकेशन का तो मैंने इसमें बता ही चुका हूँ। और एक और रिपोर्ट कहती है कि एसिड, ये जो सी है इसका ये जो पीएच था पिछले डिकेड में 8.25 से 8.14 हो गया, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एसिडिफिकेशन। ये डेटा है ग्लोबल ओशन डेटा एनालिसिस ने ये बताया। और कहा कि जो कंटिनेंटल शेल्फ है, हर देश का समुद्र का एक रीजन होता है, वो 15-20 किलोमीटर होता है, जहां आप देखते हो बार बार समुद्र का जो पानी आ रहा है और वो चट्टानों से टकरा रहा है वापस चला जाता है। तो वह एरिया जो उसके विसिनिटी में है उसको हम कहते हैं कंटिनेंटल शेल्फ। तो कंटिनेंटल शेल्फ सबसे प्रोडक्टिव एरिया है, फिश का प्रोडक्शन होगा, मॉलस्क का प्रोडक्शन होगा। तो जो कंटिनेंटल शेल्फ है इसके अंदर भी जितने मॉलस्क हैं, मॉलस्क भी एक इंपॉर्टेंट फूड है, सी फूड है। तो कंटिनेंटल शेल्फ में ओशन एसिडिफिकेशन के कारण इन जो मेरीन बायोटा है इस पर फर्क पड़ेगा। फिर कोरल ब्लीचिंग। कोरल आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर जैसे एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है, वैसे के वैसे पूरा एक नेटवर्क है कोरल का। कोरल एक एनिमल है जो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक एक्सोस्केलेटन बनाता है, अंत कंकाल बनाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक नेटवर्क बन जाता है सी के ये पेरिफेरी में, कोस्टल रीजन में। और आपके जितने भी आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, जो भी ओशन हीट वेव आती है उसको एक कंट्रोल करता है। उसको हम कहते हैं कोरल रीफ। आपने सुनामी का भी नाम सुना, आपने हरिकेन का भी नाम सुना होगा, ये सब नाम सुनोगे। अब लगातार क्या हो रहा है कि जब एसिडिफिकेशन हो रहा है तो आपको पता है कि ये कोरल कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड क्रिया करेगा तो क्या होगा हम जान सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पे फर्क डालेगा। और एक इंपॉर्टेंट है, मैंने एक शब्द बोला था अभी कि प्लांट के अंदर जो रूट है, रूट के अंदर भी फंगस होता है और प्लांट है, वह सिम्बायोटिक फंक्शन है। सिम का मतलब साथ, बायोटिक का मतलब रहना। ऐसा ही ये कोरल है, कोरल के अंदर भी एक एल्गी होती है, और एल्गी ज़ूज़ैंथेला एक एल्गी है। अब एल्गी तो उसको भोजन देती है, ये एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, ये सिम्बायोटिक फंक्शन करती है, और कोरल उसको सपोर्ट देता है। तो यह कोरल का जब ब्लीचिंग होगा तो ये एल्गी खत्म हो जाएगी, और जब एल्गी खत्म हो जाएगी तो आपका कोरल खत्म होगा, कोरल खत्म होगा तो आपके कोरल रीफ खत्म होगी, और कोरल रीफ यदि खत्म होगा तो जैसे मैनग्रूव खत्म होगा, वैसे ही एक प्रकार का जो आपका नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है
यह इस पर फर्क पड़ेगा। ये ओशन एसिडिफिकेशन के अंदर एक प्रोग्राम चला रखा है और उन्होंने कहा कि यदि इसी प्रकार ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता रहा तो 2100 में जो आपका जो ओशन है ये कहीं एसिडिफिकेशन की तरफ तो नहीं चला जाए। अगला इंपॉर्टेंट डिफॉरेस्टेशन। अभी मैंने एक वर्ड काम में लिया था, देयर इज चेंज इन ट्री लाइन। ये सारे बायोलॉजी के वर्ड है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल में, जब मैं ये तैयार कर रहा था तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि आप तो सब हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। सारे के सारे सेमिनार जितने भी हुए मैंने सारे सुने, बहुत हाईटेक से जुड़े हुए थे। मैंने कहा एक कहीं न कहीं ये कैसा होगा वो मुझे पता नहीं, परंतु फिर भी कोशिश की कि एक सामान्य ज्ञान के संदर्भ में इन बातों को बताना चाहूं, क्योंकि आपका मेन थीम है ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम जब काम करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब काम करेंगे, जब एनवायरमेंट के इश्यूज जो है उनका थोड़ा बहुत कहीं संज्ञान हो। तो अगला डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टैंडिंग फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट खड़ा है उसका एकदम अकस्मात कैटास्ट्रोफिक इवेंट, एनवायरमेंट में जो इवेंट होती है उसको अपन कहते हैं कैटास्ट्रोफिक इवेंट, तो एकदम उसका खत्म होना कहलाता है कैटास्ट्रोफिक इवेंट। तो लगातार डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन का मतलब जब आप कई बार देखते हो, आपने यदि बीकानेर की कोई मूवी देखी होगी तो बीकानेर की मूवी में देखा होगा कि वहाँ सैंड ड्यूज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं हवा के कारण, उसका हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और ये सॉइल इरोजन जो है ये हमारे देश की तरफ बढ़ रहा है। भारत का जो रीजन है हमारे करीब 7 सेंसिटिव जोन है, और सेंसिटिव जोन में ये डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और ये भी कहीं चिंता की बात है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ये डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। और हमें पता है करीब 70% एनिमल और प्लांट जो है दे रिजाइड इन द विसिनिटी ऑफ नेचर। नेचर की प्रकृति में, नेचर की गोद में 70% से अधिक एनिमल्स रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ के अंदर, गांव के अंदर अब तो है नहीं, गांव के अंदर जाते हैं तो आप जैसे गांव में प्रवेश करोगे वहां आपके बड़ का पेड़ होगा। बड़ के पेड़ के अंदर दिन भर वहां जो कार्यक्रम होता है वो होते हैं और लोग वहां बैठे रहते हैं। इसका जो ऊपर का कवर है इसको हम कहते हैं कैनोपी। ये कैनोपी प्रोवाइड करता है वहां की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। मान लो 10-15 पेड़ है, 10-15 पेड़ का जो ये जो एरिया ऊपर का एरिया जिसको हम कैनोपी कहते हैं ये बहुत अधिक है। आप आपके घर में भी देख सकते हो, आपके घर के सामने में कोई गार्डन है या आपके घर के अंदर आपने सोशल फॉरेस्ट्री कर रखी है तो आपका आगे का कमरे का टेम्परेचर बहुत कम होगा पीछे की टेम्परेचर की तुलना में। तो ये जो कैनोपी प्रोवाइड कर रहा है, और ये कैनोपी क्या है, आपके वाटर को रेगुलेशन कर रहा है। और एक सर्वे कह रहा है कि हम इतना डेजर्टिफिकेशन हो रहा है कि हर मिनट के अंदर एक फुटबॉल फील्ड के बराबर फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। और यदि यही रहा तो 2030 तक पृथ्वी पर 10% फॉरेस्ट भी नहीं रहेगा। प्लास्टिक पोल्यूशन के संदर्भ में मैं कुछ तो बता चुका हूं, और करीब प्लास्टिक आज डेली यूज बन गया। मैं तो एक्चुअली क्या, आई बिलोंग्स टू ए ट्रेडिशनल फैमिली। आपने देखा होगा घर के अंदर दादी या नानी आपके यदि पुराने वो कागज इकट्ठे हो जाते थे तो उनको पानी में भिगो के कुछ बना देती थी, वो इको फ्रेंडली होता था। आज हम वही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बायोप्लास्टिक को काम में लें। बायोप्लास्टिक जो रिन्यूएबल है उसके अंदर या तो कॉर्न का हो सकता है, या पोटैटो का हो सकता है, व्हीट का हो सकता है, शुगर केन का हो सकता है। ये सारे क्या सारे हम बायोप्लास्टिक को काम में ले। पर अभी तक जो मैंने एक प्लांट भी है टापिया प्लांट, इसका भी हम बायोप्लास्टिक के रूप में काम में लेते हैं। ये U4BC फैमिली का होता है, इस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जैसे रतन जोत है जो बायोफ्यूल के रूप में काम में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है। कहने का मतलब है बायोप्लास्टिक का हम यूज करें। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आज के इस युग में प्लास्टिक का उपयोग पूरा तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, परंतु फिर भी जो स्टार्च ब्लेंडेड प्लास्टिक है, जो सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक है, जो पॉलीलैक्टिक एसिड बेस्ड प्लास्टिक है, इनको कहीं काम मिले। इनका डिग्रेडेशन कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल नहीं है, परंतु इनका डिग्रेडेशन होता है क्योंकि कुछ एंजाइम के द्वारा और कुछ ऐसे केमिकल के द्वारा इनका हम बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं। नेचर के अंदर ने वार्न किया है, एक पेपर पब्लिश हुआ है कि 2040 में 90 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर
प्लास्टिक का होगा, और यदि ये रहा तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। एक रिसर्च पेपर को बता के अपनी बात को मैं इससे संबंधित खत्म करूंगा। गौथे यूसरी जर्मनी में, हम प्लास्टिक में पानी को काम में ले रहे हैं, तो ये गौथे यूसरी जर्मनी में थी, इन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक बॉटल है इसके अंदर बिस्फिनोल काम में आता है, और बिस्फिनोल जो है ये एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड बनाता है, और एस्ट्रोजन एक प्रकार हार्मोन है। तो क्या दिस एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके लिए जिम्मेदार है। एंड डायोक्सिन नामक एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड भी बनाता है जो उसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपने शब्द खूब पढ़ा होगा। आर्कटिक के ऊपर हम कहें कि सबसे बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस यही है, और यदि हम सी लेवल को देखें तो सी लेवल लगातार जो है वह बढ़ रहा है, और सी लेवल को देखें तो ये 3.2 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रहा है, 2.3 मिलीमीटर पर बढ़ रहा है। और आपको मालूम है यदि सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हम सोच सकते हैं जो कोस्टल के शहर है उन पर क्या फर्क पड़ेगा। और कहा है कि आगने वाले इस टाइम में 0.2 से 2 मिलीमीटर जो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सारे के सारे डेटा जो है ये सैटेलाइट डेटा यह बताते हैं। और इसी प्रकार यदि ये मेल्टिंग ऑफ आइस होता रहा तो समुद्र का जो तल है 6 मीटर बढ़ जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बायोडाइवर्सिटी पे सारा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका हो रहा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हम ये फूड बहुत काम में लेते हैं। और आपने एक बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। बीटी एक बॉटनिकल नेम है, एक प्लांट है जिसका नाम सुना होगा आपने, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या कि हमें यदि कपास का उत्पादन करना है तो कपास का उत्पादन में सबसे ज्यादा उस पर पैथोजन एक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा उसके ऊपर पैथोजन एक्ट करते हैं। तो एक जीन को निकाला गया और उस जीन को उसमें डाल दिया गया, एक पेस्ट से एक जीन को निकाला और किस में डाल दिया, ये कपास उत्पादन करने वाले प्लांट में। और ये देखा गया कि उस जीन को जब उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उस पर बीमारी नहीं फैलती। तो इसको हम कहते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। हम उस प्लांट का जीन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे आप तो सब अभियंता है, आप तो सारे का सारा स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, जो आपका मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो, और आप अपने हिसाब से आपके मैप के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो हमारा जीन जो है उस जीन को भी ये मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये बीटी कॉटन था, पर बीटी कॉटन जो है ये उस टॉक्सिक इफेक्ट तो उस पर कम हुआ, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा, परंतु इसने क्या इम्पैक्ट डाला, सॉइल के ऊपर इम्पैक्ट डाला। तो इसीलिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है जैसे कॉर्न है, अल्फा है, शुगर बीट है, ये सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। और इनको हमने तैयार किया कि ये खरपतवार के प्रति संवेदी हैं, खरपतवार इस पर अफेक्ट नहीं करेगी। आप देखते हो ये एक अमेरिका से जब अमेरिका ने दान में हमें भोजन दिया तो उसमें PL48 के साथ न जाने कितनी खरपतवार दे दी, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास जो एक प्रकार का हर्बिसाइड है, ये हर्बल है, ये खरपतवार है। तो ये खरपतवार के प्रति ये रेजिस्टेंस होंगे, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है, जैसा मैंने कहा, सॉइल पर असर डाल रहा है, और सॉइल पर असर डाल रहा है तो ये क्या कर रहा है, सुपर वीड तैयार कर रहा है, एक ऐसी खरपतवार जो नेचुरल प्रोडक्ट ना होके बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड देयर इज ए सुपर वीड बन गया है, सुपर पेस्ट बन गया है। ऐसा पेस्ट, ऐसा जर्म जो प्लांट के ऊपर फिर अटैक करे। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से ये जुड़ा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट शब्दावली इसमें काम आती है, RDNA टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आज जो डायबिटीज है, डायबिटीज पर भी बहुत काम हो रहा है। और डायबिटीज जिस जीन के कारण हो रही है
उस जीन को हम रिप्लेस कर दें उस व्यक्ति में, तो उसका इंसुलिन बनने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा मैं कह रहा हूं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं पर नेगेटिव को भी नकार नहीं सकते। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का इसी प्रकार ये इकोसिस्टम, अब मैं जो बता रहा था कि जो सॉइल का इकोसिस्टम है, उस सॉइल इकोसिस्टम के अंदर ये क्या करता है आपको आश्चर्य होगा। मैं भी आपको बताऊं, जब ये मैंने पेपर पढ़ा तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया है, सॉइल के अंदर प्रोटोजो है, सॉइल के अंदर माइक्रो और एनिमल एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, बायो रेमेडिएशन करते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, बट दे आल्सो एक्ट इन बायो रेमेडिएशन। बायो का मतलब बायोलॉजी सिस्टम के द्वारा, बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा किसी जर्म को खत्म कर देना। जैसे आप मॉस्किटो को खत्म आपको करना है तो आप क्या करो, जो मलेरिया के मॉस्किटो है, आप गैम्बूशिया फिश वहां डाल दो, तो गैम्बूशिया फिश क्या करेगी कि उस मॉस्किटो को खा जाएगी। तो उसको हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन। तो ये कहा गया कि सॉइल सिस्टम जो है ये बायो रेमेडिएशन भी करता है। जो पोल्यूटेंट हम निकाल देते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। और सॉइल के अंदर ये फास्फोरस मोबिलाइजेशन का काम करता है। मेटल, इसके अंदर एक टर्म इन्होंने काम में ली है, मेटल चिलेशन। मेटल चिलेशन का मतलब जो भी आयनिक कंपाउंड है, जो कंपाउंड हो मेटल से क्लब कर जुड़कर और प्लांट में जाते हैं और न जाने प्लांट की मेटाबॉलिज्म के जिम्मेदार है। तो ये कहीं ना कहीं इसका एस्पेक्ट है। ये एक और मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब मैं सिर्फ इतना ही, ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस से जुड़ा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फिगर है जो ये बताता है कि ये सब बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा था, ये बायोफिजिकल चेंज में बता चुका हूँ, ग्लेशियल रिट्रेस, राइज इन सी, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू में एक बात बताई थी आपको, इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विस देता है हमें, फ्रेश वाटर है, मैरीन है, टेरेस्ट्रियल, नहीं जाने कितने इकोसिस्टम है। दे प्रोवाइड प्रोविजनिंग सर्विस, ये हमें फूड है, टिम्बर है, जो कुछ भी है वो इकोसिस्टम सर्विसेज आती है। रेगुलेशन में आपका क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है, आपके वाटर साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। तो ये सारी के सारी इकोसिस्टम सर्विसेज है जो हमारे इससे जुड़ी हुई है। सपोर्ट सिस्टम जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है, इसे न्यूट्रिएंट साइकिल से जुड़ा है। तो ये जैसा कि मैंने कहा ना, प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, इनको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। अब मैंने कुछ मेथड बताए जो कि ये मॉडलिंग के मेथड है, प्योरली स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हैं। मैंने सिर्फ इसीलिए यहाँ लिखा है कि आपके बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं वो इसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग से जुड़े होंगे। उसका हम कहते हैं एक ऑटोनोमस इको मॉडलिंग। तो ये सारे वो मेथड है जो क्लाइमेट चेंज है इन सबको असेस करते हैं। तो इनका इको मॉडलिंग के में इंपॉर्टेंस है कि यदि हमको इकोसिस्टम है उसका हम किस प्रकार डिजाइन करें। तो ये सारे के सारे मेथड्स हैं। तो इस तरह मेथड्स को सिर्फ मैंने बताने का ही कहीं प्रयास किया। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, छत्तीसगढ़ के अंदर तो आपके मेन पार्ट है वो एक प्रकार का वेटलैंड है। पर एक वेटलैंड एक और इम्पोर्टेंट है, आपने कई देखा होगा कि कई जगह बरसों से पानी इकट्ठा हुआ है। there is a waterlogged situation in which there is a remains of plant and animal. प्लांट और एनिमल के वहां रिमेन्स होते हैं बहुत सारे। वो एक ऐसा एरिया बन जाता है जब बहुत ज्यादा कार्बनिक होता है, उसको हम डंप कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये वाटर लॉग इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं कार्बन सिंक। जैसे कि मैंने कहा प्लांट भी कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, आपका समुद्र भी कार्बन को ऑब्जर्व करता है, आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपके कार्बन को ऑब्जर्व करता है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार ये पीटलैंड है, पीटलैंड भी क्या करता है, कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन को जो कार्बन पूरा जला नहीं है उस कार्बन को ये एक प्रकार से एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये जो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहा इट रेगुलेट द वाटर साइकिल। अब आप देखो कि यदि कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है और कार्बन एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस आपके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग को कहीं रोक रहा है। तो ये कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये ग्लोबल क्लाइमेट को ये
का रेगुलेशन करेगा, ये वाटर रेगुलेशन करेगा, और जो मैंने एक टर्म बताई थी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब टू स्टोर एंड कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को स्टोर करना, कार्बन को कैप्चर करना, ये करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इट शुड बी मैपिंग एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड, इसका मैपिंग भी होना चाहिए और इसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, ऐसे पीटलैंड है। एक वर्ड और मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, पीटलैंड एक प्रकार की थिक वाटर लॉग्ड सॉइल है, एक ऐसी मोटी लेयर है जिसमें डस्ट है, जिसमें क्ले ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम वाटर इलेक्ट करते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर है। तो कभी कभी हम तो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें चले गए, जो एनिमल्स और प्लांट के जो रिमेन्स है उसमें चले गए, वापस इकोसिस्टम में चले गए। और जो मैंने शुरू में बोला था कि 3 फेज है, हार्डोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये वही तो कर रहा सारे के सारे आपस में जुड़े हुए। और एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपके वेटलैंड, वेटलैंड भी एक प्रकार का ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इसके अंदर भी हमारे बॉडी के अंदर किडनी है, हमारी बॉडी के अंदर किडनी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। इसी प्रकार नेचर के अंदर भी एक किडनी है, उसको हम कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड क्या करता है, नेचर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है, मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट है, उसको इकट्ठा करता है, उसको आगे ट्रांसमिट करता है, तो उसको कहते हैं आपका ये पीटलैंड। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकता है, और आपको पता है नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, और ये वापस एनवायरमेंट के अंदर डाल देता है। नेक्स्ट, सिर्फ मैंने एक वाटर साइकिल बताया, वाटर साइकिल के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, इवोपरेशन होता है, ये सारे का सारा जो मैंने बताया ना ग्लोबल वार्मिंग और इनसे जुड़ा हुआ है। तो एक भी फैक्टर यदि प्रभावित होगा तो ये सारा का सारा वाटर साइकिल जो है ये। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या जरूरी है इसका रिस्टोरेशन का। जैसे कि मैं शुरू में अपनी बात को जब मैंने प्रारंभ किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इस साल का जो थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में सारे इकोसिस्टम को पुनर्बहाली करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये हो सकता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मैंने बताया हमारे जितने भी प्लांट है ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारा समुद्र एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा पेटलैंड एब्जॉर्ब कर रहा है, हमारा वेटलैंड एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा होता है जियोलॉजिकल। आपने कई बार देखा होगा कि हमारा जो वॉल्केनिक इरेप्शन वगैरह होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेशर के द्वारा लिक्विड फॉर्म में आपका जो सॉइल आपका जो रॉक है, जो पोरस रॉक है उसके अंदर चला जाएगा, और वहां पोरस रॉक के अंदर में एसिड का फॉर्मेशन करेगा और वहां भी कार्बन इकट्ठा हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं, एक तो हो गया बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रल, दूसरा जियोलॉजिकल, तीसरा टेक्नोलॉजिकल। अब आप चूंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो इसलिए मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि कौन कौन सी टेक्निक काम में ली जा सके जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर सके। जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कार्बन को कम करने के लिए ऐसे मिटिगेशन प्रोग्राम को रखना पड़ता है, और उसमें टेक्नोलॉजिकल मेथड के द्वारा भी हम करते हैं। और फिर होता है इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, जो एब्जॉर्ब कार्बन हो रहा है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल को बढ़ा रहा है। अब हम जैसे राजस्थान के अंदर तो मैं रहता हूँ, पहले राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यहाँ नहीं था। जैसे ही हरके बांध से राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान में आया, जहां जहां डेजर्ट था वो डेजर्ट कम होके वहां पूरा का पूरा प्लांटेशन हो गया। इसका मतलब सॉइल इरोजन नहीं हुआ और वहां प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्रूव हुआ वहां का इकोसिस्टम। और एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एक और कहा था कि सॉइल इकोसिस्टम इतना साइंटिफिक काम करता है कि आपके जो पेस्टिसाइड है इनको भी कार्बन न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत केमिकल इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, तो ये इनका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले मैं इसके बारे में शुरू में जिक्र कर चुका हूँ। दूसरा सोसाइटी
हेलो हेलो Hello, Vishwadit sir. सर presentation. Just a minute, sir. I'm receiving the call from the speaker itself. Okay, sir. डॉक्टर मोहम्मद क्या कार्यक्रम हो गया रंगा साहब को? हेलो सर, एक्चुअली सर थोड़ा आप 5 मिनट दो तो मैं कंक्लूड कर दूं। खरे साहब सर आप करिए ना सर, करिए। 5 मिनट दो तो मैं कंक्लूड कर दूं। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ रहा हूँ तो सर मैं छत्तीसगढ़ रहा हूँ, सारा इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ का है और क्रेडिट आपको जाता है कि एक छत्तीसगढ़ को हाईलाइट करना, क्योंकि सबसे इको सेंसिटिव जोन है आपको। लेकिन सर आपको एक चीज बता दूं मैं, डॉक्टर मोहम्मद खाजा जी जो है ना, वो हमारे बहुत ही सिंसियर फैकल्टी हैं और उनने बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोग्राम किया है और स्पीकर्स वगैरह भी उन्होंने एक से क्वालिटी वाले बुलाए हैं। अरे सर तो उसमें खाजा जी का योगदान, कंट्रीब्यूशन है उनके डायरेक्टर का। और हम लोग तो क्या है, उसको सुपरवाइजरी कमेटी में आते हैं, तो वो विश्वविद्यालय की वजह से उसको सुपरवाइजरी कर रहे हैं। पर खोज तो आपने करी ना, हुआ सर्च। आपने सर्च किया, आपने सर्च किया, ख्वाजा जी ने मौका दिया। जो होस्ट है वो डॉक्टर आर्यन खरे सर और वो एक्चुअली मैं पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूंगा सभी लोगों को, मैंने ही सर से अनुरोध किया था रंगा साहब से कि सर सिंपलिसिटी में बहुत हिंदी भाषा में, चूंकि अंग्रेजी विदेश के बहुत सारे लोग आ गए, उनके प्रोनाउंसिएशन को लेके भी पार्टिसिपेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ रही होगी। तो मैंने रंगा साहब से निवेदन किया कि सर हम चाहते हैं एक कार्यक्रम पूरा विशुद्ध पर्यावरण पर हो जाए। तो सर ने बोला कि निश्चित रूप से, क्योंकि सर हमारे यहाँ IQAC और NAC एक्रेडिटेशन और विश्वविद्यालय कार्य परिषद और तमाम तरह की कमेटी और अर्लियर प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट कॉलेज में रह चुके हैं, तो सर के अनुभव का अपन लोगों ने बहुत फायदा लिया। तो प्लीज सर कंक्लूड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। सर बस आप ही को थोड़ा टास्क दे के मैं इसको खत्म करूंगा। टास्क इंजीनियर्स के ऊपर है सारा। जावेद पीएम का फोटो दिखा, फोटो दिखा उसका, जावेद पीएम का फोटो। बात से पहले फोटो नहीं हटा दिएगा। हाँ तो ये आवाज आ रही ना ख्वाजा जी? हेलो, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो एक्चुअली लास्ट का मेरा था मिटिगेशन, 3 इंपॉर्टेंट लर्न शेयर एक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं बताना चाहूंगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, खड़े साहब तो स्ट्रिक्ट इंजीनियर से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा मैं उनको बहुत काम करते हुए। कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भारत सरकार का 1986 का एक रेगुलेशन है। तो एवरी इंडस्ट्री हैव टू अंडरगो दिस EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एवरी इंडस्ट्री को करना पड़ेगा, एवरी इंडस्ट्री को एनवायरमेंट ऑडिट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट ऑडिट से मतलब है कि वेदर द इंडस्ट्री इज फॉलोइंग द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, एनवायरमेंटल जो कॉन्सिक्वेंसेस है, एयर को कितना पोल्यूट कर रहा है नहीं कर रही है, एयर के पोल्यूशन की कौन कौन सी मेजरमेंट है। जैसे हम हमारे घरों के अंदर लेखा जोखा रखते हैं हमारे पैसे का, वैसे एनवायरमेंट ऑडिट कहलाता है कि एनवायरमेंट ऑडिट पे इनको एक पीरियोडिकल रिपोर्ट देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट। तो ये फेथ ग्रुप के रूप में, ऑर्गेनाइज के रूप में हम कर सकते हैं। अब जो लास्ट बात कहकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, ये भी आपसे जुड़ी हुई है, ग्रीन बेल्ट इंडस्ट्री। आप भी कभी किसी इंडस्ट्री का वो करो सर्वे, तो उसमें ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। 33% का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसमें से 33% टोटल एरिया है, उसमें से कुछ एरिया करीब 33% फॉरेस्ट का होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट। और
ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के बाद में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रीन बिल्डिंग। फिर मैं जिक्र करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो मकान है वो वहां का जो लोकल मटेरियल के बने हुए हैं, दे आर मोर इको फ्रेंडली। तो जो आज हमने एक नया टर्म दे दिया और वो नया टर्म कहलाता है ग्रीन बिल्डिंग, और इसको हमने ऑर्नामेंटल शब्द काम में ले लिए। ऑर्नामेंटल शब्द क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, वेस्ट रिडक्शन होना चाहिए, टॉक्सिक रिडक्शन होना चाहिए, एयर क्वालिटी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। अब ये हमने वी हैव कॉइन्ड द न्यू टर्म ग्रीन बिल्डिंग, बट इट आल्सो एग्जिस्ट इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। भारत के रूरल पार्ट में भी सारा ये एग्जिस्ट कर रहा है। और लास्ट में एक एनजीओ का जिक्र कर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक एनजीओ है जिसको आप कहते हैं 5R, रेस्पेक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिस्टोर। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है कि जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितना भी बिजनेस ग्रुप है, उस बिजनेस ग्रुप को उन्होंने कहा कि यू हैव टू शेयर द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी बड़ा बड़ा ग्रुप है बिजनेस का, उनको कहा गया कि आपको सामाजिक उत्तरदायित्व का वहन करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और कहा गया है कि आपको फिर एक नई टर्म कहाँ में ले दी, सर्कुलर इकोनॉमी। मैं तो मजाक में कहता हूँ सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि पहले आप कभी लुंगी पहनते थे, वो लुंगी बाद में आपका जो गद्दा है उसका कवर बन जाती थी, फिर तकिए का कवर बन जाती थी, बाद में पोछा भी बन जाती थी। यह सर्कुलर इकोनॉमी कहने का मतलब है ऐसी प्रकार की इकोनॉमी जिसको रिसाइकिल हो और एनवायरनमेंट के कम से कम उस पर फर्क पड़े, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन सबसे जुड़े हुए हैं। और लास्ट में मैं अपनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि लास्ट में मैंने एक शब्द का मिला कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इन भारतीय कंटेक्स्ट। यदि हम माइक्रो स्टडी करें तो हमें ध्यान होगा कि हमने तो हर जगह एनवायरनमेंट का प्रिजर्वेशन किया और प्रोटेक्शन किया। जो भी आप कार्यक्रम करते हो, कार्यक्रम में कोई वंदना करते हो और वंदना में एनवायरनमेंट के सारे घटकों के प्रति श्रद्धा होती है, उनके प्रति चिंता होती है। और एक कंसेप्ट है जीव जगत जगदीश, एक ट्रायंगल है। जीव का मतलब बायोडाइवर्सिटी, जगत का मतलब यूनिवर्स, और जगदीश का मतलब है मर्यादित उपयोग। तो तीन चीज है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल सुंदर कब होगा? जब तीनों में बैलेंस होगा। तो हम जुडिशियस यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज का, हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट पर एक्सप्लोइटेशन नहीं करें, और जो बायोडाइवर्सिटी इस पर फर्क न डालें। तो जो जीव जगत जगदीश का जो कंसेप्ट है हमारा पुराना ही कंसेप्ट है, उस पुराने कंसेप्ट को हम आत्मसात करते हुए आज वो सारी की सारी नई शब्दावली हम काम में ले रहे हैं। और नई शब्दावली के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं तो एक जिक्र करना चाहूंगा कि जब हमारे पास ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, अब ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कुआ है, बावड़ी, नहीं जाने कितने आपने ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज पढ़े होंगे, उनका भी कंजर्वेशन जरूरी है। तो मैं खरे साहब से एक निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज है उनका रिजुएशन हो, उनका पुनर्निर्माण हो, उनका मेंटेनेंस हो। आज भी वो हमारे वाटर लेवल को बढ़ाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के लिए वही ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज जिम्मेदार है, तो उनको भी हम देखें। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वाटर कंजर्वेशन के। तो ये कहकर मैं हम विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और कार्यक्रम के सूत्रधार ये रामा साहब, रामाराव जी और खरे साहब और ख्वाजा जी, इन सब के प्रति साधुवाद व्यक्त करते हुए, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब हम कभी कोई भाषण देते हैं तो लोग कहते हैं कि आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, और मैं यदि मुझे कहते हैं तो मैं कहता आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं एक बार पुनः खरे साहब का और सभी का धन्यवाद साधुवाद देते अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। वैसे रंगा साहब आपको बता दूं कि आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, और AICTE जो है पूरे भारत देश में इस बात को प्रमोट कर रही है कि पूरी इंग्लिश इंजीनियरिंग कॉलेज की सारी सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सभी सब्जेक्ट जो है ट्रांसलेट रीजनल लैंग्वेज में कर रहे हैं। अच्छा। और वो उसमें सर्वप्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई को प्राप्त हुआ है AICTE में। हम लोगों ने 13 विषय को ट्रांसलेट करके 23,000 क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक के रूप में भेज दिया है AICTE में। और वो AICTE जो है हिंदी भाषा में जो है, वो हिंदी भाषा के हमारे कुलपति जी पूरे चेयरमैन है, पूरे 5-6 स्टेट को मिला के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुड़गांव, हरियाणा और साथ ही उत्तराखंड।
तो उसको वीसी साहब भी देख रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ भेज दिया। तो आपने जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया है वो AICTE भी मैंडेटरी बोल रही है कि इसको अपन को रीजनल लैंग्वेज में सारी किताबों का ट्रांसफर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा। खरे साहब, आप तो टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है आपको, तो आपको हिंदी का ज्ञान है, आपने हिंदी में एमए किया, PhD में, तो आपसे ज्यादा यदि टेक्नोलॉजी को कोई सर्व कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई और सर्व करेगा। तो एक बार फिर आपका मैं एक्चुअली क्या हुआ सर, मैं आपको बताऊं कि मैं 12वीं क्लास में मैंने मध्य प्रदेश में टॉप किया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें मुख्यमंत्री द्वारा गोल्ड मेडल मिल गया, स्टेट टॉपर रहा मैं। उसके बाद में क्या किया, मुझे लेना था BA हिंदी और IAS की तैयारी करना था। तो घर वाले बोले तुम बेकार की बात नहीं करो, चुपचाप इंजीनियरिंग करो। तो मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज चल दिया। तो मैं जब उसके बाद महत्वाकांक्षा योजना जो थी ना PhD करने की, तो सिविल इंजीनियरिंग में PhD किया, साथ में हिंदी में PhD किया, डबल PhD। तो वो उस कारण से किया, तो कि हिंदी में जो एक अभिरुचि थी वो करने के लिए हमने एक PhD हिंदी में भी वो आपके आशीर्वाद से तो कर लिया। तो वाकई में हमारी जो क्षेत्र भाषा है वो उस पर तो अभिमान रहने की हमेशा आवश्यकता है। और इसमें ये भी सिद्ध हो गया कि इंजीनियर कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि हिंदी वाला इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, लेकिन इंजीनियरिंग वाला हिंदी कर सकता है, वो हमने सिद्ध करके दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, प्रोफेसर रंगा साहब बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं और कई कॉलेजों के, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं और AICTE और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन UGC के मेंबर हैं। और सर की ये महानता है कि इतनी सिंपलिसिटी में रहते हैं। इवन इंडिया लेवल पर जितने भी वाइस चांसलर हैं, ऐसे शायद कोई हो जो सर को ना जानता हो व्यक्तिगत तौर पर। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। इवन अभी बिलासपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति जी आए हैं, ADN वाजपेयी जी, और चाहे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कुलपति रहे, चाहे आपके SK पांडे हो रविशंकर यूनिवर्सिटी के, या वर्तमान कुलपति KL वर्मा साहब हो रविशंकर के, और बस्तर विश्वविद्यालय, सारे कुलपति जी से बहुत अच्छा सर का संबंध रहा है। तो पार्टिसिपेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, कोई भी पार्टिसिपेंट। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं सर ने, देखिए एसिड रेन और डिफरेंट टाइप की जो केमिकल अटैक जो सॉइल में होते हैं और साथ में लीचिंग इफेक्ट के बारे में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ में सर ने किया। मैं पूरे लेक्चर सुन रहा था, बहुत ही उपयोगी था। मैंने स्पेस डेब्री। आवाज कट रही है सर आपकी थोड़ा सा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज थोड़ा सा बीच बीच में कट रही है। आवाज कट रही है सर। खरे सर कंक्लूड कर दूं सर? हाँ प्लीज कंक्लूड करिए। यस सर। So with due respect to the dignitaries on the platform, all the participants are hereby informed that today we had a session 11 on behalf of Dr. M.M. Ranga Saab. He has been discussed about the present scenario of environmental issues and their consequences, which briefly includes the climate system, global warming, heat content, which affects our environment and their remedies, and also gave us a view on many international review journal papers, which are very helpful in day-to-day life to develop the environmental monitoring issues. With these words, I take a pledge and my privilege to thank our keynote speaker, Dr. Madhur Mohan Ranga Saab. Thank you so much, sir, for your spending your valuable time among us with a kind invitation which has been accepted from us on behalf of VIT Raipur. For your kind information, the program has been hosted under AICTE CSVT joint MOU teacher training program. So under the supervision of Dr. R.N. Kharre sir. Thank you so much. ठीक है, धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you sir. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बिल्कुल लगा खरे साहब, लगा आज अंबिकापुर में खरे साहब के साथ। आज अच्छा लग रहा है सर। करीबन 7-8 साल से लगातार जो है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे अपन लोग थोड़ा सा बुजुर्ग होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है ना,
वो मतलब वो प्रिंसिपल लेवल तक पहुंच गए हैं। तो सर ये तो अच्छी बात है। ये बीआईटी रायपुर में अभी प्रिंसिपल बनाए इनके कॉलेज में जो ये पढ़ रहे हैं, इसमें वो अनूप मिश्रा करके अभी प्रिंसिपल ज्वाइन किए हैं, और वो हमारा स्टूडेंट ही था, मैं उसको पढ़ाया भी। तो सर इससे काफी बड़े हो रहे हैं ऐसे। सर इससे है कि जो क्वालिटी आप दे रहे हो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर है। ऐसे नहीं सर, ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक्स।